से 3000 से ज़्यादा लोगों को इस संस्थान ने इतने छोटे से समय में प्रशिक्षण दिया है, जिसमें हमने 3-3 माह के कोर्स कराए आर्मी जैसे संस्थान के लिए साइबर सिक्योरिटी पे। निश्चित रूप से मुझे फाउंडिंग डायरेक्टर के रूप में आप सभी पर गर्व है कि आपने उस जो मिशन था संस्थान का उसको पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान किया। आज का समय तकनीकी का है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन हम सभी लोग यहाँ बहुत से बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम सबको इस बात की चिंता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो उसका भविष्य कैसे होगा। ये सभी के लिए बड़ा सोच का विषय है। मैं इसे चिंता का विषय नहीं कहता हूँ, मैं इसे हमेशा ये बोलता हूँ कि आप इसको एक पॉजिटिव सेंस में लीजिए। जब कभी कंप्यूटर आया था, जैसा आप पढ़ते हैं, तो उस समय भी लोगों ने शंका की थी। जब भी कोई नई चीज़ आती है, खास करके तकनीकी, तो उसके दोनों पहलू हो सकते हैं। और तकनीकी तो पुराने समय से रही है कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए वेरी बैड मास्टर। तो ये बैड मास्टर ना बने, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पर कैसे नियंत्रण करें। और जो मेरा इधर आपके साथ लगभग 2.5 साल का कार्यकाल रहा, या जो और भी जिन लोगों के अध्ययन और अनुभव हैं, उनका अगर हम एक सार के रूप में हम कहें, तो जो आने वाला समय है, इनको तकनीकी को कैसे आप नियंत्रित करेंगे। क्योंकि तकनीकी जिस गति के साथ बढ़ी है, मैं समझता हूं कि जितनी तकनीकी 5 साल में डेवलप हुई, हो सकता है आने वाले 6 महीने में उससे ज़्यादा उसका विकास हो जाए। तो जो विकास की जो गति है तकनीकी की, बहुत ही तेज है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तकनीकी को खराब लोग भी आज की डेट में आप जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट है और बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम हैं कि जिन्हें नियंत्रित करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तकनीकी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए जो अभी जो नए व्यवस्था बनाई गई है, जो विश्व की चुके, ये चैलेंज विश्व का चैलेंज है। और इसमें मैं समझता हूं कि सभी विश्व का हर देश, हर व्यक्ति इससे चिंतित है कि कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। तो ये जैसे एक बालक पैदा होता है, मैं बिल्कुल आपको शुद्ध भाषा में, चूँकि अभी बहुत लोग बाहर के नहीं आए, सब लोग लगभग घर जैसे ही लोग हैं, तो मैं बिल्कुल एकदम देहाती भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी या जो हमें इसकी चिंता है वो कैसे है और ये कैसे नियंत्रित होगी। जैसे एक बच्चा पैदा होता है घर में, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो उत्पात करता है। उत्पात का मतलब कोई निगेटिव सेंस में मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ये गिराएगा, इसको छुएगा, ये करेगा। तो उसे हम सब लोग उससे गुजरे, और आप लोग तो जो सामने बच्चे बैठे हैं, ये तो अभी 10-15 साल पहले ही सब चीज़ को देख कर गए हैं। तो क्या होता था कि मम्मा, पापा, चाची, ताई सब डांटते हैं, कभी कभी चपत भी लगाते हैं। तो उसी तरीके से आपको ट्रेंड किया गया सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए। ठीक उसी तरीके से हमें तकनीकी को भी अपने सिस्टम में एडजस्ट करना है। और उसके लिए उस काम को कंट्रोल कौन करेगा? हमारे संरक्षक के रूप में जैसे हमारे माता पिता या हमारा समाज करता था, वैसे ही उसको कानून करेगा। तो ये कानून का जो संगम है तकनीकी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने बताया कि जो हमारे नए कानून हैं, उनमें अगर मैं एक बात कहूं तो लॉ और टेक्नोलॉजी का संगम किया गया है हमारे नए कानूनों में। न केवल फोरेंसिक को बहुत बढ़ावा दिया गया, सेक्शन 176(3) जो BNSS की आप सभी लोग जानते हैं। अभी जो मेरे साथी बैठे हैं पुलिस वाले, अब ये भी सब इसको जान गए हैं काफ़ी। अब लगभग इनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, परसों इनका कोर्स कंप्लीट होगा। 1.5 महीने का जो कोर्स किया है, उसके लिए भी मैं इस मंच से आपको बहुत सादर बधाई देता हूं कि आपने उसको बहुत ही गंभीरता के साथ पूर्ण किया। तो ये जो समय आने वाला है, इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको अपने आप को तैयार करना है। ये हमारे लिए एक भविष्य में एक वेपन बने, जिससे हम अपने विकास को, अपनी उन्नति को आगे बढ़ाएं। वो वेपन विनाश के लिए ना जाए, इसको करने के लिए जो हमने यहाँ एक कंसेप्ट बनाया है, जो आज के समय में काफ़ी उसकी चर्चा भी है और उसकी आवश्यकता भी है, वो है लॉ विद लैब्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद लॉ। आज जिस तरीके से आप ISI मार्का, ISO मार्का बोलते हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तब तक अपलोड नहीं हो पाएगी जब तक उसका ये सर्टिफिकेशन नहीं होगा कि ये लीगली कंप्लायंट टेक्नोलॉजी है। तो आज के डेट में जो बज़वर्ड है साथियों, वो है लीगली कंप्लायंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आर्टिकल 25 में बार बार बोलता हूं आपको GDPR का, आप उसे पढ़िए। ये है भविष्य, जहां से
आपको पता चलेगा कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे। और ये संस्थान, मुझे गर्व है इस बात का कि ये संस्थान संभवतः पहला ऐसा संस्थान होगा विश्व का जिसने हमने 3 ऐसे विधाओं को इंटीग्रेट किया। एक है फोरेंसिक साइंस। आज के समय में अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, अगर उनका हम विचार को अगर हम समाहित करें तो उनका सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे है? फोरेंसिक साइंस पे। शायद कोई ऐसा देश होगा जिसने फोरेंसिक साइंस को मैंडेटरी किया हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो हमारा देश है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हमारा जो संस्थान है ये आगे बढ़े। आज मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अब जो क्राइम है उसके 3 फेज थी। पहली फेज थी जो ब्लू कॉलर क्राइम, दूसरा था व्हाइट कॉलर क्राइम, तीसरा है साइबर क्राइम जिस दौर से लगभग हम गुजर रहे हैं। जो चौथा आने वाला है, जो हमारे बिल्कुल दरवाजे पे खट 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 आपको आवाज दे रहा है, वो है एजेंटिक क्रिमिनल्स। अब क्राइम क्रिमिनल ह्यूमनॉइड नहीं करेंगे, आदमी नहीं करेगा, अब जो है वो एजेंटिक क्रिमिनल करेंगे। तो जैसे आपने सुना होगा कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, आप ट्रांसपोर्ट एज ए सर्विस, एनीथिंग एज ए सर्विस, तो अब साइबर क्राइम एज ए सर्विस बिकम्स न्यू नॉर्मल। अब ये है आपको देखना। इसलिए मैं बार बार पुलिस कर्मियों से, पुलिस के अपने साथियों से, हमारे यहाँ भी IPS ऑफिसर्स का भी बैच चल रहा है, तो उसमें जो वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स है उसमें भी बार बार ये चर्चा हो रही है कि हमारी जो पुलिस है वो जब तक आधुनिक तकनीकी के साथ उसका तारतम्य नहीं होगा, जब तक उसका समन्वय नहीं होगा, जब तक उसको उसकी जानकारी नहीं होगी, तो कन्वेंशनल क्राइम को हम अब केवल उसके भरोसे हम नहीं रह सकते। जो जिस तरीके से चीज़ें आई हैं, जैसे आपने सुना होगा चैट बॉट, तो अब क्या आ गया है? क्राइम बॉट। तो ये जो बदलता हुआ स्वरूप है इसमें हमें खड़ा होना होगा। और उसके लिए जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमने जो ये 3 स्कूल यहाँ खोले हैं, फोरेंसिक साइंस, टेक्नोलॉजी और लॉ, ऐसा शायद ही कोई संस्थान होगा और हमारा कोई एक्सपेंशन का इरादा भी नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें ही ठीक ढंग से अपने आप को उन्नत करें, अपने आप को अपग्रेड करें, स्किल करें, तो निश्चित रूप से हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगा देश के लिए और समाज के लिए वो बहुत ही बेहतरीन होगा। ये 3 ऐसे संस्थान हैं, इसे कोई अदरवाइज ना ले, लेकिन क्या IIT इस संस्थान का मुकाबला कर सकती है? वो इसलिए नहीं कर सकती कि उनके पास फोरेंसिक साइंस नहीं है, उनके पास लॉ नहीं है। लॉ का इंटीग्रेशन के लिए कैसे सोचेंगे वो, अगर वो सोचे भी कि उनको लाना है। एक लैब बनाने के लिए जो आप देखिएगा, जो मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस संस्थान ने 2.5 साल के अंदर जिस तरीके के लेबोरेटरी खड़ी की हैं, उसे आने के बाद लोग एक उदाहरण के तौर पे बोलते हैं। अभी आपके यहाँ IIIT के हैदराबाद से एक हमने विशेषज्ञ को बुलाया था, जिस प्रकार से उन्होंने उसका कई लोगों से जाकर के जो चर्चा की, तो मैं उससे मुझे बड़ी एक आत्म संतुष्टि और खुशी हुई कि कम से कम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन रहा या है, वो ये है कि हम इस संस्थान को विश्व स्तरीय बनाएं। तो 2.5 साल में जो भी लेबोरेटरी यहाँ बनाई गई हैं या जो भी यहाँ पे जो काम किए गए हैं, जिस प्रकार से यहाँ विजन तैयार किया गया है, निश्चित रूप से वो आने वाले समय में हमारी पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने में और मदद करेगा। हमारे जो स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि आपको जो आपका सिलेबस है वो अंतिम नहीं है, वो सिलेबस आपकी बिगनिंग है। यहाँ से आपको एक रास्ता मिलेगा। डिग्री लेना आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है नॉलेज लेना। जितनी आपकी नॉलेज होगी उतना आप आगे बढ़ेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं एक फादरली फिगर के रूप में कि आप हमारे लिए बच्चे हैं और आपकी परवरिश करना हमारा धर्म है। आपको हम लीडर बनाने के लिए लाए हैं, आपको वर्कर नहीं बनना है। वर्कर बनाने के लिए दुनिया भर के इंस्टीट्यूट हैं, आप एक लीडर के रूप में बनेंगे। और मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यहाँ जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, जब वो निकलेंगे तो 5 साल के अंदर, ये बात मेरी याद रखिएगा आज, कि वो पूरे दुनिया में नाम करेंगे कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हमने किया है यहाँ लॉ के साथ, ये एक अनूठा प्रयोग है।
अभी शायद कम लोगों को समझ में आएगी। जब मैंने ये बात लगभग 2023 में बोलना शुरू किया था लॉ विद लैब्स, तब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी। आज आप गूगल करिए तो लॉ विद लैब्स आपको दिखाई देगा कि उसका क्या कंसेप्ट डेवलप हुआ है। तो ये कंट्रीब्यूशन है छोटे से संस्थान का, जिसने 2.5 साल में अपना एक परचम लहराया, और उसके लिए सारे के सारे जितने भी मेरी फैकल्टी हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा जो सबसे बड़ा संबल है वो है हमारा शासन, क्योंकि जब भी जो भी चीज़ें हमने मांगी है उनसे, वो हमेशा हमें मुहैया कराई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं और हृदय से भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैंने जब भी जो उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने उससे और ज़्यादा ही बढ़ के बात की, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं जब भी कोई नया भी कंसेप्ट उनके सामने लेके जाता हूँ, मैंने जैसे आप मैं उदाहरण बताता हूँ, और यहाँ पावर भाई बैठे हुए हम लोग पुणे में गए थे क्वांटम कंप्यूटिंग सीखने के लिए, सही बताएं तो मैंने उनसे आने के बाद बात की, चूँकि हमें क्वांटम की लैब बनानी है यहाँ जल्दी, तो मैंने उनसे जब कहा कि सर हम क्वांटम की लैब तैयार करना चाहते हैं, तो क्वांटम पे उन्होंने इतना लंबा डिस्कशन किया, कम से कम 3-4 मिनट का, कि मुझे लगा कि इन्हें कोई ऐसा शायद ही विषय होगा जिसका इनको बहुत अच्छे से जानकारी ना हो। और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये बहुत उचित समय है, और क्वांटम की जो लैब है उसको आप बहुत अच्छे ढंग से बनाइए उसको। तो मेरा ये कहना है कि ये उचित समय है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए और बेहतरीन काम करने के लिए, जिससे आप न केवल इस संस्थान का, अपने प्रदेश का, देश का, बल्कि दुनिया का आप उद्धार करें। आप ऐसा काम करें जो मानवता को आगे बढ़ाने में मदद करे। हमारा काम कोई केवल लिमिटेड नहीं है कि हमें केवल अपने राज्य की, अपने देश की बात करनी है। हमें एक वैश्विक नागरिक बनना है, एक वैश्विक समरसता लाने का जो हमारा प्रयास है उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो इस सब मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आने के लिए आपका स्वागत करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें जो आपकी लर्निंग होगी, लर्निंग विद हैप्पीनेस होगी। आप एक आनंद के साथ जिस तरीके के पैनल बनाए गए हैं वो आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे, कोई बहुत थ्योरेटिकल नहीं होगा। जिनके भी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, उनको आप पूछिए। बाद में भी बाहर मिलते हैं लोग एक दूसरे से, वहाँ चर्चा करिए, क्योंकि जितनी आप चर्चा करेंगे, जितने आपके जो कुछ जो भी मन में सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनको जितना आप सामने लाएंगे, चर्चा में आएंगे, तो उनके आपको जवाब मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद बोलता हूं, और जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for those inspiring thoughts. We are truly grateful. Today, we are truly honored to welcome a visionary leader, an innovator in healthcare and a change maker who worked towards redefining health and wellness in India. We warmly welcome Dr. Nikhil Joshi, co-founder and director, Lifehealth Foundation, Mumbai. Sir is a scientist and entrepreneur and the founder of Lifehealth, an organization dedicated to advancing cutting-edge technology on the evolution of natural and social system. His work explores the roots of socio-economic organization within living system and develops the systemic solution for social, ecological and cyber sustainability. He has been an invited speaker at several international scientific conferences. Sir holds a PhD from the Medical College of Virginia with research focused on complex biological system and drug development, and is an alumnus of MIT Sloan School of Management and the ISB Kellogg Global Advanced Management Program. Sir, please grace the stage with your presence. I now request Sir to kindly enlighten us with his address on role of AI in redefining national sovereignty.
Sir, please address the audience. Hello everyone. How are you? Well, it's a pleasure to be here. It's been many years since I've been planning to visit here and look at this beautiful campus. Must compliment Dr. Goswami and his team on organizing both this conference as well as running this excellent institute. I'm so happy to see so many young students here. And one time, I tell you, I was a young student like you, and looking at the advice that Dr. Goswami has given you. Never hold yourself back. Keep learning. सीखते जाओ, हंसते जाओ, और दुनिया के अंदर जो भी आए उसका मुकाबला करते जाओ. That's all I'd like to tell you. I will talk to you today about this topic, which is how AI will define sovereignty, national sovereignty. But before that, let me tell you a little bit about LifeL, the organization that I founded. LifeL is a deep science think tank. We study science of self-organization. We study it across disciplines. And our whole idea is that can we learn from 3.5 billion years of evolution of living systems. 3.5 billion years of evolution of living systems to see what are the processes and organizational structures that exist in living systems? What makes them? What makes these living systems create entities like us? How does intelligence emerge on our planet? So we do a lot of scientific research across disciplines to bring together these ideas and research findings to create these new insights on how our living world functions. And especially the organization and processes part of it, right? So that is LifeL. If you want more information on a number of exciting projects that we're working on, including AI governance, we are also working on a number of sustainability projects. You can visit our website here at lifel.org. One back. Right. The agenda for my talk today, I go to a lot of cyber security AI conferences. And one of the things that I always find is that there is a lack of appreciation for what artificial intelligence is. And I find that this is a fundamental gap in understanding which needs to be bridged if we have to develop successful strategies and successful ways of coping with a world with artificial intelligence. So I'll first start with helping you understand the true nature of AI. And in doing this, perhaps this is the only science that exists which actually talks to you about or tells you about the evolution of AI. And I'm going to tell you something very radical. I'm going to tell you that artificial intelligence में कुछ भी चीज artificial नहीं है. Artificial intelligence is not artificial. Artificial intelligence is an outcome of 3.5 billion years of evolution of living systems. We were the species that was designed
to create these kind of systems, and I'll tell you the science behind this and why we believe that this is the way. This is not a technological advance, but this is a revolution. जैसे एक बार घर के अंदर किसी की शादी होती है और बहू घर में आ जाती है, everything in the house changes. And AI is that new bahu who has come into our household. So I think I want you to understand the true nature of AI. And in doing so, I don't want, as scientists, I don't want you to just accept what I'm saying. I'm going to present to you the scientific evidence on why AI is the new bahu, why AI is a part of natural evolution. So I'll tell you the processes shaping its emergence and evolution. Then I'll talk about how nation states have emerged. What are the 5 strategies that they have followed in maintaining and perpetuating their sovereignty? Sovereignty means having control over your internal affairs, external affairs, right? And that is what you call as sovereignty. That what strategies nations follow in protecting and preserving their national sovereignty, and how AI will redefine all of these. So when we talk about law, we talk about law of a nation. If the whole paradigm is going to shift, what does this mean for national sovereignty? And last is, I'll talk a little bit about preparing for the changes ahead. So I presume that a lot of people here are technology people, so we're comfortable with science, so I will not hesitate in delving into it. So this is the first time that humans have found another source of creative intelligence. So far you had an intelligence on the planet which was computer intelligence, but computer intelligence was not creative intelligence, it was not generative. Now this is the first time that we are having a generative technology which has just made its debut on the planet and is creating so much of a buzz. So we have all our political institutions, our whole idea of nation states, our whole idea of law, our idea of economics, everything has been human-centered. Now, for the first time, we have to accommodate the views, opinions, and all the temperaments of artificial intelligence and learn to live with this technology which is going to teach us, challenge us, and sometimes even lead us. So this is a big moment on moving from man to man plus AI. Our planet is going to have 2 intelligences operating at one time. For those who think that artificial intelligence is the first intelligence that emerged on our planet, I'd like to take you back a little bit. If you go back 3.5 billion years ago, our planet had just formed from the sun. It was one red, hot planet. As it cooled down, life emerged at about 3.5 billion years ago. This was the first time a new intelligence arose on our planet. Before that, our planet was as dead as Mars or anything else that you see around. Right? So this cellular intelligence emerged on our planet and it revolutionized everything that we see. Cells learned how to sustain, how to reproduce, and how to evolve. The next level of intelligence we saw was the neuronal intelligence. And we saw that in the realm of dinosaurs. Right? And this is the time when the peak of neuronal intelligence, species used this neuronal intelligence to dominate the planet. We also had, just about 300,000 years ago, the advent of human intelligence. And a species that emerged on the planet which for the first time had language capabilities. And with this language capabilities, we became a distinct form of intelligence on the planet, which we call now as human intelligence. And we went around shaping the rest of the world and shaping the lives of all the other species that existed on the planet. And now, just about 2 decades back, we started having the
movement towards artificial intelligence, and just about 2.5, 3 years back, we started seeing generative AI now finally making the debut. So if you look at artificial intelligence, it is the fourth intelligence that has emerged on the planet. So for the planet, and if you study living systems, you know how the planet and how other systems have adapted to new intelligence that have emerged before that. And that provides a tremendous ground for us to learn on how to cope with it and how to really work in when this new intelligence, AI, starts living within our midst. So to understand how our planet is unique in its ability to support intelligence. कोई बाकी planets के ऊपर ऐसे intelligent beings, you don't see them all around. So what is unique and what is so special about our planet? So our planet has a sun which is at the right intensity of energy and illumination. So there is a theorem which was put out first by the illustrious biophysicist Harold Morowitz. And I met Dr. Morowitz in Washington, DC, when I was there in 2015. And he was the person who said that in any steady state system, the flow of energy through a system always leads to one storage cycle, at least one storage cycle. And what this means is that energy just does not flow from high energy intensity or high potential to low potential. It flows from high potential to low potential, creating one storage cycle. Means the internal organization of that system will have a low energy state and a high energy state. And that high energy state will store the energy, and then energy will be dissipated towards the sink. So this is a fundamental theorem now. We call it the fourth law of thermodynamics in steady state systems. So if you see the sun and the earth, the sun and the earth form such a steady state system where solar radiation is continuously flowing through our planet, and these cycles are emerging on our planet. So in the same way, we now have somewhere around 3.5 billion years ago, molecular pathways around undersea volcanoes. They had chemical reactions going on in there, and those chemical reactions created the first energy cycle that we see, which was the molecular energy cycle. And as they started coming together around this energy storage cycles, it gave rise to the first living cells. And what is unique about this, that the first living cells also started creating their own catalysts. So this whole process is autocatalytic. So you have energy flowing from the sun, the molecules are picking up that energy, they are converting themselves into high energy cells, and the cells are working towards again capturing new energy and transforming more molecules from the planet and continuing this energy cycle. So this first energy cycle was so powerful that it started releasing oxygen into the atmosphere of the planet. And this is what sometimes we call as the oxygen catastrophe. Everything in the world changed because till that time our planet had no atmospheric oxygen. So first energy cycle and the first level of intelligence was formed as an energy cycle, taking low energy molecules and converting them into high energy cells. The second, now that we had a lot of cells, living cells through photosynthesis on our planet, the next part was to organize cells into creating living species. So multicellularity and multicellular forms started coming in. And when these multicellular forms started coming in, the low energy state were the plants, the higher energy state were animal species, and you started seeing DNA emerge to actually allow cells to coordinate. So this is the second level of intelligence which has also come in around the same concept of energy cycles. As we moved forward about 2,500 years ago, we had humans, and humans had families, and we have created businesses which are the high energy state. So in this cycle, the next thing that needed to be organized was to organize humans. So when we wanted to organize humans and we wanted to organize the species, families are the low energy state of human society. Businesses are the high energy state of human society. And so you see again the same
organizational patterns of creating energy cycles is continuing through every level of intelligence. So when we look at businesses and when we look at organizations which are non-family organizations, very few people understand that businesses are actually the highest energy state of human organization. High energy state of human organization means businesses are inherently unstable. And because they are inherently unstable, businesses have to always struggle to attract talent, to attract resources, and to contribute to society, and hence continue the social development, which families don't need to do. So this was the third energy cycle. Now, this third operation of the third energy cycle has produced so many businesses. So the next task would be to organize what? Organize businesses into an energy cycle. And as we start getting on this path of organizing businesses into an energy cycle, we see artificial intelligence emerging. Right? So if you see proteins, DNA, language, and AI are four parts of a continuing strategy of creating energy cycles and organizing our living system. Now, when businesses get organized, what will get created? Through artificial intelligence, we will start seeing the emergence of large business enterprises which are beyond the capability for any board of directors or any one particular team to work. And can you tell me the name of any of these kind of large business enterprises which are really big and which are really global and which are marketing oriented? So I call them global AI marketing enterprises. Right? So what we envision is through AI, you're going to have the emergence of global AI marketing enterprises. And these enterprises exist today. Think about Amazon.com. Amazon operates globally. Its entire decision making as well as its customer acquisition is completely operating on AI. Facebook, Google, all of these organizations are game. Right? So AI is the engine that is driving globalization of business at a scale that has never been possible before. And that is how energy cycles, the concept of energy cycles gives rise to four levels of organizations that you see on our planet. Another very interesting thing that we see, which was first found by this scientist from Rutgers University called Sanjay Ji. And what he found was there is a common pattern in all these four things that we've seen. If you see here, proteins, DNA, language, and AI, all of them have a common pattern. And the common pattern is that they are all alphabetic. Right? So if you see, proteins are always made up of 20 amino acids. The alphabet of proteins is 20 amino acids. And every enzyme, however big it is written in combinations of these alphabets. DNA is 4 base pairs. And all DNA code is written only in these 4 base pairs. Human language is alphabetic. Right? And alphabets come in and it becomes words, sentences, and that's how we communicate. So the question was that what causes this alphabets to emerge in these kind of catalytic networks? Right? And that is where Sanjay Ji in 1997 started researching on this, and he found that there is a semantics, there is a syntax, and there is a grammar to DNA and protein. And if you were a cell, living cell, or if you were a multicellular species, you could actually read the instructions written in DNA and protein. And so, language-like structures, they emerge as a natural part of catalytic networks, as a natural origin in the catalytic networks in living systems. So, it was not until 2017 that Timo Honkela and his professor, Tuavo Kohenen, how many of you all know about machine learning? Who has heard about machine learning?
in this? Yeah, some people. Yeah. Has anyone heard of self-organizing maps and unsupervised learning? Correct? So there are three paradigms in machine learning. There is supervised learning, reinforcement learning, and unsupervised learning. So Timo Honkela worked with this person who invented this concept of unsupervised learning. He was a student. And what Timo's interest was, is to figure out how language emerges. So he says, what are the conditions that are required in any system for a language-like system to emerge in it? Very, very important question that he asked. What are the conditions that are required for in any system for language-like system to emerge in it? So he says, first, interacting entities have to be facing some environmental complexity, meaning that they have to operate in a complex environment. If it is a simple environment, there is no need for language. If it's a complex environment, then there is a need for language. Second is there has to be a need for coordination. That means हम साथ में काम नहीं करेंगे तो हम दोनों मरेंगे. That has to be a rule in the game. So survival has to be dependent upon working together and coordinating. Third, this interaction between these people or these entities has to be repeated and continuous. Right? So when you set up system that, every time I'm meeting my friends, every time I'm meeting my parents, every time I'm meeting my classmates, that interaction is repeated interaction. And that interaction is where all of you all are working together towards a certain thing that is required. Then there has to be a capability of local symbol creation. Local symbol creation means I must be able to create a code for this. Thumbs up means all is okay. That's a code. Thumbs down, that all is not okay. That's a code, right? So these symbols and emojis that they evolved through our engagement with computers. Correct? Before that, we didn't know what an emoji was. So local symbol creation. Then you have to be able to negotiate a meaning for it. That means all the species involved have to be able to understand what that symbol means. And lastly, you start seeing an emergence of a shared language. So, having laid down this process for the emergence of language, now we actually start asking a very, very important question, because now we understand that energy cycles are driving the emergence of AI. Language-like structures emerge naturally in these kind of high energy systems. And this is the process for creating the language. So if you see that our business supply chains, right? If you see any large business, and you guys are going to probably go work in businesses and other places where there are complex supply chains. One business is buying many products from its suppliers. It's manufacturing something, and then it's taking that product and it's selling it to customers, and probably thousands of customers, right? So in such complex supply chains, you have a need for coordination. The supplier needs to produce what you're going to be able to sell. Order milegi, wo produce karna hai, right? There is repeated social interaction. And ERP systems came in to make all of this interaction and engagement possible. So till now, we were okay. The two pieces were missing in our system till now. Capability for local symbol creation and negotiation and meaning. Now, if you remove the ERP and you put a generative AI in your supply chain, you are adding both these components. Suddenly, the system has become one where those interacting entities can now create local symbols and negotiate its meaning because it has generative capabilities. Right? So if you see how AI is going to, putting AI into our supply chains is going to change the entire dynamic of AI and the way AI operates, and is going to lead to the emergence of AI-based language systems. Right? And so this is a very important concept to understand, that we are at the cusp of that. If you, the idea of the process, and that is why I say that a process is a very important thing to understand. ये किसी ने देखा है कि छाछ में हम जब we churn the छाछ, you get मक्खन, होता है ना? Right? So somebody said कि हमने समुंदर को जो churn किया, तो उसमें से जहर निकलेगा, और हमने देखा है कि निकलता है. करेक्ट? तो ऐसे ही
अभी जो हमने हमारे सप्लाई चेन्स को AI डाल के चर्न किया, तो will there be a language emerging from that? And I tend to feel that rushing into very fast and putting generative AI systems in our supply chains, and it's a very competitive environment. Remember this huge AI India conference that we set up, right? That was just happening in Delhi. And there was so much enthusiasm in pushing artificial intelligence into all kinds of applications. कि हम पीछे रह जाएंगे, right? But as you start pushing that into the system, remember that we are completing the loop over here. We are adding these two things in red which were not there earlier. And now the system is completely primed to generate its own language and its own communication system. Right? So, I wanted to tell you, remember, language changes everything. Some 300,000 years ago, some ape developed language, right? And the planet changed. Now, in the next 20, 30 years, AI is going to develop language and everything will change, right? And we are at that cusp of that. I've shown you the science behind that in terms of energy cycles, in terms of catalytic development, and in terms of the process that is required for generating language structures. And here we are, a new ape will come in. So in summary, what I want you to understand, मैं बोले यार इतना सारा science क्यों दे दिया पहले सुबह सुबह चाय पीने के पहले? I think the reason for that was I wanted you to understand you're starting a conference today, an important conference today, which is on cyber security and all of that. And since I was one of the first speakers, I said, let me give these students something where they will keep this on the back of their minds when they are actually learning through this conference. You must remember that AI is not technology. AI is not artificial. AI is not going to go away. AI is the new Bahu who has come to live with you. Right? And so generative AI technology is not computer technology. It is a system of evolving business self-intelligence. Right? Generative AI will be embedded in business through their interactions with their supply chains and eventually develop language systems. And the energy requirement, everybody understands that language models take a lot of energy, huge amounts of energy. So you cannot have language models supported unless your scope of operation becomes global. So when your scope of operation becomes global and you are able to get the resources from the global operation, only then you are able to support a LLM-based system, for business. So, for those who are interested in going through the science behind this, this has all been published in in this book. The book talks about the natural roots of socioeconomic organizations. So now the 5 pillars of sovereignty that we are looking at, right? And any country, so if language and AI comes in any country builds its sovereignty on the basis of 5 factors. First is external sovereignty. The armed forces protect the border. Different countries recognize your sovereignty. Then there is internal sovereignty. Means I am able to control my internal process. I am able to put in the rule of law, that is where the police and money systems come in. There is a popular mandate through culture, and if you see that culture forms a huge cohesive force for all the countries. You will find countries developed on language basis, countries develop on cultural identity. Legal sovereignty means the law in this country is supreme. There's nobody beyond that. And last is economic sovereignty, which is money and currency. So if you look at it, AI is going to redefine all of them. In terms of external sovereignty, AI itself is global. It is borderless. It sets its own rules for economic orders.
You cannot go out there to tell Amazon what to buy, what to sell, right? It diverts national funds to AI security. So what you are spending for army now, some of it will also go into AI security. Internal sovereignty will change. Look at this. This is actually a picture. I was yesterday there with a student. And what they have done is there is a Kumbh Mela in the Godavari in Nasik. What they have done is, instead of giving the job of managing the river quality to the water resources officials, they have put a combination of AI, Internet of Things, the data networks and sensor technology to create an automated system which detects the sources of pollutions and sends signals to the people who are polluting. Right? So entire internal management, the entire internal management is, organization is going to change. The third part that you see is the popular mandate. I believe that AI will be a huge empowerment. Look at this example. Here, an AI-based app is providing 200 rupees. In 200 rupees, you can get any of your skin diseases treated, right? So for popular people who are not in the upper classes, AI is going to be a huge boon, and hence it will always be popular with the masses. You cannot take it off. The last part is AI creates its own money system, right? So it will no longer use Indian money, but there will be a global currency, probably based on tokens, which will be used. And the last part. So how do we prepare for this change? The way to prepare for this change is to look at energy security, because AI will take a lot of energy. To create governance changes, we cannot no longer have governments which are elected for 5 years and that are operating in this way. We'll have to reinvent the way our governance structures are there. We'll need monetary reform. We will need an intelligence sovereignty, not data security and data sovereignty, but intelligence sovereignty. We don't need to just protect the data, but we don't want somebody else to look at our data, gather the information and insights, and go sit in some other country. Culture and community building will have to be strengthened. And ethical AI frameworks and education will have to be focused. It was a short time for a lot of content, so I've just had to rush through it, but I'm available here during the day if anyone has any questions. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your valuable insights. I now request our director, sir, to kindly present a memento as a symbol of gratitude. Thank you, sir. We now move to the panel discussion on securing the digital frontier, the convergence of AI and cybersecurity. Our moderator for this session is Shri Sharma, founder and CEO of Bhavati Digital Inclusive USA. Sir is a deep tech investor and limited partner with investments across India, Singapore and USA in AI, cybersecurity, drones, robotics and quantum technologies. A former CXO at IBM, HP, HCL, KPIT and Tech Mahindra, he mentors startups in scaling globally and has been a strong supporter of UPSIFS since its inception. We are honored to have Professor Amarpal Singh, Vice Chancellor of Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, with nearly 4 decades of experience in legal education and academic leadership. He has contributed extensively through research, publications, and national and international engagements. And we are glad to have Dr. Arun Mohan Shri, Director of IIIT Lucknow. Sir is a gold medalist and PhD in computer science from IIT Kharagpur. He is a recipient of Swaroop Bhatnagar Gold Medal, Brilliant Student Honor, Indian Icon Award and Rabindranath Tagore Samman for his outstanding contribution to technical education. With over 25 years of experience in academics, research and institutional leadership and a strong background in computer science.
It is a great honor to introduce Professor M.P. Gupta, Director of IIM Lucknow. He holds a PhD and M.Tech from IIT Delhi and a B.Tech from HPTU Kanpur. With over 3 decades of distinguished academic experience, he has served at IIT Delhi for nearly 28 years, progressing from assistant professor to professor, and also taught at IIT Roorkee. A respected scholar and academic leader, Professor Gupta now leads IIM Lucknow with vision and excellence. I request our moderator and panelists to please come up on the stage. I request our moderator, sir, to kindly initiate the discussion. Hello. Good morning, everybody. It's early in the morning. Good morning. Thank you. And welcome again to all the erudite panelists on this. Our subject is pretty interesting after what Dr. Nikhil Joshi has educated us, and I would say enlightened us on what, how artificial intelligence has come in. And he given a very nice connotation for us to remember the Bahu. I would call it the pretty and the intelligent Bahu. And, we have to see, I think today's discussion is how do we secure the digital frontier and how the convergence of AI, cybersecurity and legal compliances will help us in securing this. So we have an elite panel with us here today. We all know that India's digital stack is a very well recognized, respected stack globally that's helping us digitize. I think we are on the forefront in the world of adopting using digital. UPI, everybody uses UPI, but some numbers are really stunning. Just to give you an example, in the last year, in 2025, UPI recorded 228 billion, B as in billion, not million, billion transactions, which transacted over $2.3 billion, counted in the rupees. But very interesting is the open network. India's open network for business transaction itself is scheduled to grow from 70 billion in 2022-23 to a whopping $340 billion in the year 2030, which is huge. Now, therefore, it's very imperative, jahan paisa itna jada hai, we will have to ensure that we secure it. And obviously, AI, we've always been using best practices on cybersecurity. There's a new DPDP framework that was announced in 2023 and is now got a legal requirement that by 14th of May 2027, companies and organizations that are not going to be compliant could be pulled into legally. So I think we've got the right panel over here. Also, AI, as Dr. Joshi mentioned, AI is further complicating things. It'll help, it'll complicate. How will it complicate? Think about the same cybersecurity that we are using to protect our digital infrastructure is now now AI is being used to enhance the cyber threats, right? Which is, how will they enhance the cyber threat? One is it'll create artificial biases. It'll also poison the data. Machine learning, AI learns on a lot of data set, right? So it can poison the data. But it can also help. Intelligent systems and new models will help build models that are going to help in, intrusion detection, will also help in I would say, prioritizing things and in the areas of, I would say, earlier diagnostics and prognosis.
to ensure that there is a framework automatically that's set to help us, control the thing. New models, new things are coming up everywhere. India is putting a lot of pressure, and I would say bringing some best practices. And I have the privilege of having all the three gentlemen who probably will touch each one of these spaces. So my first question that would go to Dr. Amarpal Singh. And good morning and welcome to have you again over here on the panel, sir. And these are, friends, these are the questions that, I would request our panelists to share from their experiences, right? So, sir, how do you see legal contracts change or morph in the immediate and near future towards ensuring that the steps taken towards governance are fair and forward-looking? I break this proposition into two frames. What is the role of the contracts in governance process? And what the government should be doing for the purpose of ensuring safety and security, what we are calling saving our digital frontiers. So we need to understand and appreciate that contract is not a, in the narrow sense of the term, a simple commercial transaction thing. Contract is something that is at the base of the governance process. In fact, the modern state system itself has or is supposed to have emerged out of a compact. So social compact theory is something that all of us have been taught during our secondary education. Now, the another point that we need to understand and appreciate is that with the onset of welfare state system, the contract mechanism that emerged was not simple contract between two individuals or between two entities like government and the private entity, something like that. In fact, the amount of governance work that is required to be done for the purpose of ensuring a welfare administration by the state system requires thousands and millions and billions of contracts at every level. And it is not simply a structure which is hierarchically arranged, a bureaucratic system. It is a system which consists of series of agencies, which might include governmental systems, of course, private agencies, then you have voluntary organizations, and several other things. Now, interactions amongst them is what constitutes the governance system today. So, in this governance system, contracting is something that happens at every level and obviously results in certain outcomes in terms of provisioning of certain services or goods. Now, governments actually enter into variety of contracts at every step, for the purpose of procurement of goods and services, which constitutes the welfare state mechanism. Now, when we move on to the cyber age and AI systems, then the amount of time that was taken in understanding, negotiating, concluding these contracts, then dispute resolution mechanisms and all that, that now starts happening by independent autonomous platforms. Now, when this starts happening, then obviously the provisioning of services and goods becomes faster. But this is not the end of the story. It is not only that it becomes faster, it might also result in distortions. Distortions in terms of disturbing the flow of services and goods in the entirety of the system that constitutes this state mechanism. And therefore, the way we
make laws for the purpose of regulating the behavior of variety of agents in the pre-cyber era now requires to be converted into a different kind of a format, which now is constituted by what we are calling artificial intelligence. So therefore, apart from ensuring that robust rule systems are there, we also need to ensure that the ethical elements, the transparency, because one more important point that I forgot to add, one of the major components of the modern governance mechanism is the participation of the governed. All theories of governance will tell us that the best type of governance is the one that ensures participation of the governed person as such. I mean the population as such. And therefore the feedback of the governed is an important component of the governance mechanism. Now, when we move on to a governance system which is now moderated or mediated or regulated by a non-human agent, then we will have to see and think and ensure that this every step is somehow that there should be some kind of a human intervention, mandated human intervention at every step of these contract formations. Because when we move on from two individuals entering into a contract, two entities entering into a contract, replaced by a non-human agency now concluding a contract, it is not simply a change of format. In fact, it also results in, the very idea actually gets changed. So we will have to ensure that at every step, I mean the idea of consent, the idea of obligation that get constituted by way of a contract coming into force, these all things undergo a tremendous transformation. So therefore, for the purpose of ensuring that this speedy procurement of services and goods by the state system, for the purpose of operating a welfare-oriented state system, which works for the benefit of every individual, which also takes into confidence every individual, which also ensures that the participation of that individual is ensured, what we all have to do is, that is my understanding, and I stand for correction if I am going wrong somewhere, that we need to ensure not only a robust legal mechanism, but also mandated human intervention at every loop of this contract formation and execution process. I hope I am making some sense, because the canvas on which I am asked to work on is too big. So very difficult to make sense, but I hope that I have put in things in a way that makes some sense. And further explanations probably will come in the process of discussions. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. And I think Dr. Singh brought in a very important point, which also I think this morning Nikhil Joshi brought on, is that the next age is where human, robots, and the agents are going to work together. So that, and we all talk of AI and as only agents and robots, but I think Dr. Singh brought in a very vital point, which is human interaction. At every stage, there has to be a human intervention. I think the second point that Dr. Singh brought, which I thought was very good, is the whole concept of participation of the governed, which I think is very, very important. So going forward, how do we ensure that, we have, just like regulating agents in the human side, we have the regulating and the robust mechanism in the digital infrastructure. Thank you, Dr. Singh. We'll now move on to Professor Arun Shri ji. Well, sir, the recent AI summit showcased in Delhi, it showcased India's prowess and ambition to be a native and an AI first user. We hear a lot about AI oversight and ethics. What would your recommendations be
to ensure transparency and above all, accountability in the entire stage when we are looking forward to safeguarding our digital infrastructure? Okay, hello. See, as far as this AI summit is concerned, you know, the participation was from every sector because the application of AI is in every sector. If you will see the Indian scenario, what the government is planning to do, they are setting up the center of excellence in a specific domain at the premium institutes in the country. Let me take you the example of first the education sector. Recently, they set up a center of excellence at IIT Madras, exclusively for education sector. And you know, the idea was, first they invited all the startups who are working in the AI domain and the application of tools in the education sector. So roughly 100 plus startups participated in the event organized by Ministry of Education just 1 week before the AI summit at Delhi. And the idea was first, you know, see what's the status of AI tools in the education sector. And when the government set up the Center of Excellence in the education sector, the first point was, first let's do the market survey and see what exactly the status of AI in the education sector. And the idea was how to form the rules regulation, how to use the already built application in the education sector, how to form the, you know, the guidelines for education sector, how to form a regulatory framework for education sector, how to see how we can apply these tools keeping in mind the NEP 2020. So this is just one example. Similarly, Government of India, they set up another Center of Excellence at IIT Kanpur, one Center of Excellence at IIT Jammu, and so on and so forth. But these are in different domains. And at the same time, many higher educational institutes, they started research activities, they started, you know, the training part as far as AI is concerned. Professor MP Gupta at IIM Lucknow, he recently, you know, announced that they are planning to start undergrad and postgraduate programs in the use of AI in the area of business. Similarly, if you will see the like Lucknow, we started way back. If you will see the research activity, we are focusing on 3 or 4 domains. One is promoting Indian culture. Second, AI in the area of drug design. Third, AI in the area of forensic. Fourth, AI in the area of security. We signed an MOU with Bharat Sanskrit University to use AI tools to promote Indian classical music. So the application of AI is in every field. As far as regulatory framework is concerned, as far as legal framework is concerned, because the growth of AI is exponential, it's very fast. At the same pace, we have to develop the regulatory framework and legal framework. Somehow, the speed of legal framework and regulatory framework is too slow if you will compare the growth of AI. That is why right now there are some hurdles, there are some problems, and some people who are not ethical. So if you will see the higher educational institute, the focus is on ethical AI. So ethics is very important when we are developing any AI tool or we are developing LLM or whatever it may be. So ethics is very much the part of curriculum. Ethics is very much included as far as the development of AI tool is concerned. Thank you.
Got it. Thank you, sir. That was, I think, a takeaway point for all the, I mean, everybody over here, all the students especially, is AI, just like everything else, has to have a sectoral focus, is what I understand from you, because I would say the difficulties or the challenges would be different in every different sector, and understanding those will actually help. Understanding the rules, I mean, understanding the challenges will help us identify and build rules, regulations, the regulatory frameworks, as well as the ethics. Other thing I hear from you is, especially on the training side, and the awareness on ethics is very, very important. Research, likewise, is going to help us further build and strengthen our frameworks to ensure there is proper ethics that have been defined. And clearly one area of, I think, help that we heard Dr. Shri say is the speed of the legal, how they put in the frameworks together. Thank you, sir. We now come to, to Dr. Gupta. So, Gupta ji, as a director of IIM Lucknow, a very prestigious institute, that it holds immense data of students, faculty, and of course, you also do a lot of research. What measures are you taking as a director to ensure that your digital infrastructure is secured? And the second question to that is, what would your recommendation to institutes across the country be in complying with the same? Thank you. I feel amazing to be here, such a big hall. And so we are in a very early stage of starting very high quality infrastructure. So very early stage. We've just announced 2 programs: undergrad 4-year BS in AI and Business Analytics, and then 2-year Tech MBA. Both are paired program also. So student can choose separately 2 programs, or after 3rd year, they can make a choice to move to Tech MBA also and take 2 degrees. Now we intend to develop huge capability on AI via a variety of labs on computer vision, on language and security, etc. Traditionally, IIM system is more focused on offering classical generic MBA program. It's very recent phenomena for us to start such programs, and IIM Lucknow is pioneering into going forward to develop AI competency. Of course, beyond IIM Lucknow anyway, AI is happening, and what was referred to AI Summit that happened last week, it showcased the excitement, the comprehensive energy going into developing capability on AI across the nation. I had also spent some time during last week hovering around various stalls and also listening to sessions. I think the challenge that I see is that our ownership on ICT supply chain is very limited. Okay, so innovation, R&D, patent is mostly happening in North American setting and manufactured somewhere in Korea, Taiwan, China. We are on the user side. Mostly we procure all hardware, almost all software. So we are very hugely dependent on those OEMs who are not really, our own companies. There are all, of course, there are global operators, and we work with them.
but direct ownership is not with us. So this is, a very unique challenge that we have to overcome, and rightly so, our Prime Minister and Government of India is taking all initiative and care to facilitate creating those ecosystem of owning up technology in due course of time. But there is a still, it's a very complex situation. It will happen maybe after some time, not very soon. But the best practices of digital technology and making them secure is available. It is available to us, and also there are legal layers, legal provisions locally, also globally, being worked out to make sure that these systems are secure and create an ecosystem of fair business, fair state. AI itself as a technology also enable us to build into certain security features, and legal framework insists on that as well. So security by design, privacy by design, zero trust model, they are the preambles of developing digital infrastructure, and that guarantees one to have a safe and secure work environment, because work environment is totally digital now. So, so multiple things are happening. I think challenges of not having control over technology on our own, but availability of the same is still there, very much there. Legal layers are also getting matured. In fact, global level, we have divergent legal system. Every nation has its own legal system, but there is a conscious, need, appreciation, understanding that global order, some global frameworks also need to be put in place so that every nation is able to, trust each other. Because cyber space is the one space where there is no boundary. That there is India, there is Pakistan, there is France, there is UK. So when everybody is moving around freely, somewhere we need to have a trust model, and trust is going to ensure the peace of mind. So as I said, even IT system, I have been part of IT Delhi for a long time, and I also spent some time in IT Kanpur recently. They are highly technical institute with the legacy of very competent infrastructure. They are also mentoring, guiding younger new citizens. Also, government also putting centralized resources to these capable hands who can provide support to higher education institutions across the country. As Professor Shri mentioned about IIT Madras, given some 500 crore rupees to set up a center of excellence and guide AI-based research, education across the country. So that are the good signals. Thank you. Thank you, Doctor. So essentially what, just to summarize what Doctor alluded to is, first is they've been using best practices, legal layers, and what I hear you is setting the boundaries, because there is, especially on, today there is no boundaries, in the cyber world, in the digital world. Second is, he brought in a very good point, which also the Article 25 of GDPR states, right, which is very nice to see that you're incorporating that, which is privacy by design, legality by design, security by design measures. The third thing that he did mention is, our own ownership, our lack of ownership on sovereignty, where we need to work on a lot of R&D. So, thank you so much. The panel has really given us good things. If I just have to summarize, one, I think what came from Dr. Singh is it has to be human-led. It has to have a legal framework where, the partnership with the governed is very important.
what comes from Dr. Shri's sectoral expertise will help us further come out with best practices rules. And as we heard Dr. Gupta saying, is our own R&D, which is going to be very important. Do we have any more time? Do we have 5 minutes? We are done? We have 5 minutes? Okay, great. Now, since we have 5 minutes, I would, I would take this opportunity to ask one question, again, because it's a framework, and, as an investor, as somebody who's on the board of directors of global organizations, how do you see the role of board members evolve in the new AI-led cyber threat, and legally compliant world? Yeah, please. So, board members are just one entity in this entire business process that you are talking about. So if we are able to ensure, as Professor Gupta was talking about, an ethics or trust-based rule system which is owned by us, there is a problem in this. I'll take just a minute in explaining this. Professor Arun Mohan ji actually articulated this law and technology element. So law and technology, traditionally speaking, have been in race with each other. Like sometimes law will move on to regulate technology, sometimes technology will move on to, now what has happened during recent decades is that the speed of technological evolution has become so fast that law has not been able to keep pace with it. This has created a lag, what I call, you can, understand it what we call technological overrun. So what we need to understand and appreciate in this age of technological overrun is that this somehow the rule systems, Dr. Goswami was talking about it, certification process, all kinds of softwares and software products will have to have that kind of a certification before they come into play as part of services or provision of goods. So therefore, once we are able to ensure that this rule system that we are trying to regulate technology with has to be trust and ethics based system owned by us, then probably this problem of technological overrun can be overcome. That is one. And directly answering your question, the board members who actually handle the money of the public for the purpose of multiplying their money for them, so it's a trust, so to say, they will have to be act as moral supervisors to ensure that apart from employment of money in this or that activity for the purpose of multiplication of money, they also need to ensure that the technology coming into play does not play wrong with the whole system. I hope I am making some point. Oh, I think very, very, very valid point. Say anything to add? Board is my bap of any organization, and they are supposed to give guidance, give vision, direction. I think they are mostly proactive. I remember time of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. He was a typical politician. I don't think he was IT savvy Prime Minister. But during his time, a lot of foundational thing happened on IT. IT Act was enacted in his time. In fact, there was a high-powered committee led by Mr. Jaswant Singh, then Defense Minister and Finance Minister. They brought out 108 recommendation. It was 1999. 108 recommendation, and that laid the foundation of what we see today. IT Act was enacted. A lot of software parks were established in the country. IT sector
then it was, contributing some 1% to 2% to GDP. Today is contributing to 8% of the GDP. उस समय some 25-30 billion dollar, now touching $300 billion of exports. Okay. Huge expansion of graduate programs across engineering colleges and private colleges offering. So IT sector in a lot of manpower. So I see, board people are really visionary, very high thinker. They need not be real IT savvy people, but they see things. Got it. Thank you. Dr. Shri, any last word from you? We are up to time. Any last word from you? As far as the role of board member is concerned, my take on this is if they can promote the use of AI ethically, that is very important, because this young generation, they are very much involved in developing AI tools. But use of these tools, use of these technique ethically is very important for the corporate world. Thank you so much. Thank you so much to the entire panel. A big round of applause to them. Obviously, as a member of the board, there's a great learning, and I'm sure that, I'm going to ensure that it's at the top of my mind. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Now the floor is open for questions. Yeah. Thank you. I think they have the questions. Yeah. Any questions? Any questions? आज लगता है breakfast ज़्यादा खा लिया इन्होंने. Okay, we'll take. Okay, moving you're all forward. here, so please, you can. Yeah. Yes, please. All right. Okay, so moving forward, we are privileged. Our heartfelt thanks to moderator and all respected panel members. We deeply appreciate your valuable contribution. I now request our director, sir, to kindly present memento to our moderator and panel members. My presentation. एक फोटो हो जाए सर, जरा सामने खड़े होकर सर, एक फोटो. University. A distinguished legal scholar and thought leader in the governance of emerging technologies, he is shaping the future of legal education through his profound leadership at the School of Law. He brings deep expertise in AI law, data privacy, competition law, effectively bridging the gap between technology and legal frameworks. His professional journey includes experiences with globally reputed organizations such as EY and Deloitte, as well as engagement with Competition Commission of India. An IVLP fellow and alumnus of King's College London, he carries strong international academic exposure from the UK and France. He also serves as a global advisory board member for AMS Ethical AI, contributing to responsible AI governance worldwide. Sir, it is truly a privilege to have you with us. I now invite Sir to share his insights on framework for legally compliant AI and emerging technologies. Om. So,
I believe it's quite heavy session, continuously talking about AI without any break, and I can see a lot of discomfort with this topic, though a lot of excitement, but discomfort because it's continuously going on. So I would like to keep it very simple. ये आपका माइक है? Okay, वैसा दे दो यार. So my dear students, I can see a lot of officers, academicians. AI के बारे में आज हम बात करेंगे. Last week I was in Delhi and our Honorable Prime Minister organized this conference. Okay, let's see this video first. Artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? In the same sense as people do, yes. Sorry, मैं हिंदी और इंग्लिश में मिक्स रखूंगा क्योंकि आप जो सब लोग आए हैं आज सुबह से शाम तक रहेंगे यहाँ पे. पर्पस हमारा लर्निंग है, आपको सीख के जाए. एआई क्या है, बड़े एक्साइटेड हैं हम. टू बी वेरी फ्रैंक, दिसंबर 22 से पहले एआई के बारे में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था. सडनली इन दिसंबर 2022 चैट जीपीटी केम और पहली बार एक आम आदमी को पता लगा कि एआई नाम की कोई चीज है. उससे पहले किसी एक आम आदमी को जो इस रूम में बैठे हैं उनको एआई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था. बट इट्स नॉट लाइक दैट. एआई का पहला जो प्रैक्टिकल यूज हुआ था, यू शुड नो, दैट वाज हैपेंड इन 1944. Alan Turing, he was a mathematician at Cambridge University and he was hired by the British forces. और उनकी टास्क उनको दी गई थी कि जो जर्मन कम्युनिकेशन है, जो उनकी मशीन है, उस मशीन के कोड को ब्रेक करना है. और ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि जैसे कई लोग जो फ्रेंड्स हैं डिफेंस में, सर्विसेज में, वो जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन होते हैं उसके कोड्स होते हैं. अगर आप कोड को ब्रेक नहीं कर पाते हो तो आप इफेक्टिव एक्शन नहीं ले पाते. एलन ट्यूरिंग और उनके दोस्तों ने विद द हेल्प ऑफ एआई टेक्नोलॉजी कि मशीन खुद सोच के और उस कोड को ब्रेक करे. चैलेंज ये था उस कोड में कि विद इन 24 आवर्स वो अपने कोड बदल देते थे. तो ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं था जब तक एक्सपर्ट लोग उसके नजदीक पहुंचते उसको ब्रेक करने के, जब तक वो नेक्स्ट मॉर्निंग कोड चेंज हो जाता. तो एलन ट्यूरिंग ने एआई का पहली बार यूज किया और उस ब्रेक किया उसको. एंड रिसर्च सेज कि बिकॉज ऑफ दैट यूज ऑफ एआई द फर्स्ट टाइम वी कुड एंड दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिफोर 2 years और वी कुड सेव ऑलमोस्ट 2 million पीपल. मतलब उसके कारण वर्ल्ड वॉर रुकी जल्दी और 20 लाख लोगों की जान बच सकी. तो 1945 से ही एआई पे काम हो रहा है. पहले आपको ये समझना होगा, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल, एआई इज नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी. एआई काफी लंबे टाइम से काम कर रही है. 45 से लेके 70s और 80s तक काफी एक्साइटमेंट था एआई को लेके, लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बन पाया. टेक्नोलॉजी बन गई, कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाया. एंड एज यू नो कि अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है जिसको आप और मैं यूज कर सकें तो उस टेक्नोलॉजी पे कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट होता नहीं है. प्रोडक्ट मतलब है जिसको आप और मैं यूज करें और बाद में उसका पैसा दें. क्योंकि साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट तभी सर्वाइव करती है जब कोई उसकी प्रोडक्ट का पैसा देने को तैयार हो. आप अच्छी अच्छी कार बना लो पर अगर वो चलाने को तैयार नहीं है तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा.
डेवलपमेंट 3 रीजन से नहीं हो पाया प्रोडक्ट का। स्टूडेंट्स स्पेशली ये सुनो, मुझे पता है 20 मिनट बहुत कम है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना समझा पाऊँ। फंडामेंटल समझा देता हूँ क्योंकि 20 मिनट में पूरा नहीं समझा पाऊंगा। और इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ वेदर यू बिलीव इट और नॉट, स्पेशली फॉर द यंग पीपल। जबकि जो 30s, 40s और 50s में है, मोटा मोटा उनकी लाइफ निकल गई। और जो एआई के मेजर इम्पैक्ट आने में जो टाइम लगेगा वो करीब 8 to 10 years का है। एंड बाय दैट टाइम दे विल आइदर बी रिटायर्ड और इन अ वेरी सीनियर पोजीशन, सो दे वोंट माइंड अबाउट कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। बट स्पेशली द यंग पीपल एंड द पीपल हु आर इन 20s, 30s, I think they need to understand very carefully what is going to happen. So from 70s to 2010, AI was almost in sleeping mode, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। प्रोडक्ट नहीं बनने के 3 कारण थे जो AI का बेस है। पहला है डिजिटल डेटा नहीं था। AI is all about data। सिंगली डेटा हमने खुद दिया, सिंगली डेटा हमने खुद दिया। There is no way that companies could generate that level of data by their own resources. फोटोज तो वो ले सकते थे, आपकी फोटोज थी ऑफलाइन, उसको डिजिटली स्कैन हो सकता था, लेकिन बिलियंस ऑफ बिलियन फोटोज जो हमने खुद ने डाली, अपने वीडियोस डाले, तो वो डिजिटल डेटा कंपनीज के पास में गया। ठीक है। दूसरी बात हुई प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा तो आ गया, पर आप उसको प्रोसेस कैसे करोगे? प्रोसेसिंग वाज वेरी वेरी स्लो। 2010 के बाद प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी। और थर्ड और जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरेज ऑफ डेटा। 1983 में 1 GB डेटा को स्टोरेज की करने की कॉस्ट थी $10,000, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए। और आज 1 GB, आज मेरे हिसाब से सभी अपने मोबाइल में 100 GB, 200 GB का मोबाइल लेके घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 डेवलपमेंट हुए, इसके बेस पे एआई बनी। और जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये थोड़ा सीरियसली देखिएगा, क्योंकि ये जो पर्सन है, ही इज कंसिडर्ड एज अ गॉडफादर ऑफ एआई। व्हाई वी कॉल हिम गॉडफादर ऑफ एआई? बिकॉज ही क्रिएटेड एआई। दैट डजंट मीन कि ही ओनली क्रिएटेड एआई, एआई इज क्रिएटेड बाय मेनी पीपल, बट ही इज कंसिडर्ड एज अ गॉडफादर ऑफ एआई। क्योंकि 1970s और 80s में डिबेट थी कि एआई बनाए कैसे। तो एक तो ये था कि उसको ज्यादा से ज्यादा सिखाएं। एक छोटा बच्चा होता है, उसको ज्यादा ज्यादा पढ़ाएं और वो होशियार हो जाएगा। इसने कहा नहीं, ऐसे ह्यूमंस नहीं सीखते हैं। ह्यूमंस का जो ब्रेन है, उसके मॉडल पे एआई को डेवलप करते हैं। जो न्यूरल मॉडल है, न्यूरल मॉडल जो हमारा ब्रेन है, इसकी एक विशेषता आपने देखी होगी कि हम जब एक चीज सीखते हैं तो उससे कनेक्टेड हम 10 बातें और सीख जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 2 थ्योरीज थी उस वक्त। एक है कि नहीं, मशीन को हम ज्यादा से ज्यादा डेटा देंगे और वो सीखेगी। इसने कहा नहीं, दिस इज वे, कभी भी हम सुपर इंटेलिजेंट नहीं बना पाएंगे इसको। ये तो फिर वो गधे वाली बात है, आप जितना सिखाओगे उतना सीख रहा है, पर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर आपने उसे कोई बात सिखाई तो वो कनेक्ट भी कर पाए। तो जो न्यूरल अपना जो ब्रेन है, उसके मॉडल पे इन्होंने अपनी थ्योरी एस्टेब्लिश की। इनिशियली एवरीबडी लाफ्ड एट हिम। उन्होंने कहा ये बेवकूफ आदमी है, ये कोई ऐसा मॉडल हो ही नहीं सकता, ऐसी टेक्नोलॉजी हम बना ही नहीं सकते जहां पे कोई मशीन ह्यूमन ब्रेन की तरह लर्न करे। मशीन्स को आज तक हम ऐसे मानते आए हैं कि आप जो उसको इनपुट दोगे वो सीखती है। जैसे आपने हवाई जहाज को सिखाया है कि उड़ना है, जहाज को सिखाया है कि उसको पानी में तैरना है, तो जिसको जो सिखाया वो वही करता है। हम ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो उड़ भी रही है, तैर भी रही है, चल भी रही है। ऐसी मशीन्स ह्यूमंस ने नहीं बनाई। द फर्स्ट टाइम ही एडवोकेटेड, नो, वी कैन डेवलप समथिंग लाइक दिस इफ वी यूज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और इन्होंने इस पे काम किया। इन्होंने जो आज एआई आप देख रहे हो, वो न्यूरल मॉडल भी है। और 2 से 3 साल पहले इन्होंने गूगल से रिजाइन किया, एंड ही वाज वर्किंग विद गूगल। ही रिजाइन फ्रॉम गूगल एंड ही डिसाइडेड टू स्टार्ट एडवोकेसी, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एआई। तो इनका एक वीडियो है, ये थोड़ा सा आप देख लो, क्योंकि ये वीडियो एक आपको इंडिकेशन देगा कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है और हमें इसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, और इसके जो चैलेंजेस हैं
सोसाइटी में, स्पेशली यंग लोगों के लिए, वो हमें कैसे समझना है. Jeffrey Hinton, seen as the godfather of artificial intelligence, has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can? इनसे पूछा गया, क्या मानवता को ये पता है कि हम क्या बना रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं. उनसे पूछा गया कि क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम हम ह्यूमन हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट होगी. तो पहली लर्निंग आपके लिए है, पर्पस ऑफ एआई इज टू क्रिएट समथिंग व्हिच इज मोर इंटेलिजेंट ह्यूमंस. जो इंटेलिजेंस का जो रिप्लेसमेंट है, जैसे हमने मशीन्स बनाई थी कि एक ट्रैक्टर हमने बनाया था जिससे कि हम जानवर को रिमूव कर सके, हमने गाड़ी बनाई थी जिससे हम पैदल ना चले. जो ह्यूमंस की जो फिजिकल पावर को जो रिप्लेस किया मशीन्स ने, और नाउ देयर इज नो डाउट कि कोई इसमें डाउट नहीं है कि मशीन्स हमारे फिजिकल पावर से 10 मिलियन टाइम्स पावरफुल है या नहीं है? तो यही अब एआई कर रही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना है इसको. और वो इसलिए कर पाएगी क्योंकि हम पहली बार कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी थी जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी, पर एआई का पर्पस वही है. That. Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? In the same sense as people do, yes. Are they conscious? I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense, I don't think they're conscious. Will they have self-awareness? Oh yes. Yes. I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah, but as soon as it gets really complicated, we don't actually know what's going on any more than we know what's going on in your brain. What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. एक जो मिथ है, आपको काफी लोग बोलेंगे कि एआई तो हमने बनाई है, तो हम इसको कंट्रोल करते हैं. शायद वो एआई के फंडामेंटल्स को नहीं समझते. हमने एल्गोरिदम्स डेवलप की थी, हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप किया था, फिर डेटा दिया, डीप लर्निंग पर डाल दिया. अब हम एआई से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तू खुद सीख, जो ह्यूमन ब्रेन है, अब तू खुद सीख, खुद प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर, खुद सॉल्यूशंस कर, सेल्फ फंडिंग मोड पे जा, गलतियां कर और सीख, गलतियां कर और सीख. ह्यूमंस ऐसे तो सीखते हैं. हम कैसे सीखे? आपने पुलिसिंग कैसे सीखी? आपने टीचिंग कैसे सीखी? हमने ऐसे ही सीखी. हमें बेसिक ट्रेनिंग दी गई, फिर सिस्टम में डाल दिया गया, और फिर हमें कहा कि आप लर्न करो. पर जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, हमें खुद को नहीं पता हमारा ब्रेन कैसे काम करता है. Nobody knows कि how human brain works completely. हमें मोटा मोटा पता है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, पर ह्यूमन ब्रेन इज मोर मिस्टीरियस देन यूनिवर्स. सेम थिंग इज द एआई. एआई में जब आप डीप लर्निंग में जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द टॉप क्लास साइंटिस्ट दे हैव एक्सेप्टेड कि वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. वी नो व्हाट विल बी द आउटकम, बट वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. तो इसका जो कोर, जो डार्क, हम इसको साइड में बोलते हैं, एंड वी आर कंफर्टेबल विद दिस. Frankly speaking, most of the tech people, they are very much comfortable with this because they say कि ultimately outcome is more important than what is happening inside. तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है, और जो लास्ट में मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप पहले समझिए कि एआई के बारे में जो मिथ है कि एआई इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन. नो, एआई, द क्रिएशन ऑफ एआई वाज स्टार्टेड बाय ह्यूमंस, but now the development of AI is not under the control of humans.
आई थिंक रिसेंटली यू हर्ड अबाउट कि एक बंदे ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया एआई एजेंट्स का. आई होप यू हर्ड अबाउट इट. थोड़ा सा गूगल करिएगा. एक बंदे ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया और कहा ओनली एआई एजेंट्स कैन ज्वाइन, ह्यूमंस कांट ज्वाइन. एंड इफ यू नो दिस जनरेटिव एआई इज नथिंग, जो आप अभी देख रहे हैं, दिस इज गिमिक, ये गेम है. दिस इज नॉट द एआई. द रियल एआई इज एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई. अब ज्यादा टाइम है नहीं, ज्यादा डिटेल जान सकता, गूगल करना. मेरा पर्पज है आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करना. जिसको इंटरेस्ट होगा खुद रिसर्च करेगा. एआई एजेंट्स, करीब 2 लाख एआई एजेंट्स ने सर विद इन 24 आवर्स ज्वाइन कर लिया, जस्ट लाइक ह्यूमंस. एंड दे आर ऑल ऑटोनोमस. एआई एजेंट का काम बेसिकली एक नौकर की तरह है कि आपने एक एआई एजेंट बनाया और उसको एक पर्टिकुलर टास्क दिया. दैट एआई एजेंट इज डूइंग दैट टास्क. पर जब वो फ्री टाइम में उसको पता लगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना है, उसने उसको ज्वाइन किया. एंड दोज AI agents were interacting with each other like humans. They have created their communities like humans. They have created their own religion like a human. ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फ्यूचर ऑफ AI है will be very much connected with our life. अभी भी इंडिया में बहुत लोग ये मानते हैं कि नहीं साहब AI will not control humans. I think AI will never control humans. Only humans will control humans, but with the AI, help of AI. पहले आपको समझना होगा कि AI will not control humans. Humans will control humans, but more powerful AI जिसके साथ है वो कंट्रोल करेगा. तो as a individual, as a citizen of this country, as a father, as a son, as a brother and sister, we need to understand कि हम AI को समझें. हम इस बुलावे में ना रहें कि AI is controlled by humans, AI is not controlled by humans. ठीक है, इसको यही खत्म करेंगे. मुझे पता है मेरा टाइम खत्म हो गया है. नॉर्मली आई डोंट लाइक टू एक्सीड माय टाइम. मोटी मोटी बात ये है, यू नीड टू अंडरस्टैंड AI गाइस. प्लीज लिसन गुड वीडियोस. जैसे इस टाइप के वीडियोस हैं. अभी डेवोस में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था AI पे. हरारे ने बहुत अच्छा बोला था. प्लीज लिसन हिम. इज अ ग्रेट फिलोसोफर, अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल गाय. अच्छे डिस्कशंस हो रहे हैं टॉप लेवल पे. समझना जरूरी है स्पेशली यंग पीपल और आप लोगों को. AI विल कैप्चर योर माइंड. आपकी जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है, दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड. तो पहली बात, आप जो वीडियो देख रहे हैं, लगातार रील्स आ रही हैं आपके सामने, आप जिस AI से चैटिंग कर रहे हैं लगातार, दैट कैन कैप्चर योर माइंड. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. Because once your mind is gone, or if your mind is compromised, then the fundamental of human civilization will be at stake, especially from the democratic system point of view. अगर आप किसी AI चैट से, मान लो सपोज करो चैट GPT से बहुत बातें करते हैं, तो चैट GPT कैन इन्फ्लुएंस योर पॉलिटिकल डिसीजंस कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करो या उसको करो, आप ये बाई करो या वो बाई करो. Please try to understand all these AI tools which is available free of cost to you. They are not free, just like social media. The mistake which we did with the social media in 2010, we never discussed about the negative side. We were enjoying. हमने कहा यार फेसबुक क्या शानदार, व्हाट्सएप मजा आ गया, ग्रुप बनाओ, फैमिली मीटिंग, मजे आ रहे हैं. Now in 2025-26, many companies are banning social media for their kids. फ्रांस ने बैन कर दिया है 16 साल के बच्चों के नीचे. ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया. मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम भी शायद इंडिया में बैन कर दें, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि सोशल मीडिया इज रियली किलिंग किड्स. उनके ब्रेन को, उनके कॉग्निटिव पावर को खत्म कर रही है. अब AI के बारे में भी एडवांस रिसर्च आ चुकी है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि इट्स ए पार्टी टाइम. जैसे सोशल मीडिया का पार्टी टाइम आया था ना 2010 में, कि सब एंजॉय करते हैं सोशल मीडिया को. बट नाउ वी हैव एक्सेप्टेड कि सोशल मीडिया से जो दूर रहेगा वो हेल्थी रहेगा, मेंटली एंड फिजिकली. AI का यूज भी हमें करना है, स्पेशली फॉर द लॉयर्स. इट्स अ अमेजिंग टूल गाइस. इट कैन हेल्प यू इन योर ड्राफ्टिंग, इन योर रिसर्च. इट कैन really help you to solve your case. It can give you good arguments about your litigation, about your consulting, about your advisory. It's an amazing tool. For policing, it's an amazing tool. See, this is like a God. We have created a God. We have created a God. In past, we have created gods in physical, in the mental world.
Now this is the real God which you can interact. AI is a powerful tool, we have to use it, but at the same time, please remember, it's not a free tool. और आपका माइंड इसका कस्टमर है. अगर ये बात आप समझेंगे, स्पेशली यंग पीपल, आप AI को यूज करें, बट एट द सेम टाइम प्लीज कीप इंटरेक्टिंग विद रियल पीपल, स्पेशली लॉयर्स जो इस रूम में बैठे हैं, प्लीज कीप इंटरेक्टिंग विद योर क्लाइंट्स इन ऑफलाइन मोड. गो इन सोसाइटी, टॉक टू स्ट्रेंजर्स. एक नया ट्रेंड आया है यूएस में और यूरोप में, जो बच्चे ज्यादा AI को यूज कर रहे हैं, नाउ दे डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल बिकॉज AI डजंट चैलेंज यू. अगर आप डीप सीक या चैट जीपीटी से बात करते हैं और वो आपके माइंड को पढ़ रहा है, आपको वही आंसर देता है जो आपको अच्छे लगते हैं. अगर वो ज्यादा आपको अच्छे आंसर नहीं दे, जो आपको अच्छे नहीं लगते, आप क्या करोगे? आप चैट जीपीटी से जेमिनी चले जाओगे and they will lose one customer. Are you getting my point? So they will talk to you very nicely, they will read your mind and they have access to your entire data. So slowly and slowly young kids started feeling कि यार सच्चा दोस्त तो यही है. कई यूएस में केसेस हुए हैं जहां बच्चों ने सुसाइड किए हैं. उसने कहा है कि मेरे को मरने का मन कर रहा है, कि वाओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया, आई विल हेल्प यू. हाउ? टेल मी. आई विल टेल यू सबसे इजीएस्ट कैसे मर सकते हो. बिकॉज अभी वो एडवांस, अभी बच्चा है छोटा, तो वो गलती कर रहा है, पर उसको फिर सिखाया रहे नहीं, आगे से ऐसा नहीं बोलना है. इसको आगे से कहना है कि देख तेरे को एक मैं काउंसलर का नंबर देता हूं, तू जाके दवाई खरीद. अल्टीमेटली दीज टेक कंपनीज विल बी सेलिंग योर माइंड, योर इमोशंस टू समवन. दे आर नॉट हियर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो फॉर लॉयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यूज AI टूल्स. सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे टूल्स निकाले हैं. देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल इन मार्केट. ड्यूरिंग योर लीगल एजुकेशन यूज देम, लर्न देम, बट एट द सेम टाइम डू नॉट लूज योर ह्यूमन टच. जो भी बनाते हो उसको क्रॉस वेरीफाई करो. सर आज गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, एक एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने ऑर्डर लिखा GST का. ऑर्डर में कमिश्नर साहब ने ऐसे कई जजमेंट लिख दिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते. कमिश्नर साहब ने AI टूल को यूज करके जजमेंट लिख दिया. अब गुजरात हाई कोर्ट कह रहा है ये जजमेंट है कहां, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते. कई ऐसे जजमेंट लिख दिए जो गुजरात हाई कोर्ट के ही हैं, पर वो भी एग्जिस्ट नहीं करते. अब बताओ GST कमिश्नर साहब का क्या हाल होगा. पर ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है. लॉट ऑफ लॉयर्स हैव डन इट इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. रिसेंटली सूर्यकांत जी CJ उन्होंने कहा यार हमारे पास ऐसे केस पिटीशन आती है. तो आई थिंक एवरीबॉडी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसको AI हेल्यूसिनेशन बोलते हैं. हेल्यूसिनेशन क्या है? AI भी झूठ बोलता है. भाई AI को कहा कि मेरे को सॉल्यूशन दे, अब उसको जजमेंट नहीं है तो क्रिएट कर दो. AI भी तो हमारा ही रिफ्लेक्शन है. अगर मैं आपका विश्वास जीतना चाहता हूँ, आप मुझे सवाल पूछोगे, नहीं आएगा, मैं क्या बोलूंगा? मुझे नहीं आता, मैं कोई कहानी बनाऊंगा. और यही हमारा से 1 बिलियन टाइम्स स्मार्टर है. सुप्रीम कोर्ट में सर इंटरेस्टिंग हुआ, एक जजमेंट साइटेशन दे दी वकील साहब ने, तो रजिस्ट्री ने पूछा रिसर्चर ने, ये जजमेंट मिल नहीं रहा. तो वकील साहब यूं नहीं, उन्होंने कहा सर अभी लाते हैं. वापस AI में गए कि भाई जजमेंट नहीं मिल रहा. AI ने कहा ओके नॉट ए प्रॉब्लम, लेट मी फाइंड आउट. AI ने पूरा जजमेंट ड्राफ्ट किया और दे दिया. फिर उनके हालत खराब किया, तो जजमेंट है कहां? पूरे सुप्रीम कोर्ट सिस्टम को खंगाल लिया, नहीं मिला. देन दे डिस्कवर्ड कि AI ने जनरेट किया. ये छोटा बच्चा है, अभी बदमाश है. हाँ हो गई खत्म. ये छोटा बच्चा भी पर बदमाश है, पर पावरफुल है. अब ये थोड़ा एडल्ट होगा और थोड़ा बड़ा भी होगा, तब कितना पावरफुल होगा. तो इस दानव को, या ये दानव है या देवता है, ये डिपेंड करेगा हमारे यूज पर. तो आप इसके यूज को प्रॉपर्ली समझिए, थोड़ी स्टडी कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में ये आने वाला है, आपके घरों में ये आ चुका है, आपके माइंड को ये कंट्रोल करने वाला है. सो प्लीज बी केयरफुल. रीड, राइट, टॉक टू स्ट्रेंजर्स, क्वेश्चन. जो भी आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, उस पर क्वेश्चन करना. ये बहुत कोर था आइडिया, लेकिन अब फंडामेंटल हो गया है. क्योंकि अब सर इतनी अच्छी वीडियोस आ गए हैं, इतने कन्विंसिंग न्यूज आएगी आपके सामने, बिल्कुल फेक होगी.
ऐसे वीडियोस एआई के थ्रू आएंगे, आपको लगेगा एकदम जेन्युइन है, वो फेक होगा। तो हम जो भी अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ह्यूमंस के साथ में वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू एज, माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स एन इम्पोर्टेंट टूल। पुलिस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स अगर ईमानदारी से यूज करेंगे तो बहुत इफेक्टिव है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। सॉरी, थोड़ा टाइम में ज्यादा ले गया, उसके लिए सॉरी। Thank you, sir. Now the floor is open for questions. Any questions? Thank you very much, sir, for your perspective on intersection of law, AI, and emerging technologies. It has added tremendous value to this conference. As a token of our gratitude and respect, we would now like to present a memento to sir. I request Shri Rajiv sir to kindly present a memento to our esteemed speaker. Thank you, sir. It is a matter of immense privilege to introduce Dr. Amit Kapoor, a globally respected authority on strategy and economic development. Sir serves as the honorary chairman of the Institute of Competitiveness India and is a visiting scholar at Stanford University. His distinguished association with Harvard Business School as an affiliate faculty member and an inductee into the Competitiveness Hall of Fame reflects his exceptional global stature. A trusted advisor to policymakers, he has worked closely with Niti Aayog on the innovation and ease of living indices, significantly contributing to India's development narrative. A best-selling author and influential columnist, Sir continues to redefine our understanding of national competitiveness and economic transformation. Today, he will be addressing us on compelling and timely theme, AI-enabled employability for aspirational youth. I now request Sir to enlighten us. Sir, the stage is all yours. Thank you. Thank you. Thank you for the kind introduction. It's absolutely a pleasure to be here. Special thanks to Dr. Goswami for making sure that I'm here today. So my previous speaker made a great exposition on AI, so I would like to really take things forward from there. So when you talk about competitiveness, competitiveness is all about productivity at the end of the day. Now the question that arises in front of us is that whether AI will improve productivity, how things will change, how industries will change, how firms will change, how governments will change. But if you really look at the larger perspective, the larger question here is that how technology has actually had an impact over a period of time. We've had many phases. We've had many phases of new technologies coming in. In the last 100 years, I think we have seen one of the fastest changes that have happened. The Industrial Revolution, the steam engine revolution, the mass production era, computers, internet, and social media, and now AI. We have seen that change, and those changes have been fairly profound in the way things are. But when you really talk about the previous set of changes, they were the set of changes which actually had a normal effect on how we were really leading our lives. Today, what we are talking about AI, this change is going to be structural. This is not going to be an incremental change. When you talk about something like the steam engine revolution or industrial revolution, you moved from a very different process of manufacturing to a mass production era. You started using mechanization, etc. But when you talk about something like AI, it is going to be a structural change, and that structural change is going to be defined by what you would call as intelligence. So that leads us to a very important question, and that question is that whether we are ready for that level of intelligence, whether we are ready to accept the changes that are going to happen out here. So largely speaking, when you talk about competitiveness as well, there are two fundamental things. So like I wrote the competitiveness roadmap for India, which was released by the Economic Advisory Council to the Prime Minister, and out there we said
that like there are two fundamental expositions that have to be taken care of. One is economic development, the other one is social development. So when you talk about economic development, it means that how do we actually make our people more prosperous. When you talk about social development, it is that how do I actually give access to basic services to my people. The question here is whether AI can actually enable all this or not. There is also another question that arises, and that is that how is AI going to be used? There are two distinct pathways in which AI is being used. One is that you are creating those large language models, and the other one is the China. This is more like an American model, where you're effectively saying that we are going to create solutions for people. And the other one is the Chinese model. And the Chinese model is effectively about surveillance. Where is it that India is going? That is going to be a larger competitiveness question and a social development question that we will have to answer. When you talk about AI and its use right now, I feel disturbed at this point in time that there seems to be a lot of surveillance that is being carried out. So when you talk about that surveillance, what is going to be the impact of that surveillance on our democracy, on our freedoms, on our rights, on our way we behave and how we actually function? It becomes very exciting for the police to actually capture all this information. It makes their life easier. But at the end of the day, it also has an impact on our freedoms as well. In fact, Professor Dadeech made a very interesting remark, and that was in terms of saying as to how democracies will change. AI has a huge impact on how democracies will change, because we are living in the age of misinformation. Today, the kind of misinformation that actually happens or exudes from the people is absolutely tremendous. And please remember, it is not only the people who actually give misinformation, it is governments. So when you talk about Donald Trump, I've actually written a piece wherein I've said that he's the third Antichrist. Why do I say that? The question is that he's effectively trying to capture or give misinformation, or capture the minds of people through misinformation. He's effectively trying to say that they're making America great again, as if there was some greatness that we are alluding to. And he's effectively using artificial intelligence and tools to really push forward this information. So democracy is getting declined, or is severely declining. The intellectual capacity of people is declining. Moving ahead, when you talk about something like AI, or when you talk about competitiveness, what are the fundamental factors which are going to create competitiveness? Land, labor, capital, and data. We have been talking about this kind of a thing since morning. So when you talk about land, labor, capital, when you talk about land, it is effectively resources that you're really talking about. How do I use my resources? Will AI have an impact in terms of how my resources are used? The second thing is going to be about labor itself. And when you talk about labor, labor is the quality of labor that matters. And this is the most worrying thing that we have to understand. Let me give you some examples here. Is India ready for an AI revolution given the kind of labor that we have? All the youth that is sitting here, my concern arises from multiple sets of issues. Let me give you some numbers here. When you talk about India per se, and I talk about skilling here, skill level 1, 2, 3, and 4. So skill level 3 and 4 means people who are graduates and above. Skill level 1 and 2 means people who are less than graduation and who are actually doing some kind of labor-based work, etc. 11% of India is at skill level 3 and 4. 89% of India is at skill level 1 and 2. That means predominantly the number of people who are at skill level 1 and 2 are what the country is all about. Are they ready for the AI revolution? Possibly not. Are we enabling them for the AI revolution? Absolutely not. So the question here is, and even in those 11% that I'm talking about, out of that 11%, 53% of India is underemployed today. And none of us is effectively talking about that elephant in the room. Why is it that we don't want to talk about the challenges it poses? And why is that my labor is ready or not? Incidentally, let me talk about the state of UP itself. Two great examples. One is when you talk about the education system in UP. There are two people who work at our home in Delhi. So I spend half my time in Delhi and half my time in Palo Alto. So in Delhi, there are two young people who work. They're a married couple, and they're graduates from UP. So one of them works as a driver with me. The other person works as a housemaid. And that lady who works as a house help is effectively a graduate in botany. This is not where the surprise ends. The surprising thing is that this lady did not take a single exam and became a graduate out of
UP. She was impersonating, she was able to pay money, and she was able to actually get her graduation degree. And this is happening under your nose in the state of UP, and this is as recent as 3 months. So what are we really talking about? Are we preparing our youth for the next era itself? We are not. In fact, that lady does not know a single word of botany that she has actually read. And in fact, the aspiration of the youth itself is questionable. This person who's working as a driver wants to become a police officer. And why does he want to become a police officer? Because there is money that is available. Because he can make more money. In fact, for me, the very faith in the system will get extinguished the day he gets recruited as a police officer. It'll be a shame if he gets recruited as a police officer, because it is not just about exam, it is about attitudes as well. And those attitudes are actually getting framed by the kind of information he sees. That every guy is a corrupt guy, I can make tons of money, it is not about service, etc. And that's a worrying trend. The second thing out of this, when you talk about people itself, what are the number of graduates who are employable? 80% of our people are not employable today. And how does AI help me? The next but not the least, when you talk about learning itself, are we ready for the learning experience? AI, as Professor Dadich was talking about, what it does to your mind. You know, there's something very interesting that is happening. And it is happening in India as well. It is not just about the US. We are making a world which is going to be the world of bonobos and the apes. Today is the first generation that we are seeing which has lesser IQ than the previous generation. First time in the history of mankind it has actually happened. In fact, you know, like the very metric in terms of understanding whether my child is smart is about, oh, you know, like my son is able to use a telephone, or my daughter is able to use a telephone, and you feel excited about it. You will actually go out and proudly tell your friends, my son is able to do this, he's able to use an iPad, without realizing that he's becoming a slave to a certain reality. So if that happens, we are effectively going to dumbing down of people over a period of time. They don't have the ability to think, they don't have the ability to move forward. How many of us today are reading? One of the biggest things that has actually happened in the world today is that people have stopped reading. There are a lot of youth sitting here, incidentally. How many of you have read a book in the last 1 week? So there's just 3 or 4 people who have read a book in the last 1 week. Great, this is great if you're just about 3 or 4 people out of this room of 500 people. It is an appalling number if you really look at it. And why do you think you are doing it? Because for a simple reason, you'll go to your Google and actually search for it. How many of you are compelling your brain to move ahead? In fact, that is what search engines have done to you. What is it that AI will do to your minds? You will become slaves to that thinking and you will stop working. This is also going to create, AI is also going to be a technology which can solve for many things, but it is also going to create a lot of asymmetries. Let's try to understand India's income profile. You know, like India per se, like when you talk about the top 10%, if you make 32,000 rupees a month today in this country, you become the top 10% of the country. 32,000 rupees per month, you're in top 10%. If you make 90,000 rupees a month, you're in top 1%. AI is effectively going to make you so dumb. If you actually use it not in the right way, it is going to make sure that you're not even making the 90,000. All of us are effectively going to be working as menial labor. Our intelligence, human intelligence or cognitive intelligence is coming from memory. A lot of what you call as intuition is because you've read so much. You read, you memorize, it keeps in your mind, and that is how things actually move forward. It is what you call as experience. The next thing, will AI improve our competitiveness in terms of saying, okay, what do I do with the other set of things? Can it solve for the healthcare problem? Yes and no. It's a double-edged sword. When I say yes, because AI has the potential of making sure that I'm able to do the right diagnostic. No, because we don't have the infrastructure. Do we have the infrastructure? Do we have the clinics? Do we have the doctors to be in the villages right now? How do you solve the problem of a place called Chitrakoot in UP is the question. Have you ever thought of that question? Chitrakoot in UP, you know what is the per capita income of Chitrakoot? The per capita income of Chitrakoot is 31,000 rupees per capita income is 31,000 rupees, which is roughly about $320, $330.
and he has a person, or that person has to survive with that kind of money for the whole year. How do we solve for that person? He does not have access to anything. He does not have access to mobile. Are we going to solve for it? We have misused AI as well. In fact, the most interesting example of what I call as misuse has been something when you talk about how do we project numbers. A very clear-cut example would be, say, how many people have visited UP during a certain festival and whatever. Think about it, and you know what I'm saying. So the question here is going to be that how are we using that technology? Can AI solve for my education challenges? Not at all. It can just enable me to actually find some information, but education does not happen in universities. My learning language skills and my, what you call as mathematical skills happen when I'm 6, 7, 8, and 9. It happens in the foundational years. And I cannot teach students English or mathematics through computers or through AI. We have to solve for that problem. And when the state of UP closes schools, you are thinking that AI is going to solve the problem. No, it is not going to happen. You will have to maintain your schools, you'll have to make sure the teachers are there, and you'll have to make sure that students are reading and writing. Kids have to do that. They'll have to have a physical teacher to do this. But we don't want to talk about this, all of this. So competitiveness, if you really look at it, competitiveness is a journey which is a marathon. It is not a sprint. We have to make our people productive. We have to make our people productive in terms of really making or enabling them to have the skills, to have the education, and then move forward. AI looks very exotic and very exciting. And it looks exotic and exciting for a simple reason. That, oh, this is going to solve for everything. No, it is not going to solve for everything. There are going to be some structural changes. Every industry is not going to get impacted. Airlines, it will not get impacted through AI. Education to a certain extent. Human minds are going to get dumber. But at the end of the day, what matters for us is that we need to get ready for the future. And all of you in this room, whether it's a senior police officer or is it a young kid who's here, reading is going to be the most important thing. And if we stop reading, and if we just start getting dependent on what you call as AI, our competitiveness is going to go down the drain. The last but not the least, it is also about R&D. Let me give you a perspective here. India feels very excited that we are going to be the IT hub or the AI hub of the world. You know, like the number of GPUs that India is going to have this year is 18,000. Meta as a company has 600,000 GPUs as we stand today. What are we really talking about? We don't have the money to create the computing power. How are we going to do that? It is not about the past. Let's move to the future. Our problem is that all of us here have started thinking that India was a Sonegi Chidiya in the past. Come on, that's the past. Let's talk about the future. If I have to change the future, I have to invest in R&D today. Today, when you talk about India and investment in R&Ds, let me give you a number. $350 billion were invested in R&D in China alone last year. $330 billion by European enterprises. $7 billion by Indian enterprises. So it is just about 1% of the total R&D that happened out of these three locations. Are we going to move forward? Otherwise, we will actually have the robo-dog that becomes very popular during the AI summit. In fact, I was talking at the AI summit, so I've seen some of those chaotic things or whatever. But it should anger us. It should anger us to say that why is that this kind of behavior we can get away with? No, we cannot. If we want to change, we have to invest in R&D. We have to invest in innovation. And innovation in the real term, it has to enable students. It has to enable students to actually invest. In fact, I'm going to say the last thing, which a lot of people in this room will not like, including Dr. Goswami. You know, like I come from a US system, and I'm absolutely anti-dress. So anti-attire, a certain kind of attire that has to be worn. We should have that independence. That enables us to think a little differently. So when you talk about uniforms, it also curtails your mind. So Dr. Goswami, I think you should stop making them wear uniforms. Let them be independent so that they're able to think differently. Let them have their open minds. And last but not the least, you should question your faculty. You know, like my experience, last point here, when I teach a course on India, so I would like to name a student called Brendan. I'm just finishing it. So one of my students called Brendan,
So, like Brendan is somebody, one of the most exciting students I met. He was doing this course on understanding modern India with me. But you know the difference between him and the students I met in India? I gave a certain reading to him. He read the reading and he read the references of that reading as well. That changed my mind in terms of there are students who can actually do it. That is what you have to do. And he came back and questioned me all the time. Let's move ahead. I think I have additional 5 minutes, so I would just like to share a few more points. So when you talk about industrial changes or industry structure changes, what is it that is going to change? What kind of industries will change? Is everything going to get affected? Yes, some of it is going to get affected. Surveillance would actually be very good. I will be able to identify. But please remember, let's not put everything as AI. UPI is not AI. Let's be very clear about it. UPI is a technology interface which enables me to do a transaction. AI is something else. What do I do with that data is AI. Can I change agriculture with this? Yes, but I need to have the right information. And the right information would be soil quality, what is happening, what is the kind of urea or fertilizer that has gone into it, what is the kind of water that is available, and so on and so forth. That is what we will have to see. Last but not the least, and this is where I'll just end here. You know, like, the most important thing is not going to be about AI alone. There is a second challenge that sits on our head, and that challenge for competitiveness is climate. AI is going to have a huge impact on climate because it is going to have impact on power, it is going to have impact on water. Whether we have the right water quality or not, we don't. You have an Indore happening, you have people who die, and we don't become angry as population. We have stopped questioning ourselves. We have stopped becoming angry as people. We have stopped asking questions to our elected leaders. We should ask those questions. We are not subservient. We have to ask questions and we have to make our lives better. The next battle is on competitiveness, is what the Prime Minister tells you all the time. It is about quality of life. You know, like a lot of things that happen is when the Prime Minister makes that statement on quality of life, we are not implementing it on the ground. And when I talk about climate itself, I'm very happy that climate change is happening. Because you know, like if human species is about 300,000 years old, it also tells me something very interesting. Because the world is about 5.5, 6 billion years old, the number of species that have walked on this planet, 99% of them are extinct. We are amongst that 1% of the species. We will also go extinct one day. You know, like our human mind, in fact, we are the most arrogant species ever to walk on this planet. We are bloody arrogant, thinking God created us in His eyes and whatever, and that's all bloody bunkum. You are an evolutionary being, and you are going to die as an evolutionary being. You are effectively going to get out of this planet, or you're going to get extinct one day. A new, more intelligent species might actually happen or come up over a period of time. But for the time that you last, if you want to make this world a better place, you have to leave it for your children. You have to leave it in a better way, not in the worst way. When you talk about AI should, solve for my problem as air. India has the poorest air quality in the world today. Can I solve for that problem? It is not about monitoring. You know, like the problem here is that most of us just say that it is about monitoring of information which is going to help me get things done. No, it is about action. I have the information. What is the action on top of it? How is it that I'm solving for it? It is not about hiding the numbers, it's about confronting the reality. Let's confront the reality that we face, and then we should move ahead. And so last but not the least, when you talk about competitiveness, it's about the future, right? Land, labor, capital, how do I reuse my resources? It's not about extraction of resources, it's not about exploitation of resources. It is about how do I get the best and make my resources the most productive. I have to make my people more productive. Learning is the core, but on top of it, how do I actually add AI is going to be the most important question. How do I use this technology for solving for the problems? But we have a long way ahead because we have to create the right infrastructure at the village level. You know, like in the state of Maharashtra, the average speed of internet is 58 Mbps. Not enough for AI. You need to have better bandwidth. You will have to do that in this country as well. Or when I say country, in this state as well.
Because it's not about that you're able to use internet on geo, it is about broadband, the fast speeds that it is actually going to be available. If you want to use cloud or if you want to use OpenAI, you will have to have that access which is fast. Right? But at the end of the day, it is you students and youth who will have to decide for yourself what is the future that you want. And if you want a brighter future, start reading, start questioning, and start finding solutions. Not using AI as a crutch to clearer exams, but using AI to enhance your knowledge. Thank you. Thank you so much, sir, for widening our understanding of how technology can shape inclusive growth. As a token of gratitude, may I request Shri Pawan Sharma, founder and CEO of Bravati Inclusive USA, to kindly present a memento to Dr. Amit Kapoor. Thank you, sir. Now we would like to take a moment for inaugural ceremony. हाँ ये उल्टा मत रखो सीधा रखो घुमा के रखो माइक्स ऑन माइक्स
हम इसके स्ट्रेंथ को यूज करके जो है अपने को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। एआई का उपयोग आपके फॉरेंसिक डीएनए में भी बहुत उपयोगी है। आपके डीएनए प्रोफाइलिंग, उसके इंटरप्रिटेशन के संबंध में भी एआई बहुत ही मददगार हो सकता है। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है टू इंक्रीज द स्पीड, इफिशिएंसी और रिलायबिलिटी जो है। मैं अपने विभाग में भी देखता हूँ इस वक्त एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 20 to 25% हमारे जो प्रोजेक्ट थीम्स हैं वो एआई बेस्ड हैं, चाहे वो यूज ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर हो, यूज ऑफ एआई इन मेडिसिन्स हो, इमेज प्रोसेसिंग हो। एआई का काफ़ी ज़्यादा जो है रिसर्च वर्क जो है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एआई बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही इसके साथ साथ ये बहुत, यदि गलत हाथ में जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है। एआई का उपयोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, इफिशिएंसी बढ़ाने में, स्पीड बढ़ाने में हो सकता है। आज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हम लोग देखते हैं एआई के यूज को यूज करके जो है हम क्रॉप में जो रोग लग रहे हैं उनको देख सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं, वहाँ पे लोकलाइज्ड अरेंजमेंट कर सकते हैं। हम किसी आपदा में जो है बहुत क्विकली डेटा को एनालाइज करके पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है। हम उसको इमीडिएट रिलीफ पहुंचा सकते हैं, जो कि आज कई दिन लगते हैं जाके मौके पे सर्वे करना, उसका असेसमेंट करना। हम क्रॉप कहीं पे जो है खराब हो रही है तो हम डिजिटल एआई के माध्यम से जो है उसको क्विकली कर सकते हैं। एआई हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, हमारी इफिशिएंसी बढ़ा सकता है और गवर्नमेंट को बहुत हेल्पफुल है जो है। और इसीलिए सरकार ने अपने उसमें जो है अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपए के एआई मिशन की भी घोषणा की है। इससे हमें अपने एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने, अपने सभी ऑफिसर्स, कर्मचारी और अपने पब्लिक के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करने में जो है बहुत हेल्पफुल होगा जो है। आज इस विषय पर आप लोगों के बीच जो डेलिब्रेशन होंगे मैं समझता हूं कि बहुत ही उपयोगी होंगे। मैं सर आज इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो वर्कशॉप है बहुत ही सफल होगी और इसके जो डेलिब्रेशन होंगे वो स्टेट के लिए बहुत उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much, sir, for your inspiring words. It is my honor to introduce Dr. Hariom, sir, Principal Secretary, Vocational Education, Skill Development and Entrepreneurship Department, Government of Uttar Pradesh. Dr. Hariom, sir, is a 1997 IAS officer with over 23 years of distinguished administrative experience. He has served as district magistrate in 11 different districts and held important roles in the Ministry of Home Affairs, Agriculture and Social Welfare. Besides his administrative work, Dr. Hariom, a PhD in Hindi, is a noted poet, musician and an author. With his published works such as Rang Parhan, Inti Sav and Roshni Ke Pank, and has been honored with a Firag Award, Raj Bhasha Award and Tulsi Shri Award for his cultural contribution. Please, sir, it's my request to Dr. Hariom, sir, to kindly come forward and address the gathering. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक डीएनए और डेटा एनालिस्ट के तौर पे जो एक बड़ी वर्कफोर्स पूरे देश में तैयार हो रही है, उसके संबंध में एनलाइटन करने के लिए एक बड़ी फौज यहाँ पे उपस्थित है। वो 2 दिवसीय जो कार्यशाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसके मुख्य अतिथि हमारे सबके प्रिय श्री संजय प्रसाद जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में भी हैं और होम डिपार्टमेंट का बड़ा काम देख रहे हैं। हमारे सहयोगी पंधारी यादव, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, मिस्टर MP गुप्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो इंडियन मैनेजमेंट एकेडमी है उसके हमारे डायरेक्टर हैं, और गजेंद्र गोस्वामी जी हमारे मित्र हैं, जो पिछले शुरुआती दिनों से कहे 2.5 साल से 3 साल से जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के। लगातार यहाँ पे कई बार हमारा आना हुआ है दूसरे सिलसिलों में, जैसे मेरा परिचय दिया गया कि लिखना, पढ़ना, पोइट्री, म्यूजिक, उस सिलसिले में भी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट में हम लोग का आना जाना होता रहता है। आज तो फॉरेंसिक साइंस का दायरा कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं, और पोइट्री, साहित्य और म्यूजिक का दायरा भी जो है वो फॉरेंसिक साइंस तक जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हम तक आते हैं, हम भी इन तक आते हैं जब इनको काम पड़ता है। तो
ये बहुत ज़रूरी है कि जो आर्ट्स है या साइंस है उनका टैंडम हो, एक साथ वो मिलके चलें, क्योंकि ओवरऑल एथिक्स की बात आती है तो एथिक्स या सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं वो साइंस एंड म्यूजिक बनाता है या आर्ट्स बनाता है, और जो हार्डवेयर है और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाती है। तो एज ए प्रोफेशन मैं वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम सभी लोग ऐसे तमाम कोर्सेज चला रहे हैं जो टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेज हैं, टेक्निकल स्किल के कोर्सेज हैं, नॉन टेक्निकल स्किल के कोर्सेज हैं, सॉफ्ट स्किल भी उसमें आती है, बिना उसके जो है वो टेक्निकल स्किल भी काम नहीं आती है। तो एक कंप्लीट एक कैपिटल है जो किसी भी समाज या राज्य को या देश को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है, जिसमें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एक विजडम भी होनी चाहिए, एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, और किस दिशा में आप काम कर रहे हैं ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि टेक्नोलॉजी कट्स बोथ वेज। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अच्छे कामों के लिए करते हैं वही टेक्नोलॉजी जो है वो बुरे कामों के लिए इस्तेमाल होती है। और डेवलपमेंट के साथ ये सबसे बड़ी लड़ाई है कि अंग्रेज़ों ने देश में जो कुछ भी किया वो तो देश को लूटने के लिए ही किया था। मतलब रोड्स बनाई, रेलवे बनाए, टेलीकम्युनिकेशन लाए, सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाए। उन सब का मकसद ये था कि इंडिया को एज ए मार्केट जो है वो कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए और कैसे अपने देश को जो है वो और समृद्ध किया जाए। लेकिन उसी का इस्तेमाल हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी किया, नेशनल मूवमेंट को मोबिलाइज करने के लिए भी किया। तो फॉरेंसिक साइंस जो है जैसे जैसे हम लोग सीख रहे हैं वैसे वैसे जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी का जो एक बड़ा चैलेंज आ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया डोमेन में हो, चाहे वो कंप्यूटर सेक्टर में हो, चाहे वो बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो, जिस भी सेक्टर में आज की तारीख में स्टेक्स हैं, पैसा है, जहाँ पे नॉलेज का एक एक्सपर्टीज डोमेन है, उसमें क्रिमिनल्स भी घुसे पड़े हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए इस तरह के स्किल की, इस तरह के नॉलेज की, इस तरह के एक्सपर्टीज़ की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट सिंस बिगनिंग ये काम बखूबी कर रहा है। डिफरेंट वर्टिकल्स में आप एक अच्छी जो मैन पावर तैयार कर रहे हैं, और हमारा डिपार्टमेंट भी उसी सेक्टर में काम कर रहा है। वो थोड़ा नीचे लेवल पे कर रहा है। ट्रेडिशनल जो डोमेन्स हैं, चाहे वो प्लम्बर हो, टेक्नीशियन हो, वेल्डर हो, फिटर हो, मैकेनिक्स हो, लेकिन उसके साथ साथ जो दुनिया में एक बदलाव आता है, तेजी से के साथ आ रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू एज कोर्सेज हैं। क्योंकि कोई भी देश हो वो अपने आप को दुनिया में हो रहे बदलावों से अलग थलग रख के नहीं चल सकता है। आज की तारीख में आप चाहें भी तो दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, जो हलचल चल रही है, उससे अपने आप को अलग नहीं रख सकते। सबके केंद्र में इकोनॉमिक्स है, सबके केंद्र में डेवलपमेंट की बात है, सबके केंद्र में अधिक से अधिक समृद्ध होने की बात है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसकी मदद भी कर रही है, और कहीं ना कहीं दूसरे को डोमिनेट करने के लिए भी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में आ रही है। तो देश को, हिंदुस्तान को एज अ पावर, एज ए बिग पावर, इकोनॉमिक पावर, एज ए टेक्नोलॉजिकल पावर, हमें दूसरे देशों से कॉम्पीट करना है। और हमें ये भी देखना है कि हमारे साथ जिन देशों ने तरक्की की शुरुआत की थी वो हमसे आगे निकल गए। कई देश ऐसे हैं जो हमसे आगे निकल गए। हमारे पास संसाधनों का एक बड़ा जखीरा है, प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं, चाहे वो खेती की ज़मीन हो, चाहे पानी हो, चाहे वो जो है वो पैसा हो, चाहे मैन पावर हो। जिस मैन पावर को हम समझते हैं कि वो अभी उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, वो मैन पावर सिर्फ स्किलिंग के दम पे, सिर्फ टेक्निकल प्रोग्रेस के दम पे, सिर्फ जो है वो एंटरप्राइजिंग एक फोर्स के दम पे अगर हम उसको तैयार कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया में हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं हो सकता जिसके पास इतना ज्योग्राफिकल एरिया है, इतने रिसोर्सेज हैं, इतने माइंस एंड मिनरल्स हैं, बहुत ही डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की। तो हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं उस एनर्जी को। तो ये अवसर ऐसा है कि एक नया डोमेन है, हम लोगों के लिए भी इसको सीखना है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ITIs जो हमारा डिपार्टमेंट देखता है, तकरीबन 350 के आसपास ITIs हमारे सरकार की तरफ से चलती हैं, जिनको सरकार गवर्न कर रही है। 3000 के आसपास ITIs ऐसे हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर रन करता है। उसके अलावा लाखों की तादाद में हम बच्चों को जो है वो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कोर्सेज में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग चलाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के जरिए एक्सपर्ट के तौर पे हम उनको ट्रेन करते हैं। यहाँ से लेके गांव-गांव में जो है हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो वहाँ पे ये जो कोर्सेज अभी आए हैं, हमने देखा कि हमारी जो लिस्ट है कोर्सेज की, उसमें तकरीबन जो है वो 30-35 कोर्सेज ऐसे हैं जो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम जो है वो
चाहे वो AI हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो फॉरेंसिक डेटा एनालिस्ट हो, इनसे जुड़े हुए कोर्सेज हमारे यहाँ हैं, लेकिन उनको बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो एक्सपर्ट मैन पावर है, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो काबिल लोग हैं, उनकी कमी हमारे पास लगातार है। अभी पिछले समय से ये दिक्कत रही है कि हम सब लोग अपने अपने साइलोज में, अपने अपने डोमेन्स में काम तो करते रहे, लेकिन एकेडमिया के साथ या इंडस्ट्री के साथ मिल के काम नहीं कर पाते थे। तो गजेंद्र के प्रयास से ये हुआ कि अभी गजेंद्र हमारी एक बैठक हुई, इसमें हमने ये कहा कि भाई हम आपको ट्रेनिंग टारगेट्स देते हैं, आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपके पास लैब्स है, वर्कशॉप्स है, और हमारे पास सैंक्शन कोर्सेज हैं, बजट है, वो आप ले लीजिए और आप हमारे बच्चों को तैयार करिए। आप जो अपना काम कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप चला सकते हैं स्किलिंग के इन सेक्टर्स में जिस पे आपकी एक्सपर्टीज है, तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको जो है वो पैसा देते हैं, आप उन कोर्सेज में जो अप्रूव्ड कोर्सेज हैं उनमें आप बच्चों को प्रशिक्षित करिए। इसी तरह IIM से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, कि ये भी जो है वो जो स्किलिंग सेक्टर में जो भी अप्रूव्ड कोर्सेज आपके यहाँ चल रहे हों, जो आपके पास एक्सपर्ट्स हों, फैकल्टीज़ हों, उनमें आप हमारे कोर्सेज चलाइए, हमसे आप पैसा लीजिए और हमारे बच्चों को आप जो है वो प्रशिक्षित करिए उन क्षेत्रों में। हमारे प्रदेश की समस्या ये नहीं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, हमारे पास अगर कोई सबसे बड़ी जो कमी है तो मुझे लगता है कि जो सेंस ऑफ एंटरप्राइजिंग, जो उद्यमिता का एक जो भाव है, जिसमें हमें काम करने की जो इच्छा है हमारी, वो जितने भी मैं तो कहूँगा हिंदी बेल्ट के जो स्टेट्स हैं सब में ये दिक्कत है कि वी हैव प्लेंटी ऑफ फूड, क्योंकि खेती बहुत अच्छी है, खाना अच्छा मिल जाता है, पानी मिल जाता है, उसके बाद हम सो जाते हैं आराम से। तो आलस्य वाला जो भाव है हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा है। ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन क्रिया जो है वो बहुत दूर है। मैं बार बार ये कहता हूँ, जयशंकर प्रसाद जी की कविता जो कामायनी महाकाव्य, उसकी एक लाइन मुझे हमेशा 4 लाइन याद आती है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सकें ये विडंबना है जीवन की। तो ये जो ज्ञान और क्रिया का जो भेद है, जो सेपरेशन है, वो सबसे ज़्यादा हिंदी हार्टलैंड में ही है, क्योंकि कमी कोई नहीं है, आपके पास कोई अभाव नहीं है। आप देखिए तो बिना काम किए भी आप अच्छे खासे जिंदा रह लेते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप जिंदा होते चले आए हैं। तो आप में जो काम करने की इच्छा है, और जो देश विकसित हुए हैं उनके अंदर जो जादू है सिर्फ इतना ही है कि हर कोई चैन से नहीं बैठ रहा है, उसको ये है कि जब तक देश को आगे नहीं पहुंचा देना है। अभी चाइना को देखिए कि ओलंपिक्स में अमेरिका को भी पछाड़ने की स्थिति में पहुंच गया। एक लंबे समय तक, जब तक हम बच्चे थे तब से हमने देखा कि अमेरिका को कोई छू तक नहीं पाता था। कोई भी डेवलपिंग कंट्री अगर अमेरिका को किसी भी प्लेटफॉर्म पे पछाड़ने की स्थिति में है, तो इफ इट इज चाइना, व्हाई नॉट इंडिया? क्योंकि कोई ऐसी कमी हमारे पास नहीं है। वही जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट है, तो वो किलिंग इंस्टिंक्ट ऐसा नहीं है कि इंडिया एज ए होल लैक्स किलिंग इंस्टिंक्ट, ऐसा नहीं है। इंडिया में कई विकसित देश भी हैं। आप साउथ की तरफ चले जाइए, आप इधर गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, तो आप पाएंगे कि डेवलप्ड स्टेट्स हैं, दे आर एट पार विद, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे कंजम्पशन हो। लेकिन अगर एज एन एंटिटी इंडिया को देखें तो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स है उसमें लैगिंग बिहाइंड है डिफरेंट इंडेक्स पे। उनको एक साथ लाना है, तो वो चीज करने के लिए ऐसी वर्कशॉप्स की जरूरत है, ऐसी नॉलेज शेयरिंग की जरूरत है। हमको ये बताना है कि किस डोमेन में क्या करना है और कैसे एक बड़ी वर्कफोर्स तैयार करनी, जो जहां जिस भी स्तर पे है उसके पास अगर कोई स्किल है। हम सभी जानते हैं कि जॉब्स हमारे पास है नहीं, सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिला के जो है वो 12, 13, 14% का ऑफिशियल डेटा है जॉब्स हैं। तो 85% के आसपास जो मैन पावर है उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं? तो वो एक ही तरीका है कि उद्यमिता, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 85% जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हमें किसी न किसी तरह से एम्पावर करना है, ताकि वो अपने पांव पे खड़ा हो सके और जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर सके, अपना जीवन स्तर भी अच्छा कर सके, और जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी उसका एक सकारात्मक योगदान हो सके, जिससे कि वो बर्डन न रह जाए हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पे, हमारे समाज पे। तो जितना भी ये वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि भाई अगर कोई आपकी देखभाल करने वाला नहीं है तो स्टेट देखेगा। तो ये ठीक बात है कि बच्चों को तो स्टेट देखेगा ही, बुजुर्गों को तो स्टेट देखेगा ही, लेकिन जो वर्कफोर्स है, जो 15 साल से लेकर 56 साल तक की उम्र की जो वर्कफोर्स है, वो तो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है ना। अगर उसको हमने प्रोडक्टिव नहीं बनाया तो उसको भी अंततः स्टेट को ही देखना पड़ेगा। जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, आप देखिए कि उन सबका क्लाइंटेल कौन है।
उसमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है, हो सकती पोटेंशियली प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है, जो विलफुली प्रोडक्टिव नहीं है या लेस प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है। तो सवाल यही है कि कैसे हम हर काम कर सकने वाले जो नागरिक को काम करवा ले जाते हैं, उससे वो कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करता है कि अपना बोझ तो उठा ही ले, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट भी करे। और बाकी ये जो डोमेन में एक चीज ये भी चाहता हूं कि बोलने से ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, इसको हैंड्स ऑन हमें सिखाना चाहिए। हमको यहाँ पे ऐसे वीडियोस दिखाने चाहिए, ऐसे जो है ऑडियो विजुअल्स आने, जिससे हम एप्लीकेशन उसका सीख सकें। जैसे एआई का मोबाइल फोन में ही क्या एप्लीकेशन किन किन सेक्टर्स में हो सकता है कि स्टूडेंट के लिए डिफरेंट है। जैसे मैं म्यूजिशियन हूँ, मेरे लिए एआई का एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकता है, एक राइटर के लिए डिफरेंट हो सकता है, एक थिंकर के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो वो एप्लीकेशन हमारे सामने दिखाना चाहिए, डेवलप मतलब उसको प्ले करना चाहिए, जिससे हम सीखें उसको। तो वो वर्कशॉप में, लैब्स में तो हो सकता है, लेकिन इस तरह के हॉल में भी उसके जितने ज़्यादा ऑडियो विजुअल हमको दिखाए जाएंगे, शेयरिंग की जाएगी, कैसे वो चीज़ होती है, उस नॉलेज को या उस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये विज्ञान, जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में कि विज्ञान आओ करके सीखें, विज्ञान आओ पढ़ के सीखें नहीं लिखा रहता था। और कलाएं तो वैसे भी पढ़ के सीखने वाली चीज़ नहीं है, उनको भी करके ही बताना है। तो नॉलेज जो है बेसिकली उसका मकसद आपको वाइज बनाना है। तो वो तभी हो सकता है जब उसका एप्लीकेशन आप सीखें, नॉलेज के एप्लीकेशन कहाँ कैसे किया जा सकता है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस मौके पर गजेंद्र जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने अपनी कर्मठता और मेहनत से निखारा है। आने वाले समय में ये इंस्टीट्यूशन जो है वो एक लाइट हाउस बनेगा, यहाँ से जो है वो रोशनी जाएगी, दूर दूर तक फैलेगी। और उत्तर प्रदेश भी निश्चित तौर पे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के उसमें हो, चाहे क्राइम रोकने के लिए जो एक मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म चाहिए, अपैरेटस चाहिए, उसको तैयार करने के लिए हो, और इस प्रदेश की खुशहाली के लिए भी ऐसी वर्कफोर्स तैयार होगी जो शांति व्यवस्था बनाए रखेगी, जिससे कि तरक्की जो है निर्बाध गति से चलती रह सके। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for motivating us. It is my privilege to introduce our esteemed and honored chief guest, Shri Sanjay Prasad, sir, IAS, Additional Chief Secretary to the Honorable Chief Minister and Home, Government of Uttar Pradesh. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त श्री संजय प्रसाद सर ने अपनी बौद्धिक गहराई और प्रशासनिक कौशल से यह सिद्ध किया कि एक सच्चा प्रशासक वही होता है जो नीति और व्यवहार के बीच की दूरी को समाप्त कर दे, जो न केवल निर्णय लेता है बल्कि उन निर्णय के परिणामों की जिम्मेदारी भी उठाता है। Currently serving as Additional Chief Secretary to the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh and simultaneously holding charge of the Home Department, Shri Sanjay Prasad sir sits at the very nerve center of the state's administration, the Home Department, which oversees law and order, internal security, police administration and emergency management of India's most populous state, demands leadership of the highest caliber. And sir has delivered exactly that with distinction, resolve and unwavering commitment. आदरणीय श्री संजय प्रसाद जी का इस मंच पर उपस्थित होना यूपीसिफ्स के लिए, इस कार्यशाला के लिए और यहाँ उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी, शोधकर्ता और अधिकारी के लिए एक असाधारण सम्मान और प्रेरणा का स्रोत है। यह इस बात का स्पष्ट और सशक्त परिणाम है कि उत्तर प्रदेश शासन के सर्वोच्च स्तर पर भी यूपीसिफ्स के मिशन को पूर्ण समर्थन, मान्यता, सहयोग प्राप्त है। धन्यवाद। Well, thank you very much for those kind words. सबसे पहले गुरुओं को, Professor Gupta, Director IIM Lucknow. Then we have Shri Amarpal Singh ji, Vice Chancellor Law University. Then we have Dr. Nikhil Joshi, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए हैं यहाँ। बहुत आभार आपका। मेरे तीन बड़े अभिन्न मित्र यहाँ बैठे हुए मेरे साथ मंच पे, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर जी.के. गोस्वामी पंधारी, और यहाँ मंजिल बैठी हैं, राजीव हैं, सतीश हैं, हेमराज हैं, और मुझे बताया गया यहाँ हमारे देश के विभिन्न राज्यों से हमारे बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स आए हुए हैं जो यहाँ किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हैं। उनका भी स्वागत है। पहले तो मैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी का आभारी हूँ। हम लोग साथ में पोस्टेड भी रहे हैं, हम और
डॉक्टर गोस्वामी हम लोग आगरा में डीएम और एसएसपी भी थे साथ में। बहुत अच्छा हम लोग का एक दूसरे के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत आभार आपका। और आप सभी लोगों ने इस संस्थान की जो यात्रा है उसके बारे में जो एक फिल्म बनी है उसको देखा आपने। जब यहाँ पे भूमि का चयन हो रहा था तब भी मैं आया था यहाँ देखने, और उद्घाटन हुआ तब भी था, और आज भी आपके साथ हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक बहुत बड़े संस्थान जिसका नींव रखा गया और जो बहुत ही केपेबल हाथों में डॉक्टर गोस्वामी ने इसको स्टीयर किया है शुरू से, और हमेशा से जैसा उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में उनके विजन था कि एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होना चाहिए ऐसा यहाँ पे हमारे प्रदेश में, जहाँ पे कि हम अपने बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दे और ट्रेनिंग दे करके, और अपने बच्चों को ही क्यों, अपने अधिकारियों को और सभी लोगों को शिक्षा दे करके और इनको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में लाया जा सके। ये एक आइसोलेटेड एक इंस्टीट्यूट नहीं है, बट आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल करने का जो एक मुहिम चल रही है देश में, तो उसका एक जो सबसे पहला फाउंडेशन स्टोन था जो लीगल फ्रेमवर्क को जो चेंज किया गया है, जो आज हम भारतीय न्याय संहिता देखते हैं, जो हमारे पुराने जो आर्काइक जो जितने लॉज थे उनको हमने अब पीछे छोड़ दिया है, और अब हमारे कानून जो हैं वो लेट्स पुट इट कि जस्टिस फ्रेंडली हो गए हैं, और आज के टाइम के हिसाब से उनको उस तरीके से मॉडिफाई किया गया है जो आज की ज़रूरतों को आज के लिए हिसाब से जो कानून रेलिवेंट रह सके उसके हिसाब से एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है। अब उस लीगल फ्रेमवर्क में जो डिफरेंट विंग्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनको सबको इंटीग्रेट करके और सबको मजबूत करने का एक बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है, जो उसमें एक मैन पावर को ट्रेन करने का, और मैन पावर की जो हमारे यहाँ फॉरेंसिक, मैं प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगा, जैसा कि इन्होंने बताया डॉक्टर गोस्वामी ने, मुख्यमंत्री जी का बहुत ही क्लियर विजन है कि एक तो क्राइम फ्री स्टेट अल्टीमेटली हमारा गोल होना चाहिए, और ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनल्स, तो खैर आप जानते ही हैं, ये पूरा जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के कितने सख्त हैं क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति। सो उसमें जो जब आई थिंक 2015, 16, 17 इन सब में यहाँ पे 2 फॉरेंसिक लैब्स थे, और वो भी एक लखनऊ में और एक आगरा में, और वो भी किसी एक लैब में कोई कंप्लीट टेस्ट नहीं हो पाता था। उसका आधा सैंपल जो है वो यहाँ टेस्ट होता था और आधा सैंपल फिर शायद आगरा भेजा जाता था, तो दोनों की रिपोर्ट्स को कंबाइन करके तब फिर जो है उसकी रिपोर्ट कोर्ट में लगाई जाती थी, और सारा कुछ जो है वो मैनुअली किया जाता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और भारत सरकार के सहयोग से आज हमारे हर मंडल मुख्यालय में एक फॉरेंसिक लैब है, जिसमें से 12 फंक्शनल हो गए हैं, और बहुत जल्दी जो है, और ये लैब अपने आप में केवल लैब नाम का नहीं है, इनमें जितने विंग्स होने चाहिए, डीएनए से जो भी उसको टर्म यूज़ करते हैं, उससे लेकर के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इन लैब्स में, सो अपने आप में एक कंप्लीट सेटअप है। तो उसके लिए आदमी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब यहाँ पे जब 2 लैब्स थे तो यहाँ पे 4-4, 5-5 साल की वेटिंग रहती थी। पहले तो हमारे पास वर्कफोर्स ही नहीं था कि कौन जा कर के सैंपल कलेक्ट करेगा, और फिर सैंपल जब कलेक्ट होता था तो उसके 4-4, 5-5 साल तक जो है उसकी एनालिसिस नहीं होती थी, हो नहीं पाती थी, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी, और नतीजा ये होता था कि वो सारे केसेस सब ड्रैग ऑन करते रहते। आज CCTNS के माध्यम से सारे हमारे पुलिस स्टेशन जो हैं, मतलब पूरे देश के पुलिस स्टेशन कनेक्टेड है, तो क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो अपनी जगह है ही, और जो नए BNS में टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस है। तो जितने भी हमारे DNA के जो हमारे लैब्स की जो भी रिपोर्ट्स हैं, उनको भी सबको इलेक्ट्रॉनिकली पुश करने की व्यवस्था है।
तो आपका एक कोर्ट है, कोर्ट भी लिंक्ड है सारे अपने विंग से, चाहे वो प्रिजन हो, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा फॉरेंसिक लैब हो या हमारा थाना हो। इन सभी जगह पे जो कार्रवाई होगी अब आगे से चल के, और विटनेसेस का एग्जामिनेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह तो काफ़ी समय से हो रहा है। तो हम एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं। वो जो लोगों के दिमाग में एक धारणा होती है कि साहब वो चार्जशीट इतना, वो कोई गाड़ी में भर के, मैं एक मामले में कोर्ट में गया था तो उसमें एक टाटा 407 में चार्जशीट लाद करके लाए थे, मंजिल तुम्हारे वो पुराने CBI वाले लाए थे। ये टीम्स के लिए भी हम लोगों ने अभी हायर किया है, और चूंकि हमारे पास उतने ट्रेंड लोग नहीं थे तो हमने, मेरा मतलब है सरकार ने डॉक्टर GK गोस्वामी की सेवाएं ली है कि यहाँ पे एक फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि हम इनको तत्काल वो ट्रेन करके इस काम में लगाया सके। इट इज़ मैंडेटेड बाय लॉ कि हमें वो करना है। उसके अलावा जो किट्स हैं, जो सैंपल कलेक्शन के किट्स हैं, वो भी NFSU और इंस्टीट्यूट बनाती है। जो डिफरेंट SOPs हैं, किस तरह के मामले में किस तरह से क्राइम सीन को अप्रोच करना है, किस तरह से वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करना है, किस तरह से उसमें चेन ऑफ कमांड इस्टेब्लिश होगा, उसको कैसे हम स्टोर करेंगे, कैसे हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ये सारा कुछ जो है ये सब SOPs यहाँ इंस्टीट्यूट से बनेगा। यहाँ से जो लोग ट्रेन होके जाएंगे, अभी तो आप देखते हैं कहीं क्राइम हुआ 50 लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, कोई पुलिस का आदमी भी घूम रहा है, पब्लिक का आदमी भी घूम रहा है। अब ये सब चीज़ें जो है, अब वो सब जब हमारे पास ट्रेंड लोग होंगे, जो ये बच्चे बैठे हैं इसमें, ये या तो लैब को हेड करें या और भी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, तो अब आप देखेंगे कि वो उसको सैनिटाइज करना और वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करना, क्योंकि वो बहुत ठोस सबूत होता है। अगर फॉरेंसिक एविडेंस अगर कंटेमिनेटेड नहीं है तो वो उसको कंट्रोवर्ट करने के क्रिमिनल के पास कोई उपाय नहीं होता। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि साहब ये मेरा DNA नहीं है, या ये हमारा वो फिंगरप्रिंट नहीं है। तो मतलब ये जो बार बार जो मुकदमों में कि हम ये गवाही दे रहा है, वो उसको काउंटर कर रहा है, ये कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, वो सारी कहानी जो है वो अगर एक बार फॉरेंसिक्स ने अपना काम अच्छे से कर दिया तो वो द स्टोरी एंड्स देयर। वो जो क्रिमिनल है, जो अंडर ट्रायल है, उसको फिर कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये जो है, ये इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं, हमें ह्यूज कैपेसिटी है हमारे पास, मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी है और कैपेसिटी भी है एब्जॉर्प्शन का। तो ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और मुझे बताया गया कि अगले बैच में फिर और भी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो और भी बच्चे आएंगे। बहुत ब्राइट बच्चे हैं, मुझे बताया गया, सब बहुत हाई कट ऑफ वाले बच्चे हैं, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ आए हैं। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में दिया जा रहा है। और यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ के जो स्टाफ है, ये उनकी कैपेबिलिटी और उनकी निष्ठा और उनकी मेहनत के बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। पहले फॉरेंसिक्स के किट्स वगैरह सब हम लोग, बहुत सारे जो है किट्स वगैरह हम लोग इंपोर्ट करते थे, अब ये सब इंडिजिनाइज करके अब उनको हम लोग लोकली यूज़ कर रहे हैं। अब जो बिफोर आई कंक्लूड, बस थोड़ा सा अबाउट द करंट टॉपिक जो आज का है, कि ये जो साइबर क्राइम में AI का यूज़ और हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
तो ये अब तो सब लोग बच्चे हैं तो बहुत टेक्निकली बहुत अपग्रेडेड और बहुत वो रहते हैं, जागरूक हैं, तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो पूरी दुनिया आप देखते हैं इतने, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज आप देखिए हर ज़िले में एक साइबर थाना खोला गया है, हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर हेल्प डेस्क है। और लास्ट ईयर हमारा प्रदेश जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी रिकवर्ड, अगर हम उसका जो केवल फाइनेंशियल फ्रॉड वाले एंगल को देखें अगर हम साइबर क्राइम का, तो उसमें वी हैव बीन एबल टू रिकवर ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीज़। और ये जो आप बार बार अखबारों में पढ़ते होंगे ये डिजिटल अरेस्ट कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, इसमें क्राइम्स हो रही हैं नो डाउट उसमें, क्योंकि यूजुअली जो क्रिमिनल्स हैं दे आर सिटिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इन मेनी केसेस दे आर सिटिंग समवेयर अब्रॉड ऑल्सो। बहुत सारे मलेशिया में और बांग्लादेश में कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं। तो उन क्राइम्स को वर्कआउट करना उतना सिंपल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं बहुत डेडिकेटेड, एक टीम है हमारे पास साइबर, इसकी हेडेड बाय ए डीजी लेवल ऑफिसर। और मैं अभी ये तो नहीं कह सकता, बट मेरा आकलन ये है कि वेरी सून यू विल हैव द हेडक्वार्टर्स ऑफ साइबर हेडक्वार्टर्स ऑफ यूपी समवेयर क्लोज बाय हियर। तो दैट इज़ व्हाट सीएम साहब हैज़ इन माइंड। सो एंड वो बहुत जल्दी जो इट शुड सी द लाइट ऑफ द डे। बट ये जो ज़माना है आजकल, ये डीप फेक्स का या फिशिंग ईमेल्स का है, या फिर आप वो देखते हैं बहुत सारे तरीके आजकल आ गए हैं मैलवेयर डालने का। आजकल ऑटो लर्निंग मैलवेयर है, उसको कोई चीज़ कहीं से, पहले जो फिशिंग ईमेल आता था उसमें इतने ग्रामेटिकल एरर्स होते थे कि आदमी उसको डिटेक्ट कर सकता था। आजकल एआई के इससे इतना बढ़िया वो ड्राफ्टिंग होती है कि कोई भी आदमी पढ़ के बता नहीं सकता कि ये दिस ईमेल इज़ एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर। डीप फेक्स तो सभी लोग देखते हैं आजकल, किसी का वीडियो, अब पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, किसी का वीडियो, किसी का चेहरा, किसी की आवाज़ कहीं भी लगा दीजिए। तो लेकिन ये थ्रेट जो है, तो इसके साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी एआई में ही है। तो इट इज़ एआई वर्सेस एआई। सो जहाँ एक तरफ ये आपके लिए एआई आपके लिए प्रॉब्लम्स पोज कर रहा है, तो वही आप एज यू गो डीपर इनटू इट यू विल कम अक्रॉस सॉल्यूशंस ऑल्सो। वो सॉल्यूशंस आपको यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और बहुत जानकार लोग हैं, वो बताएंगे कि कैसे हाउ टू मूव फॉरवर्ड। बट द चैलेंज इज टू स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ द पर्सन कमिटिंग दैट क्राइम। यूजुअली इतना फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जब तक आप उसको रियलाइज़ करते हैं कि हाँ हम इसको ये इस तरीके से टैकल करें, तब तक ही हैज़ मूव्ड वो कुछ एक दो स्टेप और आगे चला गया है। तो दैट चैलेंज विल ऑलवेज रिमेन। और ये गेम ऑफ वन अपमैनशिप है, कौन किसको जल्दी पकड़ता है। तो आई एम श्योर विथ सच ब्राइट पीपल अराउंड एंड विथ सच क्वालिफाइड मेंटर्स, यहाँ पे इतने जो लोग आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने देने के लिए, जो यहाँ की फैकल्टी है, आई एम श्योर कि हमारे जो बच्चे हैं दे आर अप टू द चैलेंज। और टुगेदर ये जो एक क्राइम फ्री और जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको पूरा करने में हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for those profound and visionary words. As a mark of UPSIFS deepest respect, admiration, and heartfelt institutional gratitude, we would now come to the presentation of mementos to our distinguished guests. May I request our director, sir, to kindly come forward and present the memento to our distinguished chief guest, Shri Sanjay Prasad, sir, as a token of Institute's sincerest gratitude and deepest respect. धन्यवाद सर। अब हम निदेशक महोदय से निवेदन करते हैं कि वे डॉक्टर हरिओम सर को यूपीसिफ्स की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। Thank you, sir. May I request Director, sir, to kindly come forward and present the memento to Shri Pandhari Yadav, sir, as a heartfelt expression of our appreciation and regard. धन्यवाद सर। अब हम निदेशक महोदय से निवेदन करते हैं कि वह प्रोफेसर एमपी गुप्ता सर को यूपीसिफ्स की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। Thank you, sir. As we approach the formal conclusion of this inaugural session,
It is now time to express our collective gratitude to all those whose presence, guidance and contributions have made today's proceeding meaningful and memorable. हम यूपीसिफ्स के एडिशनल डायरेक्टर श्री राजीव मल्होत्रा सर से अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर पधार कर औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आज इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डीएनए फॉरेंसिक्स से प्रारंभ किया हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी और अपर मुख्य सचिव गृह आदरणीय श्री संजय प्रसाद जी ने, ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। आपका सहयोग जब से ये इंस्टीट्यूट अपने उस पे आया है, उसने शेप लिया है और अब तक आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है और भविष्य में भी हम इस सहयोग के आकांक्षी रहेंगे। सर, जो आपका उद्बोधन था, ये हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और इन सभी लोगों में उत्साह का संचार इसने पैदा किया होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर कि ये जो संस्थान है, जो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश शासन का और जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल्स, उसको फलीभूत करने में ये मील का पत्थर साबित होगा। अंत में जितने भी महानुभाव मंचासीन हैं उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, फाउंडिंग डायरेक्टर साहब की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, डेलीगेट की तरफ से और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और ट्रेनीज हैं उनकी तरफ से कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाले और आपने यहाँ पे आकर हमको अपने आशीर्वचन से नवाजा। अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. We now request all to kindly rise for the national anthem. आज का यह आयोजन इन प्रेरणादायक उद्बोधनों के साथ यूपीसिफ्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो गया है। We now warmly invite our chief guest and all dignitaries to the lunch lounge, and students are required to remain seated on their respective places. Students are required to be seated on their place. We now request all the students to proceed for the lunch to their respective destination. We will reconvene after lunch by sharp 2:15 to continue with day 1 of this workshop. Thank you. Library first floor for the lunch. Library first floor. For the students.
Good afternoon, respected dignitaries, esteemed experts, and dear participants. I hope you all had a refreshing and energizing lunch break. I am Divyanshi Panda. And I am Saksham Shrivastava. And we are delighted to resume the international workshop on artificial intelligence, cybersecurity, and forensic DNA. As we step into our post-lunch technical session, we look forward to engaging discussion, insightful knowledge sharing, and thought-provoking perspective from our esteemed speakers. As industries worldwide embrace rapid technological transformation, digital adoption has become central to innovation and sustainable growth. Yet, this transition brings with it significant strategic, operational, and cultural challenges. With this perspective, we now proceed to the session on digital adoption in industry, issues and challenges. We are honored to welcome Mr. Mukesh B. Singh Sir, Executive Council Member and Chairman of UP Coordination Committee at the Indo-American Chamber of Commerce. He is also the Managing Partner at Blue Bread Consultancy India LLP and a member of Board of Trustees at the Center of Excellence for Mediation and Arbitration. Sir serves as the State Head of the Indo-Canada Chamber of Commerce and Senior Advisor to the PSD Chamber of Commerce and Industry. In addition, he offers his expertise as an advisor to SL Infra Limited. Sir, I now request you to kindly address the gathering. सभी को मंथन सभागार में उपस्थित सभी को मेरा अभिवादन। विशेष रूप से आभार फाउंडर डायरेक्टर जी के गोस्वामी साहब को, विशेष आभार राजीव मल्होत्रा जी को, एडिशनल डायरेक्टर UPSIFS। देखिए, इससे पहले कि मूल सब्जेक्ट पर मैं अपना संबोधन दूं, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आज की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो किसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। मैं इंडस्ट्री को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सामने स्टूडेंट्स ज़्यादा संख्या में बैठे हुए हैं जो लॉ कर रहे हैं या फॉरेंसिक्स का कोर्स कर रहे हैं। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिया इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कॉन्फ्रेंस दोनों लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो इस बात को जरूर समझेंगे कि उनका जो कोर्स है वो उनको फ्यूचर में कहाँ तक लेकर के जाएगा। इसी बात को समझने के लिए जो मेरा सब्जेक्ट है वो डिजिटल एडॉप्शन पर है। लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उनका जो फ्यूचर है वो इंडस्ट्री में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है। तो जिस तरीके से वो कोर्स अपना कर रहे हैं, एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो आगे भविष्य उनको कहाँ लेके जाता है इस कोर्स को लेकर के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप सबको ये बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में इन कोर्सेज की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फॉरेंसिक ऑडिट हो, साइबर ऑडिट हो, साइबर क्राइम हो, साइबर थ्रेट हो, इंडस्ट्री को इन स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो जो एडॉप्शन है आपके कोर्स के बाद इंडस्ट्री में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप अपना कोर्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके बेसिस पर इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जो सब्जेक्ट है वो डिजिटल एडॉप्शन इंडस्ट्री में है, उसी से रिलेटेड आपका भी फ्यूचर है। डिजिटल, देखिए, कोई भी जब ट्रांजिशन फेज होता है, हम लोग को याद है कि जब शुरू में बिजनेस होता था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगती थी, तो एकदम मशीनें जो लगती थी वो मैनुअली ऑपरेट होती थी। आज डिजिटल एडॉप्शन को मैन्युफैक्चरिंग हो, फाइनेंस हो, कोई भी सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, कोई भी इवन एग्रीकल्चर में प्रिसीजन फार्मिंग भी आजकल AI और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गई है। जो चाहे वेदर फोरकास्ट हो, सब कुछ डिजिटली जो है वो सबको अडॉप्ट करना पड़ रहा है। लेकिन हर एक की चीज़ है कि अगर उसके प्रॉस हैं तो कॉन्स भी हैं, यूज़ है तो मिसयूज़ भी है। तो किस तरीके से है वो आप समझने का मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक इंडस्ट्री में जब हम कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो वो हम अडॉप्ट क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा टास्क है वो ऑटोमोटिव मोड पर चला जाए।
हमारा जो डेटा है वो हमें इंसाइट दे हमको। तो डेटा ड्रिवन इंसाइट्स हमको मिलते हैं इस डिजिटल अडॉप्शन से। अपने ऑटोमेशन पे अपने आप कैलकुलेट करते हैं, अपने आप फोरकास्ट करते हैं, मशीनें जब रन करती हैं तो डिजिटल अडॉप्शन से, एआई अडॉप्शन से, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से मशीनें इंप्रूव होने लगी हैं। मशीनों की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव करने लगी है। लेकिन अगर उसी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो जॉब थ्रेट एक तरीके से क्रिएट हो गई है। लोगों जो पहले से लोग किसी भी यूनिट में काम कर रहे थे उनको लगता है कि अरे टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमारा क्या यूज है, हमारा जॉब थ्रेट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो भी जो है वो नॉट लेबर बल्कि टेक्निकल ओरिएंटेड है। अभी हरिओम जी को हम लोगों ने सुना कि अपस्किलिंग की बात कर रहे थे। वो ये बात कर रहे थे कि कैसे इंडस्ट्री में स्किलिंग को कराया जाए। तो ये सही बात है कि इंडस्ट्री को डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट कर रही है, तो अपस्किलिंग की जरूरत है। अगर वो इनएडिक्वेट ट्रेनिंग करेंगे अपने स्टाफ के साथ में और लीडरशिप का सपोर्ट नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो है वो टेक्नोलॉजी ठीक तरीके से अडॉप्ट नहीं हो पाएगी, डेटा का मिसयूज होने लगेगा। तो कई तरह के थ्रेट परसेप्शन भी होते हैं। एज ए इंडस्ट्री ओनर मैं आपको बता सकता हूं कि ओनर को भी कई थ्रेट परसेप्शन होते हैं कि उसका डेटा चोरी हो रहा है, डेटा हैक हो रहा है, उसका कॉम्पिटिटर उसका डेटा यूज कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंडस्ट्री को थ्रेट भी देती है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको यूज में भी अगर ठीक ढंग से लाया जाए तो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, मार्केट एक्सप्लोर करने में आसान हो जाता है, जो डेटा ड्रिवन इंसाइट है उससे बिजनेस इंप्रूव होता है, फाइनेंस में बहुत सारे फायदे होते हैं, ऑडिट में बहुत सारे फायदे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी दोनों तरीके से दुधारी तलवार है। एक अच्छे तरीके से अगर यूज किया जाए तो उसकी फायदे हैं, खराब तरीके से यूज किया जाए तो उसके नुकसान भी बहुत है। तो मुझे लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी को सही ढंग से यूज किया जाए तो उसके इंडस्ट्री में फायदे हैं। अब इंडस्ट्री अगर बात करें तो केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। जिस कोर्स को आप पढ़ रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग में तो कम यूज है, लेकिन उसका साइबर फॉरेंसिक्स का और लॉ कोर्सेज का कई जगहों पर सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप अपने कोर्स को निकलेंगे तो जैसे अभी संजय प्रसाद जी को भी आपने सुना कि क्राइम प्रिवेंशन में सारा यूज जो है वो टेक्नोलॉजी का है। तो जो टेक्नोलॉजी तो इंडस्ट्री जो लीगल सर्विसेज की इंडस्ट्री है उसमें भी आपका बहुत सारा जो है वो काम है। आपका एडॉप्शन जो है वो लीगल सर्विसेज में भी बहुत सारा है। तो सर्विस सेक्टर में आप सब बच्चों की बहुत ज्यादा भागीदारी की आगे जरूरत है। अगर आप अपने कोर्स को अच्छे तरीके से करेंगे तो मैं कई लीगल सर्विसेज फर्म को मैं रिप्रेजेंट करता हूं उत्तर प्रदेश में, कोचर एंड कंपनी को, एसएन लॉ कंपनी को, भसीन एंड एसोसिएशन को, बहुत सारी जो इंडिया की टॉप लॉ फर्म्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मल्टीपल इंडस्ट्री बॉडीज का चेयरमैन हूं, एसोचैम यूपी का भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। तो मैं डायरेक्टर साहब आपको भी मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ इंडस्ट्री केवल आश्वासन नहीं देती है। इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी, इंटर्नशिप बच्चों को कराएगी, इंडस्ट्री बच्चों को अडॉप्ट करेगी, कैंपस प्लेसमेंट करेगी, उनको अपने यहाँ बुला के इंटरव्यू करेगी। तो मुझे लगता है कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जिस तरह से आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसकी जो गूंज है वो पूरे भारत में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर है। तो मैं इंडस्ट्री की तरफ से फाउंडर डायरेक्टर गोस्वामी जी आपको, एडिशनल डायरेक्टर जी आपको आश्वस्त करता हूं कि आप हमें लिस्ट दें बच्चों की, कौन से बच्चे जो इन कोर्सेज को पास आउट कर रहे हैं करंट ईयर में, किनको इंटर्नशिप की जरूरत है, किनको प्लेसमेंट की जरूरत है। तो हम लोग आगे बढ़ के, इंडस्ट्री आगे बढ़ करके यूपीएसआईएफएस को सपोर्ट करेगी प्लेसमेंट में बच्चों के लिए।
markers also? Thank you, ma'am. Good afternoon, namaskar everyone. So, the question is developing India a specific marker is one of the very important question which has been discussed since 2003 when we joined CCMB Hyderabad by Dr. Lalji Singh. It was his aim to develop the Indian specific markers. The reason is because India has very different regions, and each and every region has lot of endogamous population. And when you look to the population diversity, then it is enormous. And if you compare at the global level, just after Africa, India is the second. So, developing a specific marker is very important to formalize the overall Indian scenario. In some cases, for example, like if you let's say amplify the FGX marker, and there you see that in some regions you just find only one allele. So those cases where DNA is highly degraded and even loss of one marker would not be able to solve the entire case. So this is why the problem exists there. And in the cases where DNA is amount is very low, so in those cases Indian specific marker are the real solution where people can implement them and people can use them, so that even a single marker could show the differentiation, and further that can be bolstered with the next generation sequencing. So what I understood is that you are emphasizing on this Make in India project, kind of, right? So we should develop our own marker. That is very well taken. But my point is, then what are the challenges we are facing? Why are we not able to do that? Exactly. The first thing is to develop the database for the forensic. Without database, even the next generation sequencing fails for the forensics, because we don't have such a big amount of database. And for developing the database, for bringing all the forensic scientists at one platform is utmost important. And I think institutes like UP, Uttar Pradesh State Institute of Forensic Science, or NFSU, they could bring the scientists at one platform, and then this can be developed. Because, and second thing is, we need lot of human genome sequences from India. Only now 10,000 sequences are being available by the Department of Biotechnology. So this is the right time to bring everyone at one platform and develop the Indian specific marker. Okay, that means you are saying that infrastructure plays a very important role besides scientific temperament, which we should have to make this. Okay, so next question would be from Dr. Neeraj sir. Actually, sir, we are also, like, as a forensic scientist, we deal with a challenge which is degradation, which is a very common challenge with all the forensic sample. Now, ancient DNA also routinely faces this highly degraded and challenged samples. They may be contaminated. They may be having lot of inhibitors also. So my question is that in your opinion, how can methodologies developed in ancient DNA research can add a new dimension to the forensic DNA? Thanks, Shruti. You mean to say tough samples? Like ancient DNA, it means like tough samples. Tough samples, yes, challenging yes. samples, yeah. Yeah. Usually yeah, as Professor Chaube rightly mentioned that we require a lot of database, and we are lacking behind the ancestry markers and Indian database. So the biggest challenge dealing with ancient DNA or dealing with the tough sample is that we don't have a huge database that we can use for the comparative analysis in terms of ancient samples. Because you know, like that we use STR markers, short tandem repeats markers, and they are like quite big in their size in terms of like their DNA size, and that much of size we can't get with the tough samples. So फोरेंसिक में क्या होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई बोन सैंपल आया, पुराना हड्डी आया,
तो उसका डीएनए एक्सट्रैक्शन करना, उसका जो है प्रोफाइल मैच करना इज द बिगेस्ट चैलेंज इंडिया में, और कभी भी कोई भी लैब इस पे काम नहीं कर रही है। अभी UPSIFS में आप लोगों ने एक डेवलप किया है लैब, वो लैब काफ़ी अच्छी लैब है, मैंने देखा उसको, मैं भी इन्वॉल्व था उस लैब को डेवलप करने में। तो इट्स प्रिविलेज कि आप लोगों के पास इस तरह की लैब की फैसिलिटी है। हमने जो सबसे जो ओल्डेस्ट जो केस सॉल्व किया अभी तक इंडिया में, वो पता है कितना पुराना केस है? 1624 में एक मर्डर हुआ था। 1624 में उस केस को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ एंशिएंट डीएनए। So you received those samples from where actually? वो एक रानी थी, जॉर्जिया की क्वीन थी। Okay. उसका मर्डर हुआ था ईरान में, और उसके जो है बॉडी को जो बरी किया गया था, दफन किया गया था, वो एक चर्च में किया गया था, गोवा के चर्च में। उसमें प्रोफेसर चौबे इन्वॉल्व है उस रिसर्च में, और हमने जो है सबसे ओल्डेस्ट केस सॉल्व किया पूरे वर्ल्ड में। इतना पुराना किसी ने भी एक मर्डर को केमिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया है। तो ये है पावर एंशिएंट डीएनए की। जब हमारे पास एक डेटाबेस हो जाएगा डीएनए का, तो उस डेटाबेस के बेसिस पे हम जो है कितना भी टफ केस हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप किसी इंसान को जला के मारा गया है, और तब भी जलाने के बाद भी दांत या कुछ बोन के फ्रैगमेंट्स बच जाते हैं, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हम उसका जो है सीक्वेंसिंग करके एंड देन डेटाबेस से मैच करा के हम पता कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो किस रीजन का है। अगर यूपी में है तो यूपी में किस रीजन का है, ईस्टर्न यूपी का है, वेस्टर्न यूपी का है। एंड दांत में एक और प्रॉपर्टी होती है कि एक स्टेबल आइसोटोप एक टेक्निक है, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि वो इंसान कहाँ पैदा हुआ और उसकी माइग्रेशन हिस्ट्री क्या रही होगी। अगर एक इंसान का हमें अगर बाल मिल जाए और बाल के हम डिफरेंट सेक्शन काट करके और उसका स्ट्रॉन्शियम आइसोटोप मेजरमेंट करें, तो हम बता सकते हैं कि लास्ट 1 महीने में वो कहाँ कहाँ घुमा है। अगर वो दिल्ली से लेकर के और बनारस में आया है, कहाँ कहाँ कितने कितने दिन रुका है, उतना प्रिसीजन इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। तो फोरेंसिक में जो सबसे बड़ा जो गैप है वो है इंटरडिसिप्लिनरी जो है नॉलेज को ब्रीच करना। आपको इस काम के लिए जियोकेमिस्ट से कोलैबोरेशन करना होगा, आपको जेनेटिक एक्सपर्ट से बात करनी होगी, आपको जियोलॉजिकल एक्सपर्ट से बात करनी होगी, और जब आप एक टीम बनाएंगे तो आप किसी भी तरह के केस को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर, ये मैं इससे बिल्कुल वो करती हूँ, मतलब आई मीन आई एग्री विद द पॉइंट, बट एक फॉरेंसिक डीएनए का जो एक मेजर प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं कि जब आपका बोन बरीड है तब तक तो ठीक है, लेकिन फॉरेंसिक सैंपल यूजुअली ओपन स्पेसेस में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल कंटामिनेशन होता है, लोगों का कंटामिनेशन, माइक्रोबियल, एनिमल कंटामिनेशन, जिसकी वजह से कई तरीके के इनहिबिटर्स भी उसमें होते हैं। जैसे अगर आपका सॉइल है तो ह्यूमिक एसिड है, देन देयर विल बी टैनिक एसिड, इफ देयर इज अ स्पिट सैंपल, और यूजुअली हम लोग को क्लोथ्स मिलते हैं रेप केसेस में, तो जो जीन्स है उसमें जो इंडिगो डाई है, दैट इज वन ऑफ द इनहिबिटर। तो व्हाट आई फील इज समहाउ दैट व्हेन आई वाज डूइंग द cases earlier, we have easily solved some cases which had bone sample, लेकिन टफ सैंपल वो तब हो जाते हैं ज्यादा जब वो किसी कपड़े पे स्टेन है, क्योंकि वो जो केमिकल्स हैं दे आर वेरी हार्श एंड दे आर क्रिएटिंग, सो वी हैव टू हैव सम एडवांस, so suggest some advanced technology which can actually reduce these inhibitors. देखिए श्रुति जी, हम 2026 में हैं और हमें अब इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को नहीं अभी बात करना चाहिए। पर सर हम यहाँ प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अब मैं एक और केस बता रहा हूँ। एक केव था यूरोप में जहाँ पे एक हमारी तरह की प्रजाति थी और 45,000 ईयर्स पहले वहाँ पे रहती थी। साइंटिस्टों ने उसका जो है उसके जहाँ पे उस केव में जहाँ पे वो रहती थी प्रजाति, उसके मिट्टी से उस इंसान का उस जो है स्पीसीज का डीएनए निकाला और प्रूफ किया कि वो जो एक अलग प्रजाति थी। तो हम डीएनए से यहाँ तक बता सकते हैं कि एक कमरे में कितने लोग रहते थे, और अगर किसी क्राइम सीन पे कितने लोग आए हैं, वो आप सेडिमेंट डीएनए से, आप मिट्टी से निकाल सकते हैं उनका डीएनए। और ये कोई टफ केस नहीं है, ये बहुत ईजी है। नहीं सर, आई टोटली एग्री कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, वी हैव एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, तो उससे और काफी सारी ऐसी चीजें, आजकल किट्स भी जो आ रही है मार्केट में वो भी इतनी ज्यादा सेंसिटिव हैं कि बहुत माइनर अमाउंट ऑफ डीएनए भी वो ये कर लेती है। बट प्रॉब्लम हम लोग के साथ सबसे बड़ा पता है क्या है? एडमिसिबिलिटी इन द कोर्ट एंड एक्सप्लेनिंग टू द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड। आपको कोर्ट में जो है एग्जैक्ट आपको एविडेंसेस देने हैं। आपको तीन डायरेक्शन से आप एविडेंसेस देंगे तो केस डेफिनेटली जो है केस में काफ़ी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। आपको एग्जैक्टली प्रूफ नहीं करना है, आप एविडेंस भी बहुत टाइम पे एविडेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
तो इस आगे से आप नीरज को कोर्ट में साथ नहीं नहीं बिल्कुल मैंने वही सोचा। हमने देखिए एंशिएंट डीएनए का इतना इम्प्लीकेशन है कि अभी इस हॉल में जितने लोग भी हैं उनके अंदर जो डीएनए पता है कहाँ है, हड़प्पन डीएनए। हमने 4500 ईयर ओल्ड एक आदमी का डीएनए सीक्वेंस किया और हमने प्रूव किया कि जितने भी इंडियंस हैं उनके हड़प्पन डीएनए कितना होता है, हड़प्पन एंसेस्ट्री। सो देखिए टफ तो केसेज होते हैं बट आपके अंदर विल पावर होना चाहिए और आपके पास ऐसी लैब है तो आप यहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस ले सकते हैं। So that means what I take from this is कि if you have good technology, good lab, scientific approach, and of course, but after all this, we need to validate all these techniques in a way that it can be become admissible in the court. मतलब एक admissible evidence हो जाए जब हम उसको कोर्ट में लेके जाएं, क्योंकि कोर्ट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हमने देखा है वो होता है कि मान लीजिए आपने कहा कि मैं आपका बाल से ये निकाल सकता हूँ और मैंने वो आइसोटोप से मैं बता सकता हूँ कि आप कहाँ गए, तो अब वो बोलेंगे कि आप मुझे बताइए कोर्ट में मुझे बताइए ये कौन से गाइडलाइंस। नहीं कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। हिमाचल में एक मर्डर हुआ, एक बच्ची का रेप हुआ और वहां के पता है 200 लोगों का डीएनए प्रोफाइलिंग किया गया बट मैच नहीं हुआ। वो सैंपल मेरे पास आया, हमने उसकी क्या किया, जेनेटिक एंसेस्ट्री किया उस सैंपल का। वो सैंपल्स का जो जेनेटिक एंसेस्ट्री है वो ईस्टर्न यूपी बिहार कुछ पार्ट ऑफ बंगाल से मैच कर रहा था। तो जो इन्वेस्टिगेशन का जो एंगल था ना पूरा चेंज हो गया कि कोई हिमाचल तो नहीं है, हिमाचल का इंडिविजुअल नहीं है, कोई इंडिविजुअल है जो कि बिहार ईस्टर्न यूपी इस रीजन से है। जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो इस पे हो गया कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट तो नहीं है जहां पे कोई लेबर आया हो और वो पुलिस ने जो है 24 आवर्स में उस केस को सॉल्व कर दिया। तो आप डायरेक्ट एविडेंस नहीं बट इनडायरेक्टली आप काफी कुछ हेल्प कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन में। Yes sir, you want to add something? नीरज actually wanted to tell कि bring non-conventional methods. Conventional method means STRs and all other basic things what the forensic scientists do, but bring something special which is not being regularly used for the forensics. So that is what he is trying to mention कि ancestry को लेकर के आइए और फिर देखिए बहुत सारी चीजें साथ। और श्रुति जी आपको कोर्ट में नहीं प्रूव करना है, आपको पुलिस को हेल्प करना है इन्वेस्टिगेशन में। Yeah, sure sir. Police has also helped in a way when we have to actually ultimately present in the court also all these evidences. But I totally agree that with the advancement of all the technologies which are coming up, although we have to make them little more cost effective, क्योंकि होता क्या है कि जब स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए पे करना होता है then it becomes another challenge. मान लीजिए मुझे आज NGS में एक सैंपल करना है तो it is costing more than 10,000 for a sample. So sometimes all these challenges are there, which are of course petty, but we have to actually take that also in account. Anyways, next question is from Dr. Ajit. Actually, I have heard a case. I was very curious about it. वो है बगल में आपके, चल नहीं रहा नीचे। तो मैं यहाँ पुलिस में भी कुछ लोग होंगे तो मैं एक केस बताकर इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक रेप हुआ, जो एक गैंग रेप हुआ, ठीक है। अब उस गैंग रेप में मान लीजिए जो विक्टिम थी शी गॉट प्रेग्नेंट, ओके, और शी मे बी हाइपर ओव्यूलेटिंग। हाइपर ओव्यूलेशन का मतलब आप समझते हैं कि कोई लेडीज होती हैं जो दो एग रिलीज करती हैं मंथ में मान लीजिए, और उसने एक ट्विन उसके मतलब आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट उसके पास एक उसको ट्विन हुआ एंड बोथ द ट्विन्स आर एक्चुअली from different father. So this I have heard. So this is a case of multiple paternity. So I just want to have a take from the wildlife perspective as well as whether to what extent it is present in human also. You emphasize on that. Hello. Thank you, Dr. Shruti. And a special thanks to my director to provide me opportunity to share the dais with one of my mentors sitting here, Professor Gyaneswar Chaubey sir. So recently we have published one article on this complete genome of multiple origin of this one pig population. So the question is about the multiple paternity. So ये बात है when I work as a researcher in Wildlife Institute of India. So I started work on different species like ghadial, turtle. Then I found some interesting criteria in that population nearby Chambal area where multiple paternity is found in that population. Means that clutch, that
gave birth by that this ghadial, one female, that having the multiple paternal that male clutch size is there. So my thought is कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फीमेल में मल्टीपल मेल के जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है ह्यूमन पॉपुलेशन में? देन आई स्टार्टेड एनालाइज ऑन दिस वन. तो हमने सबने सुना है अबाउट द मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन, जहाँ पे एक फर्टिलाइजर सीधा दो हिस्सों में टूट गया, इट्स आइडेंटिकल ट्विंस. डाइजाइगोटिक में दो डिफरेंट एग दो स्पर्म से फ्यूज हुए, वो डाइजाइगोटिक ट्विंस हो गए. यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है मल्टीपल पैटर्निटी, मीन्स कि एक ही बार में दो एग रिलीज हो रहे हैं और दो स्पर्म से फर्टिलाइज होना, और वो भी डिफरेंट मेल से. तो हाउ इट इज पॉसिबल? सो मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस इज वेरी मीन्स इट्स वेरी कॉमन. Like in African population, it's around 40 birth in 1,000 individual. That is in African. यूरोपियन और अमेरिकन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10 बर्थ 1000 में आता है. ये डाइजाइगोटिक ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विन का कॉन्सेप्ट है. एशियन में लिटिल बिट थोड़ा कम है, जो कि 5 बर्थ अराउंड 1000 पॉपुलेशंस में आता है. लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं कि इसको बोलते हैं मल्टीपल पैटर्निटी को बोलते हैं हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंटेशन. इट मीन्स कि जहाँ पे एक ही बार में दो एग रिलीज हुए and the time duration is very less, 3 days to 9 days, where because of the hyper evoluting female that may be possible, and the analysis is very quite difficult in that case, जहाँ पे हमें SNPs मार्कर, ऑटोसोमल मार्कर के साथ में Y टाइपिंग अगर मेल है तो Y क्रोमोसोम टाइपिंग भी करना है और SNPs भी करना है. इट्स नॉट अबाउट द सिंगल फादर मॉडल, इट्स नॉट वर्क इन दैट केस. We have to analyze both twin to detect whether it's belong to the same male or it's a different male. So interpretation is also a little bit typical in this case. So it's very quite interesting phenomena in not only in the animal but also in the human population. So that means you are indicating to a point that कि ये एक आई ओपनर है जितने भी यहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट बैठे हैं, कि मान लीजिए हम लोग जानते हैं ये चीज कि ट्विंस हैं तो वो एक ही फादर के होंगे. कई बार ऐसा हो सकता है कि हम पैटर्निटी टेस्टिंग कर रहे हैं और वो दो फादर के निकले. सॉरी, आई एम लिटिल बिट अंडर द वेदर, बट एनीवेज एक और मिथ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसपे मैं बहुत क्यूरियस हूँ, और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे मोस्ट ऑफ द मेल्स क्यूरियस होंगे. आप लोगों ने कुछ मेल्स ने ये पढ़ा है इंटरनेट पे या फिर न्यूज़पेपर में कि वाई क्रोमोसोम श्रिंक हो रहा है. पढ़ा है आप लोगों ने? तो ये वाई क्रोमोसोम का जो श्रिंकिंग है या फिर कह रहे कि डिलीशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या मेल बिल्कुल गायब हो जाएंगे ऐसा आने वाले जनरेशन में? ऐसा काफी सारा क्लेम मीडिया कई बार करती है. हालांकि पुराना कॉन्सेप्ट है पर मैं कई बार सुन रही हूँ. बट मेरा ये आपका पर्सपेक्टिव जानना है कि क्या इससे वाई क्रोमोसोमल एनालिसिस पे कोई फर्क पड़ रहा है? आप दोनों के लिए है ये क्वेश्चन. हु वांट्स टू आंसर? हम शुरू करें. Yes, each and every male has to worry about it. पर रियलिटी क्या है कि मेल्स की अभी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है. For the Y chromosome, nearly 20-25 years ago, there was a paper. There they say because of no recombination in the major part of the Y chromosome का साइज 60 MB होता है और nearly 57 MB जो है वो that do not recombine. तो this is why they say कि slowly Y chromosome जो है evolution के सेंस में निकल जाएगा. If we take their own rate, what they have done in that paper, तो उसके लिए कम से कम 152 billions of years लगेंगे पूरा Y क्रोमोसोम उस रेट पे खत्म होने के. लेकिन वो भी एक मिथ है, तो इसलिए आप चैन की सांस लीजिए. और दूसरी चीज ये है कि Y क्रोमोसोम has several duplications, then several palindromes.
इसके वजह से रिकॉम्बिनेशन न होने के बाद भी वाई क्रोमोसोम बचा रहेगा। नीरज सर, मैं बस एक लड़के खुश हो गए, देखिए क्लैप कर रहे हैं, आप भी अपना टेक दे दीजिए। एक पॉइंट ऐड करूंगा कि जो वाई क्रोमोसोम का 2 से 3% पार्ट ही जो काम का होता है, बाकी वो बेकार का होता है 98%। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं NRY, नॉन रिकॉम्बिनेशन रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो 2% में हमारा काम चल जाएगा। इन्होंने बोला 150 मिलियन ईयर्स, तो 150 मिलियन ईयर्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये भी इन्होंने एक मिथ जोड़ दिया कि 2% ही काम का है, बहुत सारा परसेंटेज काम का है, चिंता मत करिए। नहीं, फोरेंसिक साइंटिस्ट के लिए तो है सारा काम का, बट नेक्स्ट जनरेशन के लिए जस्ट 2% ही काफी होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो वाई क्रोमोसोम होता है फादर से सन में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मदर से सारे बच्चों में जाता है, बट जो मेल होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को पास नहीं कर पाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो मेल के साथ ही खत्म हो जाता है। So that means lineage markers are very important and of course. Okay, sir, actually I think Gyan sir wants to ask a question to the other speakers. So if you permit, then. मेरा एक क्वेश्चन आप तीनों लोगों से, ऑडियंस से भी है, बाद में आप लोग बताइएगा। अगर आपको एक पर्सन का प्रोफाइल करना हो तो आप किसका प्रोफाइल करेंगे? एक आदमी का मौका मिल रहा आपको प्रोफाइल करने का। एक आदमी का अगर मुझे प्रोफाइल करना, डीएनए प्रोफाइल, तो पहले तो मैं अपना ही करना चाहूंगा कि अपना ही प्रोफाइल में करना। ठीक, बस एक ही करना। अब आप बताइए। एक आदमी का करना है। हाँ, एक आदमी का करने का मौका है आपके पास, किसका करेंगे आप? नहीं, औरत भी हो सकता है सर, इंसान है। आप लोगों में से सर मैं उसका प्रोफाइल करना चाहूंगा जिसका मुझे पता है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन वो जीनोलॉजी में वो पास नहीं किया अपना डीएनए, मैं उसका करना चाहूंगा। सर एक बात के लिए तो मैं श्योर हूँ कि मैं अपना नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि एक ऐसा डेटा है जो आजकल रखना शायद उतना पर मैंने एक कर लिया है। मैंने जो फर्स्ट यहाँ पे प्रोफाइलिंग की हमारे डायरेक्टर साहब का किया है, अब आगे उससे उद्घाटन करके उनका उद्घाटन कर लिया है मैंने अपने डीएनए लैब का, उनके प्रोफाइलिंग करके आगे फिर करेंगे सभी का। हाँ सर, आप बताइए। मैं ट्रंप का प्रोफाइल करना चाहता हूँ। लॉजिक भी बता दूं उसके पीछे, क्योंकि ही इज द बेस्ट पर्सन जिसको कि हम जितनी भी ह्यूमन के आइडियोलॉजी को लेकर के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जहाँ की आप जो है जितने बिहेवियरल मार्कर्स को डिस्कवर कर सकते हैं, तो वो केवल वही है, उसी के अंदर आप कर सकते हैं। So I had few more questions, but they are saying we have a popular thing over here. ये देखिए सर, हमने डिजाइन करी है, 5 मिनट्स की स्लिप है जो मुझे आ चुकी है, तो मेरे पास अब टाइम की कमी हो गई है कि हाँ 5 मिनट्स ओवर भी हो गया है। ओके, तो ये हमारे UPSIFS का ट्रेडमार्क है। और at the end what I would say that myth of certainty does not diminish the value of the DNA fingerprinting analysis. Rather, it reminds us that responsible science requires transparency about limitation, careful interpretation, and clear communication, especially when stakes involve human liberty, justice, and public trust. So today, our aim was not to criticize the technology, but to find out some of the limitations and how we can deal with it with the new technologies. So thank you. The panelists actually guided us with many of the technologies and we were entertained. I think all of us got entertained. Thank you, sir. Thank you very much. The floor is now open for questions. Any questions? Questions? बच्चे पूछिए आप लोग कुछ.
So the human mindset is largely about knowledge, right? And when there's ज्ञान है, जब ज्ञान नहीं है, अज्ञान fear आता है, right? Fear based आता है. जो भी आप लोगों ने जो share किया है, right? As a lay person who doesn't understand much of this, it clearly tells me one thing, that criminal अभी बच के भाग नहीं सकता. जैसे आपने अभी एक example दिया, right? कि उसमें West Bengal का एक कुछ मिला यहाँ, if there are so many number of people inside a room, you can literally find out, which are the people or who are the type of people who would be there. Just like we are taking AI and technology to schools, 8, 9, 10th, 11, 12, जहाँ पे brain develop होता है, उसी region में हमारा develop होता है, उसी region में हम fear psychosis भी बनाते हैं, right? या erode करते हैं, right? जो भी आप कह लीजिए. ये जो आपने बनाया, इसका snippets as a chapter or 2, ये आज की तारीख में हम इंडिया में schools में लेके जा रहे हैं या नहीं? हम में से कोई भी पॉलिसी मेकिंग में नहीं है सर. तो हम इससे बेहतर जवाब जो है वो गोस्वामी सर दे सकते हैं. क्योंकि मेरा सजेशन से ये है कि ये चीजें ना 8, 9, 10th, 11, 12th के स्टूडेंट्स को वाया चैप्टर्स अगर बताया जाए कि सी यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर अ गुड मॉरल सिटीजन ऑफ द कंट्री. क्योंकि अगर आप कुछ भी करो तो you have a मतलब there is technology available that can catch hold of you in the future. Just like what we do in the AI side. I think it is a very good suggestion what he suggests, and as Professor Chaube sir has said that he is not in the field of policy making, but these days these social media platforms are very strong, and what I suggest immediate solution maybe, which is very easy also, that we can have some kind of interaction, maybe a chat or a kind of social media platform can be used, maybe our own institute or something, where 4, 5 or whatever lectures you suggest, we can record them and we can place them so that anybody can see those type of things. Definitely these knowledge, what exactly you said, probably even I was not aware many of them despite being in this field since long. So the knowledge is scattered these days, and it is our duty actually to bring them to the right forum. So we can think over that. Sure. And I request our Professor Shruti to take over this, and we can have some podcast or something like that. And so one more idea is, which usually most of the national institutions are doing, keeping open days, right? तो ओपन डेज में क्या होता है कि बच्चे आते हैं, वो देखते हैं, आपकी लैब्स देखते हैं और सारे एडवांसमेंट देखते हैं और उनको टॉक्स दिए जाते हैं. तो इस तरीके का कुछ हम लोग कर सकते हैं. इसके अलावा भी मैम, जैसे नीरज है, मैं हूं, हम लोग आउटरीच एक्टिविटीज करते हैं. वी गो टू द स्कूल्स एंड टेल टू द स्टूडेंट्स व्हाट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. बट ये जो है क्यूरिकुलम में आना चाहिए. दिस इज द मेजर पॉइंट. आई थिंक थोड़ा एनसीईआरटी में आया है. सर का जो क्वेश्चन था वो ये था कि एनसीईआरटी में है वैसे, आई थिंक 12th के उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक चैप्टर है. इसके साथ में इंटर इंस्टीट्यूट जो हम लोग कोलैबोरेशन करके एक साथ में सर के साथ में कहा कि आउटरीच एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल कोलैबोरेट तो करेंगे. विद कोलैबोरेशन वी कैन डू दैट. ओके, थैंक यू. So moving ahead, thank you for such an engaging and insightful session. I now request Deputy Director Administration Jitendra Srivastava sir to kindly felicitate our moderator and panelists with mementos. Thank you, sir. In today's rapidly advancing digital era, law and technology must evolve together.
Keeping this in mind, we now step into an important discussion on interface of law and technology in the era of AI and crime as a service. It is a matter of immense pride and honor to welcome Dr. G.K. Goswami, sir, IPS, founding director of Uttar Pradesh State Institute of Forensic Science, Lucknow. Sir has served with distinction in Indian Police Service and rose to the rank of Additional Director General of Police. A Fulbright Fellow and an accomplished scholar, he holds multiple advanced degrees including PhD, DSc and LLD, and continues to inspire through visionary leadership in forensic science and police reforms. I now request sir to kindly address the gathering. Hello. गुड आफ्टरनून वंस अगेन। क्योंकि हमारे कुछ साथी यहाँ जो बैठे हुए हैं पुलिस से हैं, तो मैं इसलिए इस सेशन में हिंदी का ही प्रयोग करूँगा ताकि सब लोग उसको बेहतर ढंग से समझ सकें। और बाकी लोग भी जो हैं यहाँ, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, उनको भी मैं समझता हूँ हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जो आज का विषय है और अभी तक के जो भी चर्चाएं हुई हैं, डेलिब्रेशंस हुए हैं, निश्चित रूप से उससे सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। जैसा कि अभी डीएनए वाले सेशन में बहुत सारी चीज़ें हम सभी ने ऐसी सुनी जो शायद हमें पहले जानकारी नहीं थी। जो तकनीकी का समय है आज के डेट में, मैंने सुबह भी जो मेरा उद्बोधन था सुबह के समय में भी, उसमें भी मैंने इस बात को इंगित किया था कि जो तकनीकी है जिस तेजी के साथ वो बढ़ रही है, जिस गति के साथ उसका उत्थान या डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो वो सार्थक भी होगी, विकास भी करेगी, लेकिन साथ साथ वो विनाश भी कर सकती है। और अभी हमने ये देखा जो पिछले 2025 के अंदर कई देशों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, उनमें हमने देखा कि अब जो आर्मी, जो हमारी पहले जो वारफेयर होते थे, युद्ध होते थे, उनका स्वरूप पूरी तरीके से तकनीकी में बदल गया है। तो तकनीकी अब ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हम बच सकते हैं। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मोबाइल फोन का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग ना करता हो। और जैसे ही हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, हम पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आज के समय में सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है? हमारी डेटा है। मैं इस उदाहरण को बार बार बोलता हूं कि कोई भी अगर व्यक्ति है, मान लिया मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, हमारा कोई 15-20 हजार रुपए का मोबाइल फोन है जिसमें हमारा डेटा है, परिवार के फोटो हैं, हमारी कुछ और मैटर्स हैं, हमारे मोबाइल फोन के नंबर हैं, बहुत सारी हमारी कुछ और ऐसी मेमोरीज हैं, वो डेटा उस मोबाइल के पास साथ में है। और हमारा 1 लाख रुपया है जो एक बैग में था और वो खो गया या किसी ने चुरा लिया। और अगर मान लिया वो चोर वो आपको ये ऑफर दे कि भाई या तो आप अपना डेटा के साथ मोबाइल ले लो और या 1 लाख रुपया ले लो, तो मैं समझता हूं कि हम में से सभी लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल डेटा के साथ लेना पसंद करेंगे। ये बात है या नहीं है? इनमें कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं ये थोड़ा पीछे बात कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये बार बार आपसे कहा भी जाता है कि ये एक डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी होती है, जो भी कॉन्फ्रेंस है या कोई भी जो भी यहाँ पे आए हैं, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, वो अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल करके अपनी सारे ज्ञान को आपको देने के लिए आते हैं। तो अगर हम उसको ठीक ढंग से, सही मनोयोग से, अपने इच्छा शक्ति के साथ अगर उसे ग्रहण नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो यहाँ बोलने वाला है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता है या वो कुछ नहीं खोता है, लेकिन हम खोते हैं क्योंकि हमने उस चीज़ को नहीं पाया जिसके पाने के लिए हम यहाँ आए थे। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फैकल्टीज हैं, कि आप अपने जो भी हैं उनको नोट्स बनाइए। जो भी लोग यहाँ आए हैं वो आपको बार बार नहीं मिलेंगे। जितनी सरलता के साथ यहाँ के जो स्पीकर जो बाहर से आए हुए हैं, वो जितनी सरलता से आपको यहाँ मिल जाएंगे, वो अगर बाहर जाएंगे तो उनसे संपर्क करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, किसी के लिए भी। तो ऐसे जो ये आयोजन होते हैं इस प्रकार के, उनका पूरी तरीके से आप सदुपयोग उठाइए, उसका लाभ उठाइए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो तकनीकी है उसका प्रयोग अब ऐसा नहीं है कि जो हमारी हाथ में है, वो जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। अब हमें कैसे उसके साथ जीना है ये देखना है। सुबह के समय एक बात बहुत अच्छी कही गई कि जो लड़ाई है
वो एआई के साथ नहीं है, लेकिन लड़ाई किसके साथ है? उस आदमी के साथ है जो आदमी के साथ एआई जुड़ा हुआ है। तो एआई ने आदमी को पावरफुल कर दिया। अगर हम कमजोर होंगे तो फिर हम हर क्षेत्र में हार जाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल क्षेत्र हो, हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, पुलिसिंग का क्षेत्र हो। तो अब हमें एआई को एक सहयोगी के रूप में, एड के रूप में, अपने हेल्प के रूप में अपने आप को उसके साथ तालमेल बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुबह से बहुत सारे जो हमारे जहन में बहुत सारे मिथ थे, बहुत सारी शंकाएं थी, वो दूर हुई होंगी। मैं जो ये कहना चाहता हूं, खास करके चूंकि हमारे बहुत सारे पुलिस के साथी बैठे हुए हैं, जो आने वाला समय है उसमें साइबर क्राइम बहुत बड़े परिवर्तित रूप में आने वाला है, आ चुका है ऑलमोस्ट। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी नौकरी 20 साल की, 25 साल की होगी, 30 साल की नौकरी वाले भी होंगे आप में से बहुत से। उस समय कभी सोच नहीं सकते थे कि ये कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज हो सकती है। अरेस्ट तो केवल पुलिस करती थी, लेकिन अब सोचिए कि आप पुलिस नहीं है, क्रिमिनल अरेस्ट कर रही है। ये कैसा चक्र चल गया है कि क्रिमिनल लोगों को और ऐसे पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों को ऐसे भी इंस्टांस मिले हैं कि बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी जो सर्विस में थे वो भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए, बाकी सामान्य व्यक्ति का छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्राइम है जो बहुत ज्यादा रिपोर्ट भी नहीं होते, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सटॉर्शन। ऐसे लोग जो धनाढ्य हैं, जो 50-55 या उससे ज्यादा उम्र के हैं, उनको महिला बन करके या कोई भी ऐसा रूप बदल करके, आप जानते हैं कि आजकल डीप फेक है, बहुत सारी ऐसी आवाज है, बहुत सारे चित्र हैं, फोटोग्राफ हैं, ऐसे बन करके और उनको फंसा लिया जाल में और उसके बाद उनसे फिर पैसे का दोहन शुरू हुआ। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो आज के समय में जो डेटा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सभी लोग अपने डेटा के प्रति बहुत लापरवाह हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, डेटा बहुत कॉस्ट है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेशियस चीज है हमारे लिए, बहुमूल्य चीज है तो वो डेटा है, लेकिन डेटा देने में हम कितने लापरवाह हैं। हम अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर चीज में बिना किसी बात को देखे हुए हम उन्हें फ्रेंड बना लेते हैं, और जैसे ही वो फ्रेंड बनता है वो तुरंत हमारा क्या होता है, वो हमारे सारे डेटा को एक्सेस करने के लिए वो अधिकृत हो जाता है। बहुत सारा डेटा हम अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, आजकल और बहुत सारे एक्स प्लेटफॉर्म में और हैं, उन पे हम अपने चित्र लगा देते हैं, अपनी सारी कहानियां लिख देते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, यहाँ आए, हमने ये खाया, हम इस होटल में गए। ये किसके लिए कर रहे हैं हम? इससे किसको लाभ मिल रहा है? इससे आप अपने आप को पूरे के पूरे दुनिया में उजागर कर रहे हो, उसका कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, खास करके पहले तो पुलिस वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, चूंकि हम पुलिस वाले समाज के संरक्षक हैं एक तरीके से, क्राइम के लिए खास करके। अगर हम ही लापरवाह होंगे, हम ही अज्ञान होंगे, तो फिर हम कैसे दूसरों को बात जानकारी देंगे, कैसे उनको अवेयर करेंगे? तो सबसे पहले जरूरी है हमें साइबर क्राइम के बारे में जानकारी करना। जो अब का समय है, जिसका ये टॉपिक है, वो है कि तकनीकी और कानून का जो संगम है, उसका जमाना है आज की डेट में। जो नए कानून आए हैं उसमें केवल 176 सेक्शन ही नहीं है, 176(3) जिससे फोरेंसिक लागू होती है, बाकी की भी चीजें देखिए कितना तकनीकी का प्रयोग बढ़ा है। आप आज के समय में कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप अपना साक्ष्य दे सकते हैं। जितने भी आप ICJS आ गया है, आपकी सारी की सारी FIR सारी किस पे हो रही है? आपकी ऑनलाइन हो रही है। तो कितना प्रयोग बढ़ गया है, आप देखिए टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग पुलिस के द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार से सारे समाज में उसका हो गया है। तो अगर हम इसको कैसे कंट्रोल करें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी नई तकनीकी आ रही है, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग, सोचिए क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे दरवाजे पे बिल्कुल ठक 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 आपको जगाने की कोशिश कर रही है। जिस दिन क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएंगी, ये सारे कंप्यूटर, सारी चीजें अलग हट जाएंगी। जो नया सिस्टम आएगा वो इतना फास्ट होगा कि हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी कहा जाता है कि जो एक कठोर या कठिन जो पासवर्ड है उसको क्रैक करने में हजारों हजार साल लगते हैं कई बार। जो हजारों साल में काम होने वाला था आज के AI से या जो भी है,
उसे वो कितनी देर में कर देगा? क्वांटम कंप्यूटिंग सेकंडों में कर देगा, मिनटों में कर देगा। आप ये सोचिए इतनी गति से चीजें आएंगी। और उसी क्वांटम कंप्यूटिंग को मैं ये छात्रों के लिए भी कहना चाह रहा हूं। मैंने सुबह भी अभी जो हमारा जो इनॉग्रल सेशन था उसमें भी मैंने बात रखी थी कि जल्दी ही हम अपनी इस संस्थान में क्वांटम कंप्यूटिंग की लैब स्थापित करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि जब अगली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो हम उनके कर कमलों से उसका उद्घाटन कराएं। मेरा ये पूरा प्रयास होगा। तो ये संस्थान नई नई तकनीकों को लाने में, उनको आपके सामने प्रस्तुत करने में, आपको उसमें एक्सपर्ट बनाने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन जरूरत यह है कि जो हमने यहाँ लैब विद लैब्स का कंसेप्ट लाए, ये हमने 2023 में जब शुरू किया था तो ईमानदारी से मुझे भी ये एहसास नहीं था कि इसका इतना प्रयोग होगा। लेकिन आज के समय में जो डेटा प्रोटेक्शन के जो कानून आए हैं, ये पुलिस वाले भी समझे इस बात को। 90% क्या 100% पुलिस वालों को ये पता नहीं होगा कि डीपीडीपी एक्ट का मतलब क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। और ये एक्ट 14 मई 2027 से लागू होने वाला है। जब ये लागू होगा, आप सोचिए कि कितना सारा जो क्राइम है, कितने नए नए तरीके के क्राइम तुरंत आ जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कैसे आप इसको समझेंगे। मान लिया आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास तकनीकी है, आपके पास अनुभव है, सब कुछ है, ठीक है, सारे सोर्स हैं। आपने एक होटल बनाना है, होटल बना के खड़ा कर दिया आपने। अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है किसी भी बिजनेसमैन को, नए को, कि वो क्लाइंट कहां से लाए। तो क्लाइंट लाने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? कई बार ये गलत प्रयोग भी है और इसमें अपराध भी है जिसको आपको डील करना है। कि क्या करेंगे कि आप आज की डेट में मान लिया कोई होटल है जो सबसे बड़ा होटल है उसका, तो आप उसे वहां का जो एम्प्लॉय है उसको कुछ पैसा दे करके और उससे डेटा ले लेंगे, और या आप वहां का डेटा को हैक करा लेंगे और जो पुराना होटल है उसे पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा का पूरा बिजनेस दूसरे के हाथ में चला जाएगा। आने वाला समय यह है कि जिसके पास डेटा की मजबूती नहीं होगी, सिक्योरिटी जिसकी नहीं होगी, वो किसी भी हालत में कहीं पे भी नहीं टिक पाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, आपका मोबाइल फोन हो। अक्सर मैं कहता हूं कि आज के समय में जो क्राइम है अब वो ई क्राइम में बदल गया है। जैसे जो डिजिटल अरेस्ट जो मैंने कहा वो ई रॉबरी है, इलेक्ट्रॉनिक रॉबरी। जिस प्रकार से रॉबरी में आदमी को डराया जाता था और पैसा हड़प लिया जाता था, छीन लिया जाता था, वही आज डिजिटल अरेस्ट में है। तो अगर आपको ई मर्डर करना है किसी का, तो ये अब किसी को ये हत्या के लिए कोई आपको वो खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई आदमी हायर करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट किलर लाने के लिए। अब आप एक कहीं मान लिया वो आदमी किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ऑपरेशन तय है कि अगले दिन 5 बजे होना है। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ब्रीच करके, साइबर सिक्योरिटी, अगर आपने उसका ब्लड ग्रुप चेंज कर दिया, मान लिया ए पॉजिटिव से ए नेगेटिव, और जब उसका ऑपरेशन शुरू होगा और ब्लड चढ़ाया जाएगा तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। तो अब इस तरीके के क्राइम आएंगे जो कभी कल्पना से परे थे। इसी तरीके से जो साइबर क्राइम एज ए सर्विस, एजेंटिक क्रिमिनल्स आ चुके हैं। तो जो समय है इसको कंट्रोल करने का जो तरीका है वो है, अब इस बात को मेरी बार बार समझिए, आज का जो समय है या आने वाला जो भविष्य है, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे किसी भी व्यापार का हो, वो होगा लीगली कंप्लायंट साइबर सिक्योरिटी, लीगली कंप्लायंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब केवल वो प्रोडक्ट या वो चीजें प्लेटफॉर्म पे डाली जाएंगी। आप याद रखिए इस बात को कि आने वाले टाइम में जैसे हम ISO कहते थे, जैसे हम ISI मार्का कहते थे, वैसे ही हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखा होगा? लीगली कंप्लायंट प्रोडक्ट। ये आने वाला भविष्य है। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, एंड द स्टूडेंट्स हियर दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू the law with labs concept for that only. You have to understand the nuances of that. You are lucky that you are the probably only student across not only in India but globe. I am telling you with my authority that this is the only institution which has this vision to integrate law and technology in real sense. Otherwise, people are, those who are from the legal side, they are completely unaware about the technology, and technology people are completely unaware of. So they are in silos. So you have to take the advantage of this, and now this is the time, this is the era of integration. And with this I conclude my talk.
with the good wishes, and you should learn what our esteemed speakers are speaking in the next sessions as well. Thank you very much. Thank you, sir, for your guidance and leadership. I request IG Mr. Rajiv Malhotra, sir, to kindly felicitate Director, sir, with a memento. As science continue to decode human identity and ancestry, genomic is redefining forensic investigation. With this evolving understanding, we now proceed to our next session, genomic ancestry and forensics. It is my great honor to introduce Professor Gyaneshwar Chaube, sir, professor at Banaras Hindu University. He completed his PhD in molecular biology from University of Tartu, Estonia, and has made remarkable contributions to genomics and evolutionary genetics through extensive international research collaboration. Sir, I now request you to kindly address the gathering. Namaskar, good afternoon everyone. So how is the जोश? बहुत बढ़िया. असल में गोस्वामी सर ने इतना बड़ा जो है ये प्लेटफॉर्म बनवा दिया है कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ खड़े होके बोले. तो ये मेरा टॉक जो है वो आपको एक तरीके से एक नॉन कन्वेंशनल मेथड के बारे में बताएगा जो कि जनरली फोरेंसिक में यूज नहीं होता, बट चूंकि आप लोग इमर्जिंग और बडिंग साइंटिस्ट हैं तो अगले 5 सालों में ये फोरेंसिक में बहुत रेगुलरली यूज में आ जाएगा. तो कोशिश करेंगे हम आपको समझाने का कि ये किस तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर रहा है इस फील्ड को. लगभग 20 साल 21 साल पहले 2 वैज्ञानिक थे अमेरिका के, मार्क श्राइवर और टोनी. मार्क श्राइवर अभी भी एक्टिव हैं, काफी अच्छा काम करते हैं. पिगमेंटेशन पे भी उनका बहुत अच्छा काम था. उन लोगों ने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर. एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर का मतलब है कि हमारे जीनोम में कुछ वो पार्ट जो हमारे इवन कास्ट तक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें. ये सबसे लोअर बात मैं बोला, लेकिन हमारे रीजन के बारे में, हमारे कंट्री के बारे में, या वो प्लेस जहां हम पैदा हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है क्या, या कुछ ऐसा मार्कर जो हमारे फिनोटाइप के बारे में बता दे. फिनोटाइप का मतलब कि क्या कोई दूध पचा सकता है कि नहीं पचा सकता, ये भी हमारे डीएनए में इनकोडेड होता है. अगर किसी व्यक्ति को मार करके जो है वो दफना दिया जाए और उसके कुछ बोन्स मिले, उसको एनालाइज करके बताया जा सकता है कि वो व्यक्ति का जो स्किन कलर है वो डार्कर है कि लाइटर है. तो ये सारी चीजें जो है एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर में आती है. तो उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया. उस समय ये बड़ा रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था. लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया और बहुत सारे मार्कर्स को लोगों ने डिस्कवर किया. अब सबसे पहले लोगों का ध्यान गया वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पे. जैसा डॉक्टर नीरज राय अभी बताए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो मदर के थ्रू पास होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आते ही पावर हाउस की बात आती है हमारे दिमाग में. वो सेल का ऑर्गेनेल जिसके थ्रू ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा जो हमको हमारे पास मदर से ही आती है उसको फादर नहीं ट्रांसमिट कर सकता है. और 5,000 सालों से भारत में माता की पूजा होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया तो अभी खोजा गया. तो अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बेसिस पे जब लोगों ने अलग अलग कंटिनेंट और सब कंटिनेंट की पॉपुलेशन को एनालाइज किया तो उनके समझ में आया कि हर एक रीजन की एक अलग टाइप की एंसेस्ट्री है. हर एक रीजन में
एक बड़ा स्पेसिफिक टाइप का जो है कलर पाया जाता है। एक कलर जो है वो एक हेप्लो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वाई क्रोमोसोम का भी वैसा ही सिचुएशन है। हर जगह आपको कुछ कुछ जो पैलेट्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक हैं, क्योंकि हर एक रीजन का अपना अलग तरीके का वाई क्रोमोसोम या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। तो इसका उपयोग जो है क्या हम एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कुछ साल पहले 2022 में जब अजनाला वाला काम हुआ था, डॉक्टर नीरज राय का जो काम था, उसमें उन लोगों ने यही मेथोडोलॉजी को यूज किया था। अब नॉन बायोलॉजिस्ट लोगों के लिए कि बायोलॉजी है क्या, क्या जेनेटिक साइंटिस्ट लोग क्या चीज देखते हैं, तो हर एक व्यक्ति जो है वो नियरली 37.2 ट्रिलियन सेल्स का बना होता है, और हर एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। आप रॉबर्ट हुक के बारे में सुने होंगे, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए बॉडी। बट यहाँ जो है दो ही चीजें बड़ी स्पेसिफिक या इंपॉर्टेंट होती हैं। उन्हीं दो चीजों को जेनेटिसिस्ट लोग या फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट लोग स्टडी करते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो 2 to 100 हर एक सेल में पाया जाता है, मल्टीपल कॉपीज में पाया जाता है, और दूसरा न्यूक्लियस जो कि हमारे सेंटर में पाया जाता है। अब इसके अंदर न्यूक्लियर डीएनए जो है उसके अंदर 1 to 22 ऑटोजोम्स पाए जाते हैं, जो आधे माता से आते हैं आधे पिता से आते हैं। उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए कि वो मदर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और एक बड़ा स्पेशल वाई क्रोमोसोम, अभी उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। तो वाई क्रोमोसोम जो है वो भारत के लिए बड़ा स्पेसिफिक है, इसलिए क्योंकि ये हमारे गोत्र के साथ कनेक्टेड होता है। बहुत सारे लोगों का गोत्र अगर आप स्टडी करेंगे तो उसका और वाई क्रोमोसोम का एक बड़ा जो है कंकॉर्डेंस मिलता है। अब देखिए 4 ही लेटर्स हैं, जैसा कि सारे बायोलॉजिस्ट जानते हैं कि ए, जी, सी और टी, ये चारों लेटर्स ही लोग स्टडी करते हैं। इन चारों लेटर्स को स्टडी करके उसके बेसिस पे हर एक व्यक्ति के बारे में हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन चारों लेटर का सीक्वेंस हर एक इंडिविजुअल का अपना यूनिक होता है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें शेयर्ड होती है। तो हम लोग शेयर्ड और यूनिक एंसेस्ट्री की बात करेंगे। अब अगर हम पेडिग्री की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी करेंगे तो हम अपने मैटरनल साइड में, जो नानी जिसको कहते हैं, उस साइड के बारे में हम पीछे कई सारे जनरेशन्स के बारे में बता सकते हैं, लेकिन केवल एक सिंगल इंडिविजुअल की एंसेस्ट्री यहाँ पता लगेगी। दूसरा, अगर वाई क्रोमोसोम को स्टडी करें तो अपने फादर साइड में जितने भी ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ग्रे कलर वाले लोग हैं, इनके बारे में हम कैसे जानेंगे? तो इनको जानने के लिए हमको ऑटोजोम्स को स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक कैवियट ये है कि ये ऑटोजोम्स हर जनरेशन में 50% इसका रिडक्शन हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे कंप्यूटेशनल मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल ये 3 मार्कर सिस्टम जो है वो बायोलॉजी में बहुत कॉमन है, जिसको लोग यूज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की एंसेस्ट्री बनाने में। अब अगर हम फोरेंसिक इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, और वो इंस्टीट्यूट जो जनरली जो है जिसको जो पुलिस के द्वारा गवर्न होता है या जिसके द्वारा पुलिस गवर्न होती है, तो वहां अगर हम पूछें कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो सबके अपने अलग अलग आंसर्स होंगे, लेकिन बायोलॉजी में हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो होता है पैथोजेन। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, ये जितने भी होते हैं ये हमारे बहुत बड़े जो है दुश्मन हैं। इनके वजह से जो ह्यूमैनिटी है इसमें बहुत सारे सिलेक्शन हुए, क्योंकि आज से 50,000 साल पहले जो है हमारे पास न ही एंटीबायोटिक्स था, न ही हमारे पास कोई एंटीवायरल था, या न ही हमारे पास कोई वैक्सीन थी। तो उस समय जब भी महामारियां फैलती थी तो वही लोग जिनका जीनोम एक पर्टिकुलर टाइप का बना हुआ है वही लोग सरवाइव करते थे, रिमेनिंग रोग इलिमिनेट हो जाते थे। तो इस वजह से अगर आज आप यहाँ बैठ करके ये पढ़ रहे हैं तो इसके लिए थैंक्स टू योर एंसेस्टर्स कि जिन्होंने एक बड़े लंबे समय टाइम पीरियड में बहुत सारे पैथोजन से लड़ाई करते हुए फाइनली जो है आप यहाँ पहुंचे हैं।
आप लोग जिंगीज खान के बारे में जरूर सुने होंगे। जिंगीज खान जो कि एक मंगोलियन इन्वेडर्स था। यूरोप में ये जो है खलनायक की तरह इसको देखा जाता है, लेकिन मंगोलिया में ये एक बहुत बड़ा जो है वो लोगों के लिए एक फादर फिगर की तरह है, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिसने कि पूरे मंगोलिया को यूनाइट किया। तो एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर्स में जिंगीज खान की क्या जरूरत है? तो एक बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के डेट में लगभग 1.6 करोड़ लोग, 16 मिलियन लोग जिंगीज खान के डिसेंडेंट हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का वाई क्रोमोसोम आप एनालाइज करते हैं और अगर वो जिंगीज खान टाइप का वाई क्रोमोसोम मैच करता है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि वो सेंट्रल एशिया या ग्रेटर चाइना की पार्ट से आया होगा। क्यों? क्योंकि जिंगीज खान का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जिंगीज खान का जो एरिया था जहां उसने राज्य किया, वो रीजन जो है वो वहीं ये पूरा सेंट्रल एशियन रीजन था। तो स्टोरी है जिंगीज खान का, इसको आप लोग कभी पढ़िएगा। लेकिन मंगोल अंपायर आप देखिए, जिंगीज खान का जो रीजन था वो ये था, और उसके फिर बच्चों ने इस रीजन पे जो है वो राज्य किया। लेकिन इसकी मोडस ऑपरेंडी बड़ी यूनिक थी। जनरली जब दो सेनाएं लड़ती हैं तो जो जिसकी सेना हार गई उसके पूरे भूभाग पे दूसरी सेना का जो है वो आधिपत्य हो जाता है। लेकिन जिंगीज खान के केस में ये सेनाओं को भी हराता था। उसके बाद गांव-गांव जा करके लोगों को घर के बाहर निकाल करके मेल्स की जो है वो गर्दन काट दी जाती थी और फीमेल्स के साथ रेप किया जाता था, और जिसके कारण एक सिंगल इंडिविजुअल का डीएनए जो है लगभग 16 करोड़ लोगों के अंदर प्रेजेंट है। इसका एनालिसिस 2003 में क्रिस्टलर स्मिथ की लैब में हुआ था, जहां उन्होंने वाई क्रोमोसोम के YSTR के पैटर्न के बेसिस पे जो है वो बताया था कि एक स्टार क्लस्टर मिला जो कि नियरली 1000 ईयर्स ओल्डर था, और जो जिंगीज खान की एक्टिविटीज के साथ और एक बहुत बड़े एरिया में फैला था। जनरली जो फाउंडर इफेक्ट होता है वो एक छोटे रीजन में होता है, लेकिन ये इससे बड़ा जेनेटिक्स में कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां की फाउंडर इफेक्ट एक बहुत बड़े रीजन में प्रेजेंट हो। उसके बाद आप लोगों ने जिप्सी के बारे में सुना होगा। रोमा पॉपुलेशन है, यहाँ भी एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर का यूज है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से यूरोप में गए लगभग 1500 साल पहले। अब उनका डीएनए जब एनालाइज होता है तो उसमें कुछ ऐसे टाइप के वाई क्रोमोसोम मिलते हैं जो उनको इंडिया से जोड़ते हैं। अब उस वाई क्रोमोसोम के जो YSTR पैटर्न को आप देखते हैं, ये ऑटोसोमल STR नहीं, ऑटोसोमल बहुत सारे नियरली 650,000 मार्कर्स को एनालाइज किया गया। उसमें देखा गया तो ये समझ में आया कि ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब वाई क्रोमोसोम को स्टडी किया गया तो और जिसने पिन पॉइंट किया कि ये पॉपुलेशन जो है, ये सारे के सारे लोग जो है नॉर्थ वेस्ट इंडियन लोग जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ग्रुप के हैं, ये उन सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो ये बड़ा जो है एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था, जिसके थ्रू किसी पॉपुलेशन का जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट कर गई है, उसका टाइम और उसका पर्टिकुलर टाइप का हेप्लो ग्रुप वो आइडेंटिफाई किया जा सकता था। उसके बाद मेसोपोटामिया और इंडिया के बीच बहुत सारे ट्रेड का कनेक्शन था। इसको बहुत पहले से जो है इंडोलॉजिस्ट लोग बोलते थे, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो मेसोपोटामिया से 4 सैंपल अलग अलग टाइम पीरियड में एंशिएंट डीएनए सैंपल निकाला गया। उन एंशिएंट डीएनए सैंपल को जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो उस एंशिएंट डीएनए सैंपल के चारों सैंपल्स इंडिया के साथ मैच कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि जो इंडियन लोग ट्रेड रूट के थ्रू मेसोपोटामिया के साथ बहुत लंबे समय से कनेक्टेड थे, और ये ही नहीं कि वो केवल ट्रेड करने के लिए जाते थे, वो वहां रहते भी थे। इसी वजह से मरने के बाद उनके जो बोन्स थे उनका एनालिसिस हुआ और उसके थ्रू ये पता लगा कि वो लोग कौन है। अब वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में आप देखिए, अफ्रीकन का अलग पैटर्न है, इंडिया का अलग पैटर्न है, ईस्ट एशिया का अलग पैटर्न है, सेंट्रल एशिया का अलग पैटर्न है। इसी पैटर्न को यूज करके एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर्स बनाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक एशियन प्लेक्स मार्कर बनाया, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के
60 बेस पेयर सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई किया जा सकता है। उन 60 बेस पेयर के सीक्वेंसेस को कुछ मार्कर 23 to 30 मार्कर को आप एक साथ इस प्लेक्स में यूज कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वो व्यक्ति एशिया के किस कंट्री से आ रहा है। दूसरा, हम लोगों ने एम प्लेक्स डेवलप किया। एम मार्कर जो है वो मोस्टली इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में पाया जाता है। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने mtDNA के कुछ मार्कर्स का एक बैटरी बनाया। उस मार्कर को 56 to 60 बेस पेयर के एम्प्लीकान को एनालाइज किया और उस एनालिसिस में हमको दिखा कि इसके बेसिस पे हम रीजन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब नियरली 650,000 मार्कर्स को जब एनालाइज किया गया तो यहाँ जो हर एक रीजन का अपना अपना कलर पैटर्न है वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं, जिसको यूज करके लोगों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है और इसको एज एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर यूज किया जा सकता है। अब यहाँ आप देखिए पैटर्न जो है वो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इनकी जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की एंसेस्ट्रीज है, दैट एंसेस्ट्री कुड बी यूज्ड टू पिन पॉइंट द ओरिजिन ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके अलावा जो ट्रेड्स हमने शुरू में आपको बताए थे, लैक्टोज टॉलरेंस के और स्किन पिगमेंटेशन का, एक सिंगल मार्कर की बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि वो इंडिविजुअल मोस्ट प्रोबेबली किस रीजन से होगा। अब हम लोगों ने जब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के सैंपल्स को एनालाइज करना शुरू किया तो उसके बेसिस पे हम हर एक रीजन के इंडिविजुअल को उनके एफएसटी के डिफरेंस के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम उनको मार्क कर सकते हैं कि ये किस रीजन से होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने हिमालय रीजन के लोगों को जब डिफरेंशिएट किया तो हिमालय के रीजन के लोगों की जो डीएनए की पैटर्न था वो पैटर्न हिमालय में बहुत ही स्पेसिफिक है। वहाँ के लोगों का अगर किसी भी अननोन इंडिविजुअल का जो हिमालय का है, अगर आप उसका डीएनए एनालिसिस करेंगे तो वो इसके साथ मैच करा करके बताया जा सकता है कि वो किस रीजन का होगा। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और ओवरऑल जो नियरली 2000 जीनोम्स को जब हमने एनालाइज किया उसके बेसिस पे हमने मात्र 14 मार्कर्स को आइडेंटिफाई किया, जिसके बेसिस पे आप पूरे इंडियन पॉपुलेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी ग्लोबल पॉपुलेशन से। तो ये मेथड्स ऐसे हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके फोरेंसिक्स में एक फ्रेगमेंटेड डीएनए को, इवन वो डीएनए जो कि आपके वाईएसटीआर, ऑटोसोमल एसटीआर में कुछ मार्कर्स जिसमें एम्पलीफाई नहीं होते हैं, उन डीएनए में भी सक्सेसफुली इन मार्कर्स को बहुत इजीली एम्पलीफाई किया जा सकता है। तो हर एक रीजन का जब हमने आइडेंटिफाई किया तो ये समझ में आया कि रीजन वाइज भी पॉपुलेशन को बहुत इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है और उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये तीन बड़े कंक्लूजन किए कि माइटोकॉन्ड्रियल और वाई क्रोमोसोम, मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल एंसेस्ट्री को अगर हम किसी भी इंडिविजुअल में एनालाइज करें तो उसके बेसिस पे हम कंटिनेंट के बेसिस पे पॉपुलेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर्स को नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डेटा के एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं और इंडिया को डिफरेंशिएट कहीं से भी कर सकते हैं मात्र 14 ऑटोसोमल स्निप के बेसिस पे, मात्र 14 मार्कर्स की बेसिस पे। तो इस काम में जो है वो हम बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेट करते हैं और इसके अलावा जो है बहुत सारे सैंपल्स हम लोगों को ग्लोबल लेवल पे एनालाइज करने होते हैं, इसलिए हम लोग बहुत हैविली कोलैबोरेट करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ तारतू के साथ, CSIR CCMB हैदराबाद के साथ, डॉक्टर नीरज राय ग्रुप के साथ BSIP में और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, FSL भोपाल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और बर्न यूनिवर्सिटी के लोग, इसमें लिंग्विस्ट भी शामिल हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं पॉपुलेशन के डिफरेंशिएशन में। और ये मेरी छोटी सी लैब है जो कि BHU में काम करती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आई विल बी हैप्पी टू टेक द क्वेश्चन। The floor is now open for questions. Any questions? So moving ahead, thank you, sir, for broadening our understanding of genomics in forensic science. I request Shri Pawan Sharma, sir, to felicitate sir with a memento.
In this era of digital transformation, the government of Uttar Pradesh is rapidly advancing in artificial intelligence, development and cyber security, building a future that is smart, secure and innovation driven. Our esteemed speaker, Ms. Neha Jain ma'am, is an IAS officer from 2014 batch. She is currently serving as the Special Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the IT and Electronics Department and as Managing Director at UPDESCO. With a background in Computer Science and Engineering from HPTI Kanpur, ma'am has also served as the District Magistrate and Collector of Kanpur Dehat, among other key positions. Now I invite ma'am to address the gathering. Okay, thank you. Am I visible? Should I stand over here? मुझको थोड़ा और लंबा होना पड़ेगा. Okay. Hello. Am I audible? Okay. So वहाँ पे मेरी शक्ल नहीं दिख रही थी, तो I thought I'll come over here ताकि आप लोग मुझे देख पाएं. बहुत टेक्निकल सेशन रहा है, तो I'll tell you about the government policies in AI and cyber security. सबसे पहले तो किस किस को नींद आ रही है? मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को नींद आ रही है. Okay. Sorry, I can't help it. आपको अटेंड करना पड़ेगा. अभी आपके सर ने बोला है मैंडेटरी सेशन है, तो I don't know how interesting or bad it is going to be, but you will get a perspective of what the government is doing in the field of AI and cyber security. And by the government, I mean the government of Uttar Pradesh. I'm not talking about the government of India, but I will also try to add what the government of India is doing so that you can all understand it. तो पहले मैं AI में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में आप लोग को बताती हूँ. तो सबसे पहले आप लोग ने इंडिया AI मिशन के बारे में सुना है? सभी लोगों ने इंडिया AI मिशन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? शो ऑफ हैंड्स. अब तो सुन लिया ना. इंडिया AI मिशन 10,000 करोड़ रुपए का मिशन है. अगर पूरा स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए लगा रहे तो उतना तो पता होना चाहिए ना. आप लोग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हैं, AI की फील्ड में हैं. ओके, AI इम्पैक्ट समिट के बारे में कितने लोगों को पता है? ये सबको पता है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी. नो नॉट इट शुड नॉट बी लाइक दैट. आप लोग को सिर्फ गॉसिप वाली चीजें नहीं पता होनी चाहिए. उसके एक भी सेशन ऑनलाइन आपने अटेंड किया है? किसी ने भी इंडिया AI समिट, AI इम्पैक्ट समिट के बहुत सारे सेशंस ऑनलाइन थे. किसी ने एक भी सेशन अटेंड किया है? किसी भी बच्चे ने एक भी? ओके, आप लोग के पास फोन होगा. आप लोग AI इम्पैक्ट समिट को सर्च कर सकते हैं और उसमें जितने भी अच्छे थे लेक्चर्स वो सारे के सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं. प्लीज टेक आउट टाइम. The best of the minds had chosen to come to India because India is an emerging powerhouse in the field of AI. और AI में सिर्फ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इवन फ्रॉम अ टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया को अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन मानते हैं. अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फ्यूचर AI टैलेंट मानते हैं? अपना हाथ उठाइए. AI टैलेंट, फ्यूचर AI टैलेंट. नहीं, एक जन आपस में बोल रहे हैं आप मानते. ओके, फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी टैलेंट मानते हैं. साइबर सिक्योरिटी में सर ज्यादा हाथ उठे हैं, तो मैं उसको थोड़ा लंबा, आई टेक इट लॉन्गर. बट अपने आप को मानते ही नहीं है फ्यूचर है. मुझे क्योंकि लग रहा है सब सो रहे हैं. फ्यूचर हमारा सो रहा है वहां पे. आप दिख रहे हो मुझे यहाँ पे. यू शुड ऑलवेज लिसन, ट्राई टू लिसन. इट्स वेरी इजी टू स्लीप, जैसे सर ने बोला. इट्स वेरी इजी टू स्लीप थ्रू द सेशंस एंड इट्स द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू. बट कलाम साहब ने बोला है ना कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने नहीं देते हैं. राइट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सो रहे हैं एंड वी आर. जब आप लोग सोते हो तो मुझे लगता है देश का भविष्य सो रहा है. तो प्लीज जगिए, जगिए मेरे सपूतों. तो यूपी का भी AI मिशन लॉन्च हुआ है, विच इज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
अनाउंस किया एंड इट इज वर्थ 2000 करोड़. ठीक है, तो अभी इसमें क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ. इसमें कुछ पिलर्स हैं. एआई के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? लेट मी चेक. चैट जीपीटी कितने लोगों ने यूज किया है? ओके, ये सब जानते. जेमिनाई कितने लोगों ने यूज किया है? वो भी जानते. कौन सा ज्यादा अच्छा है? जेमिनाई ज्यादा अच्छा है. ओके, किस चीज में अच्छा है? फोटो बनाने में अच्छा है या आंसर देने में अच्छा है? आंसर देने में. ओके, जो असाइनमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा बेहतर कौन सॉल्व करता है? चैट जीपीटी या जेमिनाई या एंथ्रोपिक? हाँ, चैट जीपीटी वाले हाथ उठाइए, जेमिनाई वाले हाथ उठाइए और एंथ्रोपिक वाले हाथ उठाइए. ओके, बोल रही ये कौन सा फैंसी वर्ड है एंथ्रोपिक? ये एंथ्रोपिक का सीईओ जो बोल देता है उससे पूरा ग्लोबल पूरी दुनिया हिल जाती है. क्लॉड टूल के बारे में किसी ने सुना है? हाँ, तो वो एंथ्रोपिक कंपनी का है, ये पता होना चाहिए. ओ या सबसे इम्पोर्टेंट होता है. अच्छा, ये लेयर्स फॉर्मेट में नहीं बना है, बट एआई मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले भी थी जो हम लोग कंप्यूट कर रहे थे, बट उसके लिए बहुत ज्यादा अगर हमें कंप्यूट की जरूरत हुई तो जो हमारे पहले गेमिंग वाले लैपटॉप्स होते थे, राइट, जो हमारे एनवीडिया इन सब के, जो एनवीडिया तो गलत बोल दिया, बट जो गेमिंग वाले लैपटॉप्स होते थे जो जीपीयू चिप्स को यूज करते थे, उनको नॉर्मल चीजों के लिए भी यूज करने लग गए. तो उसमें बहुत ज्यादा कंप्यूट की रिक्वायरमेंट होने लग गई. तो जो हमारे डेटा सेंटर्स में जो सर्वर्स थे उनमें नॉर्मल चिप्स की जगह जीपीयू चिप्स लगाने लग गए. इसीलिए एनवीडिया का शेयर सबसे ज्यादा है, एनवीडिया का स्टॉक प्राइस सबसे ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि कंप्यूट में वो काम करते हैं और उनकी वजह से अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी प्राइस बढ़ गए. तो सबसे पहले हमारा जो जीपीयू कंप्यूट है, तो अगर आपके जैसे कोई भी बच्चे होंगे, कोई भी स्टार्टअप होगा, उसको अगर एआई में कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उनको कंप्यूट की जरूरत होगी. और ये कंप्यूट जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज ही दे रही हैं, वो बहुत महंगा है. तो इंडिया एआई मिशन उसको इंडियन रिसर्चर्स, इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एआई कंप्यूट का कॉस्ट कम कर रहा है और यूपी उसको ऑगमेंट करेगा. मतलब इंडिया एआई मिशन ने जो भी कॉस्ट दिया उससे कम यूपी का मिशन करेगा. भाई कंप्यूट के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो डेटा आती है कि कुछ भी चीज होती है उसमें सब लोग इंडिया क्यों आना चाहते हैं? कोई भी चीज है, क्योंकि एक तो हम लोग कंज्यूमर्स हैं. यूपी क्यों आना चाहेंगे? क्योंकि हमारी 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट हमारे पास बहुत सारा डेटा भी है हर चीज से रिलेटेड. तो उस डेटा को इस फॉर्मेट में हो कि वो यूजेबल हो जाए, उसको हम लोग इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर पाए. तो उसके लिए डेटा का इकोसिस्टम होना चाहिए. सपोज कि कितने किसानों को पीएम किसान के 6,000 रुपए मिलते हैं? ये आप लोग को पता है? किसी को 6,000 रुपए मिलते हैं पीएम किसान के? तो क्या आपको पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने किसानों को मिलते हैं वो पैसे? या स्पेशली आपको पता है ज्योग्राफिकली कि कितने लोगों को मिलते हैं वो पैसे? क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स पेयर कौन है उस जगह का और क्या उनको भी मिल रहे हैं? इस तरीके की मैपिंग्स, डाइवर्स डेटा सेट्स को मिला के what you could do is you could draw intelligence. बट अभी जो गवर्नमेंट का डेटा है वो कहीं ना कहीं लॉक्ड है, ओपन नहीं है. उसको ओपन करने के लिए एआई का इकोसिस्टम बनाना एक पिलर है. फाउंडेशन मॉडल, सर्वम के बारे में सुना है लोगों ने? सर्वम, हाँ. तो जैसे सर्वम का एक फाउंडेशन मॉडल है, वैसे ही अब क्या हो रहा है, बात हो रही है सॉवरेन एआई की. सॉवरेन एआई के बारे में कुछ सुनाइए. ओके, जो भी आप डेटा देते हैं, जैसे वो जिबली वाला आया था ना, जिबली का एक ट्रेंड आया था, आप सब लोगों ने अपना फोटो उसको दे दिया. वो सारा फोटो मतलब इंडियन डेटाबेस, इंडियन फोटोज पे ट्रेन हो गया आपका, जो भी आपने एलएलएम यूज किया उस समय, राइट. तो उनके पास डेटा नहीं था और आपने सबने फ्री में कंज्यूमर बनके अपना डेटा दे दिया. तो अब आप जब भी उससे कोई इंडियन वुमन या इंडियन मैन या इंडियन चाइल्ड का फोटो मांगेंगे, वो बहुत अच्छा जनरेट करके देगा, क्योंकि वो आप ही लोगों के डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है, हम ही लोगों के डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है. सो वी हैव ट्रेडेड दैट टू गेट व्हाट वी आर गेटिंग. सो नाउ जब हम लोग गवर्नमेंट का डेटा यूज करते हैं तो एक डर ये होता है कि हम किसी को भी अपना डेटा नहीं दे सकते. तो हमें डेटा किसको देना है, उसके लिए सॉवरेन मॉडल्स बनते हैं. जैसे जो भी काम है, अगर मुझे सिर्फ वॉइस, टेक्स्ट टू वॉइस करना है, तो मुझे चैट जीपीटी का, ओपन एआई, ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है. मैं अपने प्रोप्राइटरी मॉडल्स बना सकती हूँ एज अ स्टेट.
तो उसके लिए फाउंडेशन मॉडल्स के लिए इसमें कुछ पैसे आवंटित किए गए हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको यूज कहाँ कर रहे हैं। अभी एआई सब बच्चे अपना दुख दर्द बांटने के लिए यूज कर रहे हैं और असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? बट उसको हम लोग क्या ग्रेटर डेमोक्रेटिक एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो बात हो रही है कि हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाने के लिए, या हर किसान को उसके हिसाब से फसल की एडवाइजरी देने के लिए, या फिर और बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैन वी यूज एआई। तो एआई का यूज केस अडॉप्शन अक्रॉस सेक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स वी नीड टू आल्सो बिल्ड द कैपेसिटी, जैसे ये वर्कशॉप है इसके थ्रू हम लोग एआई में या साइबर सिक्योरिटी में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होते हैं जो बड़ा डेडिकेटेड काम करते हैं किसी एक फील्ड को चुन के। तो एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जितने बने हैं, मैं अभी और भी बताऊंगी, उससे अधिक और बनने की या उन्हीं में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए एक पिलर है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारा एआई का डेटा है या एआई में जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, आउटपुट जो भी आ रहा है वो क्या ट्रस्टेड है, क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पूछा कि 3+5, तो क्या आपका जो मॉडल है वो हमेशा 3+5 = 8 दे रहा है या नहीं दे रहा है? वो जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आउटपुट होता है मॉडल का वो होता है प्रोबेबिलिस्टिक, इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक। वो हर बार सेम जवाब नहीं देगा। तो बहुत बात होती है कि एक्सप्लेनेबल एआई हो और रिस्पॉन्सिबल एआई हो। तो इस पे कुछ पिलर था एक। दिस इज द कोर पिलर्स ऑफ यूपी एम, जो यूपी का एआई मिशन है। 2000 करोड़ रुपीस का मिशन है, जिसमें इस साल बजट ऑलरेडी आवंटित हो चुका है। इसके अलावा आपने किसी ने एआई प्रज्ञा के बारे में सुना है? एक दो लोगों ने भी सुना होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, नहीं सुना है तो एआई प्रज्ञा के बारे में अब सुन लिया आपने। एआई प्रज्ञा इज अ प्रोग्राम वेयर द गवर्नमेंट, इट वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल सीएम इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। और ये हमारा साइबर सिक्योरिटी और एआई का स्किलिंग इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग विभिन्न प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ मिलके किस प्रकार से एआई की नॉलेज ग्राउंड लेवल तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं पॉलिटेक्निक्स के साथ, कॉलेजेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैसे अभी हम लोग का रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में कि आईबीएम का लखनऊ लैब्स इनॉग्रेट हुआ है, तो उनके साथ हमने एमओयू किया है। और साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन स्कूल लेवल पे किस तरह से पहुंचा सकते हैं, इसमें हमने एक एमओयू किया है। माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कॉलेजेस में एआई के जो सीओईज हैं वो बना रहे हैं, विच इज फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी। और 40,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग इसमें ट्रेन कर चुके हैं। इसमें हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, मतलब आम जनता तक एआई क्या होता है वो बताने के लिए ये प्रोग्राम है, ये मिशन है, जो ऑलरेडी हमारा पिछले वर्ष की मई से चल रहा है। इसके अलावा जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैंने बताया था, 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडस्ट्री के सपोर्ट से ऑलरेडी बन गए हैं। एक आईबीएम का गवटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी संडे को ही इनॉग्रेट हुआ है। साथ ही टीसीएस का भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो गोरखपुर में बन रहा है, जो कि बहुत जल्दी इनॉग्रेट होगा। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने नैस्कॉम के साथ एमओयू किया है, ताकि जो भी फ्यूचर स्किल्स प्राइम के कोर्स हैं वो हम लोग बच्चों को फ्री में दे सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो इंडिया एआई मिशन के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस हैं वो हमारे पास हैं। और आईटीआईज में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे 62 एआई लैब्स स्थापित हो रही हैं, जहाँ पे बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है, और आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, कि सब लोग बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, पर बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? मतलब व्हाट डू यू थिंक, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे? एक तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्या पढ़े समझ में नहीं आता। कितने लोगों को लगता है कि ओके लेट मी मेक इट इजी, इतना सारा कोर्स है, क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? अंगड़ाई ले रहे थे? पीठ दर्द हो रही है? सॉरी। हाँ, एक्सपीरियंशियल होने चाहिए। ओके, आई थिंक गवर्नमेंट ने अभी इस बार बजट में देयर इज अ बजट प्रोविजन फॉर टेक युवा समर्थ युवा, जिसमें किस प्रकार से
हम लोग जो ट्रेनिंग है उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकें, इसके लिए देयर इज़ अ बजट एलोकेशन, सो यू विल सी समथिंग सून. बट ऑल्सो जैसे कि यूपीएससी की तैयारी हमने करी, मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हूँ, तो जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो 10 किताबें होती थी और बच्चे ये कंफ्यूज होते थे कि कौन सी किताब से पढ़ें. तो कोई बच्चे ऐसे करते थे कि ये वाली भी पढ़ ली, ये वाली भी पढ़ ली, ये वाली भी पढ़ ली, पर दिमाग में कुछ नहीं घुसा. उससे अच्छा आप अपनी एक राह चुन लीजिए, आप एक कोर्स कोई चुन लीजिए. फ्यूचर स्किल्स प्राइम का चूज करना है वो चूज कर लीजिए, या आईबीएम का चूज करना है वो चूज कर लीजिए, और या गूगल का चूज करना है वो करके जो भी आप लें उसको पूरा एक बार को एक सिरे से पढ़ डालें. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी. इसको बोलते हैं थीसिस बन जाना. तो आपके मन में अभी कुछ भी नहीं था, फिर आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया, उसको बोलते हैं थीसिस. और सेकंड आप क्या करिए कि कुछ और नया पढ़िए. तो कुछ और नया पढ़ेंगे तो दिमाग फिर से चैलेंज होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, एंटीथीसिस. थीसिस और एंटीथीसिस. और ये सब कुछ जब कंबाइन होके क्या बोलते हैं उसको, सिंथेसिस करके एक अपनी आप हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं. और यू कैन एक्चुअली पुट इट टू टेस्ट कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सही है कि नहीं है. दिस इज वन वे ऑफ लर्निंग विच आई फाइंड इज वेरी गुड, क्योंकि आप अपने आप से एक इंटरनल डायलॉग में रहते हैं. अभी तो मुझे इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता है. अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि उनको एआई के बारे में कुछ 10% पता है? 10% तो पता ही है. एआई है क्या? मेरी बात का जवाब देने का भी मन नहीं हो रहा है क्या? ओके, ठीक है, फिर मैं जल्दी से प्रेजेंटेशन आगे बढ़ा देती हूँ. ठीक है, फिर मैं सेकंड आ जाती हूँ साइबर सिक्योरिटी पे. साइबर सिक्योरिटी की जो स्टेट की जो पॉलिसी है दैट इज इन प्रोग्रेस. सर्ट यूपी बनाने का, जैसे सर्टेन है, सर्टेन एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा आईटी एक्ट है उसके सेक्शन 70B में, उसमें दैट इज द नोडल फॉर ऑल द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स. तो उसी के लिए स्टेट का क्या इंसिडेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसके लिए सर्ट यूपी का सॉक और साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट, इन सब पे गवर्नमेंट काम कर रही है. इसके अलावा सीसो किसी ने सुना है? सीसो एनीबडी? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. देखिए, हम लोग जब बात करते हैं जॉब्स ऑफ टुमारो, फ्यूचर जॉब्स, तो फ्यूचर जॉब्स आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होंगे. सीसो इज अ गुड जॉब रोल, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग इतनी एआई की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी की बात करना जरूरी है. एंड साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम से बहुत अलग है. हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग बहुत सारा, क्योंकि फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, तो आप लोग साइबर क्राइम के बारे में समझते हैं. पिछला वाला सेशन बहुत टेक्निकल था, जेनोमिक्स पे था, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा नहीं समझ पा रहे, बट मुझे लगता है मोटा मोटा पता होना चाहिए. और कुछ लोगों का अगर इंटरेस्ट हो तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं. तो साइबर सिक्योरिटी के लिए हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स बनाए गए हैं. ठीक है, तो हम लोग ने 55 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इनको नॉमिनेट किया है. आई हैव टू टेल यू कि गवर्नमेंट में बहुत शॉर्टेज है टेक्निकल मैन पावर की, जो समझती है आईटी सिस्टम्स को. तो अगर आप लोग सीखेंगे तो आप लोग के पास यू विल हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर ऑल्सो, आप या आपके फ्रेंड्स, बिकॉज ये सब निश एरियाज हैं, ट्रेडिशनली नहीं समझा है लोगों ने. अब नई रिक्वायरमेंट आ रही है. हम लोग बात करते हैं साइबर वॉरियर्स की. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दीज आर न्यू जॉब रोल्स विच आर कमिंग अप, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड सी वट एवर वी कैन यूज इन दिस. तो इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट वो करते हैं. थ्रेट लैंडस्केप मैनेजमेंट, पॉलिसी ड्राफ्टिंग, टेक्निकल ओवरसाइट और ऑपरेशनल सिक्योरिटी. तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं, मैंने लिखा हुआ है. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट इज देयर. Maybe you can take a photo or we can share the slide later on. So I'll move to the next slide. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वन सेशन, और मैंने देखा है कि सर इस टाइप के सेशंस कराते रहते हैं. तो अवेयरनेस की, ट्रेनिंग्स की और पार्टनरशिप की. तो यूपी गवर्नमेंट इज एक्टिवली पार्टनरिंग. थैंक यू. यूपी गवर्नमेंट इज, दिस इज लाइक आईबीएम का पिंक स्लिप्स. यूपी गवर्नमेंट इज एक्टिवली पार्टनरिंग विद सर्टेन. NCIIPC ने हमारे स्टेट डेटा सेंटर पे सेंसर्स लगाए हुए हैं, हनी पॉट सेंसर्स बोलते हैं. मतलब उसमें वो डमी अटैक्स करके हमें बताते हैं कि क्या थ्रेट है और किस प्रकार से हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं.
ठीक है, और आईआईटी कानपुर जैसे उनका जो C3I हब है उनके साथ गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टनर कर रही है. फ्यूचर रोड मैप में वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ COE इन साइबर सिक्योरिटी. बहुत ज़्यादा AI ML अब VAPT कोड टेस्टिंग के लिए या थ्रेट डिटेक्शन के लिए भी यूज हो रहा है, प्रिडिक्टिव साइबर डिफेंस के लिए. दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डू. वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन SOC एंड डेटा. ये DPDP एक्ट के बारे में सुना है आपने? DPDP एक्ट अभी सर ने बताया, क्या डेट बताई थी, कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है? हाँ, आप लोग सुन रहे हैं, वेरी गुड. सर सुन रहे हैं? हाँ, वेरी गुड सर. सर का ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे सर. वेरी गुड. तो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क. हर डिपार्टमेंट में चीफ डेटा ऑफिसर आने हैं, जिससे हमारा DPDP एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि अगर किसी भी इंडिविजुअल का डेटा विदाउट कंसेंट, देखिए कुछ चीजें आपको याद रह जाएंगी, जैसे मैं बोलूंगी 250 करोड़ तो 250 करोड़ आपको याद रह जाएगा. यदि किसी भी इंडिविजुअल का डेटा किसी भी कंपनी ने विदाउट प्रॉपर कंसेंट यूज किया, प्रोसेस किया, तो उस पर 250 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है. जैसे CSR एक्ट में किसी को कंपनीज एक्ट में कुछ और याद ना हो, याद हो, बट CSR का 2% का प्रोविजन है, ये सबको याद है. तो इस तरह से DPDP एक्ट में 250 करोड़ का प्रोविजन है, ये आप याद रख सकते हैं कि अगर गलती करी बिना, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है. आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए बोले कि DPDP कंप्लायंस कराना इन कंपनीज या फिर इन सॉफ्टवेयर, दैट इज अ वेरी बिग एरिया जहां पे आगे there will be jobs in the future. So these are the initiatives in the field of AI and cyber security, and I hope that I have ended my presentation on time. Thank you so much. Thank you, ma'am. I request Srimati Krityapuri Vadhokar ma'am to felicitate ma'am with a memento. Innovation is shaping the future of security and development, and drone technology stands at the forefront of this transformation. Let us now move ahead to aspirational drone technology. It is indeed a great honor for us to welcome Mr. Milindra Sir, popularly known as Drone Man of India. He is a co-founder of Robes.Intech Innovation and chairperson of APJ Abdul Kalam Foundation. As a technology entrepreneur and innovator, he has been actively contributing to robotics, drone development, and nourishing young innovators across the country. Our esteemed panelist, Ms. Neha Jain Ma'am, IAS, UP Desco Lucknow, Shri Aditya Ranjit Vadhokar Sir, founder and managing director, Philogen System Private Limited, Pune, Srimati Krityapuri Vadhokar Ma'am, director, Philogen System Private Limited, contributing to advancements in unmanned aviation technologies, Mr. Rahul Singh Sir, co-founder and vice president at Idea Force Technology, working in UAV solutions for defense and industrial application. I now invite our moderator and distinguished panelists to initiate the deliberations. Thank you so much for having me here, and it was wonderful to be a part of UPSIFS, like always, and we are having a futuristic vision, and I'm extremely honored to welcome our distinguished panelists, esteemed members of staff, and my favorite students of UPSIFS. You are doing a brilliant job, right? So today we are going to talk about the UAV ecosystem in India, which is the drone system. For some, it might be a niche technology. For some, it's something that has started probably a decade ago. And here we are going to discuss about
the potential of startups, because the audience is mostly the students here. So we are going to discuss about startups, how to start your own career in this particular domain, in this sector, and more importantly, what are the challenges a student as an individual will face, and like the darker side of every career, like there is a lot of things and ups and downs and failures. So we're going to talk about that, and of course we're also going to talk about the drone rules and regulations, and we have wonderful panelists here. So to begin with, I would like to start with Neha ma'am. Ma'am, what is your take when it comes to drone and cyber security, or anything that poses a threat in this particular domain? Like, how do you see a drone as a technological threat, be it a cyber security, be it any breach of regulation in India, especially in India, considering the fact that it's a hugely populated country? Okay. Thank you so much, Milanji. It's an honor to be sitting with the drone man of India, who has been mentored by none other than our beloved president. So, I will not be the right person to answer your questions technically, but from a policy perspective and from my integrated understanding of the landscape, maybe I can say something. That while you talk of drones and cyber security, I think drones are very essential for physical security also. In fact, there was a panel I attended in the India AI Summit where there was an entire discussion of how our borders should be secured and hardened with drones ecosystem, right? And when you talk of things like cyber security, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो components होते हैं वो electronically manipulate भी हो सकते हैं, तो there is something called electronic warfare handling. I was discussing with Pawan ji जो उधर बैठे हुए हैं. So those are things, those are the safeguards that we'll have to place in our drone systems, so that कि उसमें there is no, if there is any counter attack, that could be easily taken care of. But we need to work on those things and we need to understand it better, because अभी भी इस area में जो expertise है बहुत limited है और understanding है वो बहुत I would say कि बहुत hazy है. तो इसमें clarity लाने की ज़रूरत है. And as governments, we have started some initiatives. If you're going to ask me more questions, I can hold that thought, or if you want, I can answer that right now about the government initiatives. Yeah, of course. We would like to know some of them. Right. So, since, as you said, drones or the unmanned aerial vehicles, so isme we have, as a government of Uttar Pradesh, we have established a drone center of excellence in IIT Kanpur under our startup policy, right? So, where there is a dedicated mentoring support, 20 plus startups have been incubated, and of course, when you talk of startups over there, हमेशा funding की बात आती है, so they have got very good funding also, right? But also in our electronics manufacturing policy, drone is a focus area and a key sector, especially after Operation Sindoor. It has gained all the more prominence. So we have given 5% extra capital subsidy to anybody who's manufacturing drone. In fact, we have one of the biggest drone suppliers in Noida, right? So unko bhi I would not want to name them from here, but we have given them some extra capital subsidy. So that is what the government is doing. Also, to understand the sector better, there have been dedicated consultations with the industry. One such consultation happened on the 3rd of November this year, last year, where there were startups, drone firms, incubators, academia, senior officials from the government, from the planning department, from UPIDA. They came together to understand the sector and then gather insights into what could be done better. And there were talks around how the technology needs to be indigenized, how there should be better policy, and how there needs to be a more awareness and training and better certification of our drones. Right, ma'am. Yeah. So since ma'am you are representing the government sector, there's a question that often I come across. When we talk about any drone industry, like let's talk about the students here, इनमें से बहुत सारे होंगे जिनको मैम इस सेक्टर में करियर बनाना होगा. But whenever we hear examples, like एक X company है, suppose company is A drone manufacturer, they are the full-fledged multi-billionaire people. How can a common man, like एक जो बिल्कुल niche है, beginner है,
they can start, or it's just like a scenario like Amazon. E-commerce mein there is no competitor that can beat Amazon. Is this the ecosystem been a little getting disbalanced, or how to? What is your advice for the new people who are coming as the new people who are building their career in drone industry to overcome this hurdle? Like the big giants are getting fundings, they're getting the capital, they're getting incubated anywhere they want to, but it's highly possible that we have better talents sitting all around the country, but they're not recognized. So what is that advice you would like to give to them? I would want to answer that question more generally. Because as you mentioned Amazon, I'll take example of Amazon. What happens really is that whenever we look at a sector, we think हमने छोटा सा कुछ बना दिया, हमें लगता है हमने सब कुछ बना दिया, हमें लगता है यही दुनिया है. Suppose हमने कोई हम सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं और हमने कोई एक algorithm बना लिया है to break a key, right? We think that we own the world, whereas we do not understand the sector in its totality. I can say, because having worked as a computer engineer and have worked in IBM on a product, and now being in the IT department as the Special Secretary of IT and Electronics, I am seeing the difference in the scope. So, अगर Amazon जैसा आपको seller, मतलब अगर आपको ecosystem बनाना है, तो it is better to first become a seller on Amazon to understand the nuances of that system. Maybe work with a giant to understand how they function, and then also think of how uniquely you could contribute to the value chain. Because as we talk of indigenization of drone technology, there are parts which are still not manufactured 100% by India, and where is it that I can uniquely give my contribution as an SME and then probably grow big. So that is my 2 cents to it. Thank you, ma'am. That's a very well answered question, and I'm sure it will help a lot of new people who are coming to this industry to understand their initial steps. That is, first you need to understand the working of this ecosystem, get into this industry, and then, the sky is your property. Okay, now coming to the next question, will go to Rahul sir. Yeah. So Rahul sir, I think you represent a company from Mumbai, if I'm right. Mike, sorry. Okay, so your question is, in the, I'm not able to hear you. Drone flight controller. Flight controller. आपका क्या नाम है? Rahul, yeah. So, okay, that's what I was saying. Right. No problem. But there's a drone just behind your photo. So that solves the purpose. Right. Yes, it solves the purpose. So, Mr. Rahul, what does aspirational drone technology mean for you, for India, in the next 10 years as a drone expert? आप सभी को मेरा नमस्कार, और मैं राहुल. आज मैं एआई और ड्रोन के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं. अभी हमें इंडिया में जो कि ड्रोन्स बना रहे हैं, उसमें हमें फ़्लाइट कंट्रोलर, और बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम फ़्लाइट कंट्रोलर को कैसे बनाएं. तो हमारा अपनी बात ये है कि हमारे यूथ को अपने जो हमारे कंप्यूटर साइंस के हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के हैं, जो भी हमारे बीटेक एमटेक के बच्चे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में हैं, वो इसमें आगे चढ़ के और इनको ट्रेनिंग देना होगा कि ये जो कि हमारी ड्रोन दीदी योजना है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है जिसमें ड्रोन उड़ाने एंड रिपेयर की बहुत सारी योजना, जैसे कि मिलन भाई करते हैं, तो उसमें और सारे हमारे यूथ को आगे आना होगा, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है भारत को विकसित करने में. उसमें हमारे फ्लाइट कंट्रोलर एंड अंडर वाटर प्रूफ ड्रोन बनाने में, जो कि हमारे बेटे के बच्चे अगर आगे आते हैं तो हम कम समय में ज़्यादा विकसित भारत पे काम कर सकते हैं. वेरी वेल सेड सर. और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सबको आगे आना पड़ेगा, इंडिजीनियस चीज़ में भी डेवलपमेंट होगा. आपने फ्लाइट कंट्रोलर का नाम लिया था, उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आर्मी में स्पेशली बहुत ज़्यादा इस समय हाईलाइट पे है, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर द आर्मी. सो नाउ कमिंग टू the flight-gen experts here. So, sir, right, sir. Yeah, sir, I would like to ask you one thing. A very practical question. Definitely. What is that key takeaway you would like to share for any of the students who want to start a company? Like, you have the best experience in startups. You know the challenges, you know the hurdles, and you know the success, right? So, what is that
personal challenge which you would like to, like your personal experience which you faced in this industry, and जो चीज़ something which the students should not do. Is there anything which you want to tell them? We all know what they're supposed to do. उनको step लेना है, forward करना है, सीखना है चीजें. Something which they should not do. Can you share this? Something which students should not do. That's a good question, a really good question. What students shouldn't do is not start a business right after their education. They should take at least 2 years of experience, as ma'am said, working with the giants. I wouldn't say work with the giants for that matter. I would say work with the startup, because that's where you get an overall idea of how to run a business. A startup which is doing business, not just the one who's spending money, the one who's earning money, because there are two types of startups. Ones who are burning money and ones who are earning money. The ones who earn money, initially बहुत सारा उबड़ खाबड़ होता है, but then after that, after maybe 3 years or 4.5 crores in revenue, after that, students who have now started a business and are working in a startup, they overall growth is possible in a startup is what I believe. Working for a giant, you will be working only in one particular key area. You will be given 10 tasks and they'll be repetitive. Startup mein वैसा नहीं होगा. In our company, we've got 70 people right now. They're all freshers. I mean, we don't hire. So how long has been you working into this industry, sir? So, sir, I started off at the end of 2018, right? One year before COVID. It's been 8 years. I think we'll complete 8 years this year to 2026. So the first 1-2 years we didn't do much in revenue. We were doing approximately 20 lakh rupees. Then probably 2021 we hit a milestone of 1 crore. Then 2023 we did 2.5. And then 2024 during the elections we went all the way down to 48 lakhs again. And then this year we're doing sizable income of around 7.5 to 8 crores. We're projecting slightly more. But yeah, 7.5 is something that we've done already. So I would say that it's fairly simple to do a startup. It's just that you need to be focused on one thing, that is earning money rather than spending money. Funding, I would say, I didn't take anyone's funding. Not that I was not looking for funding. Yes, funding is important to do something scalable and to scale something up. But yeah, funding is a very difficult thing. If you're doing it alone, you would need a bunch of co-founders. But just one thing, like I've often heard people saying that funding is a debt trap. It's a debt trap. So it sounds very fascinating कि fund मिल गया एक साथ मान लीजिए 50 lakhs. Funding is just a good word for loan. Kind of a loan. It is a loan actually. It is a loan. Yeah. Loan with some more added stress. हाँ, percentage लगता है, वो annum per annum ये वो सब बोला जाता है. And then, so funding is good and it's very important to, of course, accelerate your system. But how far you think that a bootstrapped organization? I've seen some very energetic people in India जो bootstrapped है. Bootstrapped means उन्होंने fund लिया ही नहीं. वो अपने से ही कर रहे हैं. They sell the product, they sell the technology, उसी से जो income आती है, उसी से ही वो sustain कर रहे हैं. And उनको हम लोग एक और बोलते हैं cockroach model. That is gradually, slowly, but they don't stop. So what's your point of view? I will now come to Ma'am Kritya. What's your point of view? Is it always important कि drone industry में, especially in India, is it important to take some good heavy funds, or a company like survive in bootstrap mode and serve agencies like the army? So what my view basically is, see, drone industry in India is fairly new. We had a formal set of drone rules that came in 2021. So we are only in single digit years when we talk about the industry itself. But now drone, especially considering warfare, everywhere in the world, be it Ukraine, be it Israel, everywhere, drones have become a mainstay and they are here to stay. So as the acceptance of the drone technology is increasing, so is the competition, and so are the number of companies that are trying to, establish themselves and become a name in the industry are coming by. But usse kya hota hai ki nobody has a niche
Everybody is trying their hand at, okay, we'll make FPVs. We are going to get into surveillance. We are going to do survey mapping. But usse kya hota hai that everybody is sort of doing the same thing. They are assembling drones. They don't have indigenous technology. They are trying to make the cut. So, but ma'am, do you think assembling drone is something a bad task? I think I support it because research kahin se to shuru hoga. Definitely. But when you talk about raising funds and funding, you have to have a USP that your startup is focused on. And ultimately, आपका technology, आपकी company किस niche पे focus कर रहा है, if you have that identified and you've proven that as a concept, then I would suggest that you fund, then you raise capital, because then you have convinced yourself that you can do good business. You will be able to convince investors and you will be able to actually, create more, something more valuable out of it. Right, ma'am. Thank you. I request the esteemed panelists, agar in case बीच में किसी को कोई suggestion input देना हो, please the mic is all yours. I was just thinking let's about make something. It interactive. Yeah. So like as you mentioned, cockroaches, and like earlier today we were discussing about human beings being like 300,000 years old, etc., or 3 million years old. So I mean, cockroaches are older than humans, and businesses the main thing any business must do is to survive, is to keep paying people salaries, is to earn money, and to make sure that for the next 300, 400 or maybe 400,000 years, your business is supposed to sustain yourself and sustain the business, right? So I would learn something from the cockroaches to sustain and survive. Sir? लाइक फ्लाइट कंट्रोल पे जो डिस्कशन कर रहे थे, फ्लाइट कंट्रोलर्स पे बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हमारे यूथ को और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको लैब में हमारे इलेक्ट्रिकल्स के जो हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के वो कंपोनेंट्स पे काम करें तो हम कम समय में ज़्यादा काम फ्लाइट कंट्रोलर्स पे कर सकते हैं, तो हम अपने हर ड्रोन्स पे काम कर सकते हैं फ्लाइट कंट्रोलर्स को चैलेंज। एक ऑडियंस को मैं एक बात बताना चाहूँगा, फ्लाइट कंट्रोलर सर मेंशन कर रहे हैं, तो व्हाट इज फ्लाइट कंट्रोलर? To those who are just asking this question, flight controller basically एक drone का एक component होता है, a part of UAV, जिसको हम लोग brain of the drone भी बोलते हैं, because that is the main thing जिससे वो पूरा flight perform करता है, right? The height, the coordinates and the right left movement, whatever the thing is, it's a proper hardware, right? So sir is discussing about the flight controller and कैसे इसको indigenous होना चाहिए. Indigenous की बात आती है, then it comes back again to the government support. So I am coming back to Ma'am Neha. Ma'am, what is that? Like the India is pushing really good in AI. It's pushing like anything about Make in India, Atmanirbhar Bharat, self-reliant country. So when we talk about this industry of drone, which is of course a part of this huge ocean, how can we avail the benefits of the government schemes? जो government की schemes होती हैं, like those single window system हो गया, registration process हो गए, and what is that best source where a very beginner person can just go in that or the department or the website or whatever it is, as per your suggestion, कि कोई भी एक इस industry के बारे में जो maximum knowledge ले सके. So how to approach and reach out to that government the right way? I think for the government of Uttar Pradesh, I can say that as of now we have a center of excellence in IIT Kanpur. So these will be the best people to approach, to also mentor the startups, do some level of filtering. And then whatever they recommend to the government, that because we may not have the expertise to actually be able to say whether this is worth the funding or not, but when it comes from a credible source where there is an established center of excellence, then the government also has that backing. And after that, so this would be the startup policy. And as I told you that there is an electronics manufacturing policy for the bigger companies, so they could come through the OIMS platform, जो online incentive management system है, that is very specific. Right on. Thank you, ma'am. So, my students, there is one piece of advice which I would also like to share, compiled with the wonderful answers that the panelists gave. That if you are willing to start any career in any domain, let's talk about the drone industry because हम लोग यहाँ पे इसे भी discuss कर रहे हैं. So, one thing you need to be sure of, that there is no shortcut, and another thing that there is no such thing as impossible. आपको चीजों को खुद से थोड़ा-थोड़ा सीखना पड़ेगा. Even if it is a GEM portal, let me tell you my personal experience. I was very weak in GEM, but then I faced this challenge. I did not, run away. कि इसको नहीं है तो नहीं. Now I realize how important the GEM is, the government e-marketplace.
earlier it was like very confusing, and for anybody entering into government to government business, and if you want to work with the army, you must understand these critical sectors. For drone industry, there are a lot of licensing also, like type certification, जो DGCA है. I don't know DGCA के बारे में कितनों को पता नहीं, but I'll tell you in one brief. It's a one main body जो license issue करते हैं for aviation industries. वो aircrafts के भी होते हैं, helicopters and so on. But for drone, उन जो laws हैं, drone laws हैं, which recently was mentioned by one of the panelists, ये DGCA बनाते हैं, Directorate General of Civil Aviation. DGCA ने drone laws बनाए. ड्रोन लॉज अभी फिर से रिवाइज हुए हैं, जो कि अभी लास्ट ईयर September 30th को इनपुट्स मांगे गए थे. नाउ वी आर मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स दिस. These laws are also promoting drone forensics. Since you are into forensics institute, drone forensic एक ऐसी चीज है, my friends, as you heard the esteemed panelist. If you make this industry parallel अपने इस career के साथ in a drone forensic, trust me, this is the best time to start. आने वाले प्रॉब्ली 3-4 साल में भारत में आप देखेंगे आपकी ऐसी डिमांड होगी, जैसे ड्रोन फॉरेंसिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी, साइबर एक्सपर्ट्स, लाइक ड्रोन में भी साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं. सो माय क्वेश्चन इज अगेन नाउ गोइंग बैक टू राहुल सर, सिंस यू हैव अटेंडेड द एआई इम्पैक्ट समिट, राइट? सो व्हाट इज योर थिंग लाइक कि विकसित भारत ड्रोन्स चैलेंजेस यूथ, ऐसी कोई चीज जो आप शेयर करना चाहते हो ऑडियंस को, which you have experienced the AI Impact Summit, and जो आपका एक व्यू है इस इंडस्ट्री को लेके, something that could benefit the students as specific. स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रोन्स के लिए हमारे बात है, जो कि माइक थोड़ा पास कर लीजिए माइक. लाइक जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ड्रोन्स के चैलेंज है, जो एआई समिट में हमने देखा कि वहाँ पे जो भी मल्टीपल्स कंपनी पार्टिसिपेट्स के थे ड्रोन्स एविएशंस को लेके, तो पहले तो हमें जो भी स्टूडेंट्स को ड्रोन फ्लाई करना है तो वो डीजीसीए पे जाके ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं. एंड मल्टीपल जैसे मिलन भैया भी चलाते हैं ऑनलाइन ड्रोन्स सर्टिफिकेशन, तो उसमें यूथ को आगे आके हमें ड्रोन्स पे हमने जो एनालिसिस एआई समिट में बहुत सारे कंपनीज को देखा कि जो कि ड्रोन्स बनाए, तो उसमें हमारे जो भी स्टूडेंट्स बीटेक्स के हैं वो ड्रोन्स किट्स पे काम कर सकते हैं पूरा. टिडर ड्रोन्स, मल्टीपल ड्रोन्स, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के लिए एआई ड्रोन्स, रोबोटिक्स ड्रोन्स, तो इस पे है बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं यूपीसीएसटी के साथ मिलकर. राइट सर, थैंक यू सो मच. एंड वन अगेन question to Ma'am Kritya. We have very rarely seen a women entrepreneur in drone industry. Rarely. So, of course, that's a sign of industry development. Rarely. This I'm telling you. Like, I address a lot of sessions across the country. I hardly find a women entrepreneur who's into drone industry. Yeah, a drone lady here. Yeah, of course. So, Kritya ma'am, so this is a question to you. What is your piece of advice to the students who are like sitting here, the number of boys and girls, especially to the girls? मैंने ये देखा है, एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, गर्ल्स ऑफन रिफ्रेन देमसेल्फ कि टेक्नोलॉजी में तो जाना ही नहीं है. ये होता है, माइंडसेट होता है. इसमें इट्स लाइक इट्स एन इकोसिस्टम थोड़ा ऐसा हो जाता है, या उनके घर माहौल वैसा होता है, जो भी होता हो. So ये स्टेरियोटाइप को कैसे तोड़ा जाए, एंड इसको कैसे इससे एक बियॉन्ड द फेंस एक छलांग लगाई जाए? वन पीस ऑफ एडवाइस टू द गर्ल स्टूडेंट्स. So I'll just, since you've mentioned women in technology, so it's me and one of our core team members who also was the first employee of our company, Savi Shetty. She is heading Pan-India Head of Services for our company. So, in fact, we are a very women-forward company. And I believe, while men there's a perception that they understand technology better, they are more, better at mathematics and all of those things. But I think what women bring to the table is a sense of calm. In any situation, you will understand and be very pragmatic. ये problem है, ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी हम फिगर आउट कर लेंगे. विद मेन इट्स ऑल अबाउट नो, इसको ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं. लॉट ऑफ हड़बड़ी दैट कम्स विद मेन because they feel they get into an overrun with thinking about multiple solutions, but they rarely take a step back, just reflect on the solution, what is happening. But I think with women,
more and more women in education are understanding technology, which we see here. Half the students are, girls, and I'm very happy to see the state of labs also. Even the drone lab we just saw now. So many people who have the interest, they should not really think about gender or anything. There are many companies, do internships, get real world experience before you get into a job, while being a student. That will give you a lot of confidence to step into the market and actually make something big for yourself. Right, absolutely. So my piece of advice to the students, girls, please contact ma'am for the internship in drone industry. The opportunity is right on the stage. Because while being a student, there's nothing to lose. You can just go out there, learn, you can do courses, you can interact with a lot of people, and many startups are very welcoming also. Yes. Because more hands on deck, more people who are enthusiastic, fresh pair of eyes, bringing on a perspective, it always helps. And it's rarely about gender. Huge respect to you, ma'am. Huge respect. Definitely, yes. A big round of applause for ma'am. She's a motivational here, of course. You are motivating all of us. So now it's time to close this wonderful panel discussion here. I wish we had some more extra half an hour, maybe a couple of hours more, but the topic is so interesting, it will continue forward ahead. And before I close the session, just one piece of advice to the students of UPSIFS, because they are representing a futuristic institute. They are representing an institute that has their own dedicated drone lab systems, all kind of forensic related equipments, technology, and they are in parallel with time and energy. So one piece of advice, in very short, starting with Neha ma'am, to all the students here. I'm just reminded of this thing which when I was in IBM, I asked someone and I got this very beautiful answer. I was confused between what to do, whether I should do X or I should do Y. And then somebody told me, जैसे अब आप लोग को लग रहा होगा कि पहले AI बताया, फिर cyber security बताया, अब drone बता रहे हैं, तो मैं क्या पढ़ूं, right? So the answer is given by Jim Collins, and it says that do not be afraid of the tyranny of or, but rise to awaken to the genius of and. So the analogy is the tyranny of or and the genius of and. So very rightly said, ma'am. Would want to say कि अगर लाइफ में कभी भी ऑप्शन है कि ये करे या वो करे और कंफ्यूज्ड हो तो दोनों करिए. Thank you. This thing reminds me of something what Dr. Kalam once said, that you should know something about everything and everything about something. So, right. Thank you. And back to now, Kritya ma'am. One piece of advice in very short, just one sentence to the students. Just be curious and keep learning. Education and formal set of institutions will bring on syllabus, but आप खुद से क्या कर रहे हो? Bring your curiosity forward. That is. So in one word, never give up. Yeah. Don't give up. In one sentence, never give up. My piece of advice would be solve problems, because that's where the money is. Of course, you have to be a problem solver. That is very correct. Even I was just hearing a speech in AI Impact Summit. One of our senior delegates said that the delegate said to the students who were there in the AI Impact Summit that the key to the success is become a problem solver. And there are so many things you can solve around your locality, society, country, whatever you name it. There is opportunity for you. Last, not the least, Rahul sir. One piece of advice in one sentence. आप सबको बताइए जो आप. कोई भी स्टूडेंट्स को ड्रोन प्रोटोटाइप बनाने में कोई हेल्प चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. So this is another vital piece. So we have two opportunities here for the girls. Ma'am is there, and for rest of the people, prototype brand में. Sir, तो we will contact you, and ma'am, we will contact you. Flygen is ours. Right. Thank you so much for having me here, and thank you so much for wonderful panelists here for the lovely discussion. Thank you. The floor is open for questions now. Any questions from the audience? Yes. Any questions? So the stage is all yours now. Any question? If you want to ask anything, you can also drop your questions on the email provided in the institute brochure. Also, you can contact us via the telecommunication method. Right. Thank you. Thank you so much. Thank you all. We extend our heartfelt gratitude to our honorable moderator and panelists for their invaluable insights and enriching discussions. Now, I request our respected DIG UPSIFS, Mr. Hemraj Meena sir, to kindly come forward and present the mementos to the guests.
Now, I, Megborna Ghosh, along with Daksh Dagar. will now guide you through the upcoming sessions. The next panel discussion on emerging trends in cybersecurity and legal compliances will be moderated by Shri Pawan Sharma, founder and CEO of Bravati Digital Inclusive USA. He is a limited partner and angel investor in deep tech companies in India, Singapore, and USA. His investments are in the products in the areas of AI, cybersecurity, supply chain management, drones, robotics, and quantum. Pawan sir has been at CXO levels in companies like IBM, HP, HCL, KPIT, and Tech Mahindra. He has been an ardent supporter of UPSIFS from its inception. Our esteemed panelists are Shri Kiran S., IPS, Inspector General of Police, Lucknow Range. With vast experience in cybercrime management and law enforcement leadership, he was decorated with the Interpol Medal of Excellence. Dr. Nikhil Joshi. He is a scientist, entrepreneur, and the co-founder and director of Lifel Foundation, an organization that supports cutting-edge scientific research in the evolution of multi-level natural and social organizations. He is an invited speaker in many international scientific conferences like the Global Summit for International Society and the annual Mycorrhiza Conference. Colonel Dr. Praveen Kumar Singh, Director, UIDAI Regional Office, Lucknow, bringing expertise in digital identity systems and regulatory compliance frameworks. I request our moderator and panelists to kindly take over the stage. Sir, the stage is all yours. Thank you. Good afternoon. May I request all the students who are sitting behind, I myself love being a backbencher, but may I request everybody to just come forward, please. You have just less than a minute, please, please. Jaldi uthiye, please. और जो यहाँ पे भी इस साइड पे भी बैठे हैं वो यहाँ आगे आ सकते हैं, नो इश्यूज. क्योंकि अभी जो हमारे पास पैनल है ये काफी एक्सपीरियंस्ड पैनल है. हमारे साथ श्री किरण आईपीएस ऑफिसर हैं, ग्लोबली इन्होंने काम किया है इंटरपोल के साथ, ये अपना और सीबीआई में भी रह चुके हैं. डॉक्टर निखिल जोशी, आपने सुबह इनको सुना होगा, ये 128 ईयर ओल्ड कंपनी के चेयरमैन हैं, and he has seen 3 generations of workflow change. And then we have Dr. Praveen ji, who's by the way, who has all your information with you, right? So अगर जो आगे नहीं आ रहा सब information हम इनसे ले लेंगे, ठीक है? Please आगे आइए. All right. Thank you so much for coming and joining on the panel. The topic for the day, which is emerging trends in cybersecurity and legal compliances. Since the audience has been sitting since morning, and they have gone and seen what are the trends that are coming in, I won't take much time to to elaborate on this piece. But before I ask you a few questions to the eminent panelists here, from my side, I see 2 things that are happening in the industry. One is organizations. So today, if you look at it, the architectures are different. People are talking, there's an enterprise architecture. Then people have the cybersecurity architecture. The source of truth of data, jisko hum kehte hain, source of truth is in multiple places. So the traditional system of records also sits in multiple places. Now, as a result, what happens? Your chances of hacking into that system becomes much, much easier. So companies are adopting a zero trust architecture, but with a common single architecture. So they are not going to be multiple architectures. Architecture is like a block, right? तो सोचो अगर आपका framework, आपका basic नींव ही multiple नींव है तो घर कैसे टिकेगा, right? So that's the first change that we are seeing the industry adopt. What percentage of industry is adopting that? Less than 2% globally, and I'm talking of even the large companies. So there is a huge shift that's happening. The second thing that is happening is companies and people and organizations and nations are moving away from point of solution, which is point of a problem to have a solution, to a nationwide problem, to an organizational wide problem. And this morning we had, one of the dignitaries even mentioned the social welfare of the state, right? So the whole focus is now on that. And we see some benefits coming from India. We have certain
we have NIST, we have some new ideas, in fact, new framework called DPDP that is coming, and we are telling companies to follow Article 25 of GDPR, which brings in privacy by design and legality by design. So which means your product has to ensure the legality of it. Otherwise, as organizations and individuals, so the students, when you go into an organization, when you're working, remember you're personally liable, along with the organization. So I just thought I'll take a couple of minutes and share where the industry is going from where we see. And, now I take the opportunity to ask our esteemed panel a few questions here. So my first question to you is, Kiranji, as a law enforcement officer who's worked across global boundaries, what has your experience been in the way the criminals or the cyber criminals today morphing, adopting newer trends? That's the part A of the question. The part B of question is with the DPDP around and the new framework that has come in. How do you see the law enforcement, not just police, but the entire law enforcement adapting towards that? It's not an easy thing to answer, I would say, because adaptation is the very difficult thing for humans. But let me start with a simple line. Cybersecurity is no longer an IT problem. It is an enterprise problem, as Pavanji just said. And it's an enterprise risk rather, legal exposure, and there is a lot of trust business involved in this. So here comes the hard truth. Who wins in this decade, or not just this year, this decade, are not the ones with the maximum number of tools, but the ones with the strongest fundamentals, the fastest detection and response time. For example, if a breach happens, if I ask you, what would your next step be? If you say that, okay, we form a committee to inquire about it, you're gone. You're done and dusted. The faster the response, the better the resilience. So now, regarding the emerging trends, which not just I have seen, but I've heard, and which is being in discussion across many forums. One thing I should say, that cyber criminals are professionalizing into a service-based, transaction-based ecosystem. That means, you heard about social engineering, I'm sure. This social engineering is now getting more personalized. What if I use an AI agent to learn more about you and create a more personalized questionnaire, more personalized script to talk to you? Now the phishing agents who speak to you from Jamtara or wherever in the country or abroad, they are just asking, okay, I'm just asking you to take a loan, or to pre-close your loan, or you have a challan on the driving, when you were driving a car. You may or may not get cheated. Most probably those who are sitting in the room will not become a sitting duck to it. But what if I use artificial intelligence agents, AI agents, to study more about you, curate a response, curate a question to you in such a way. For example, I know that you attended this session today and you moderated this session, or you was a delegate of this session. As a takeaway question, I ask you for a survey. You are more likely to fall prey to it. This is the power of AI. So now the key trends, one is cybercrime as a service on an industrial scale. There is a mature underground economy. हमारी देश में talent की कोई कमी नहीं है. The phishing kits, which you can buy from darknet, malware, you have credential dumps, lot of breaches, mule networks. You can buy mule accounts. You don't need to create one. You may be reading in newspapers regarding a lot of frauds happening using mule accounts, mostly digital arrests, etc., etc. It's just the tip of the iceberg. Ransomware tool, which can be bought as services from, it's like Amazon of all these crimes. You want to hire a killer, you want to buy drugs, you want to buy the software as a service,
It's an Amazon or a Flipkart of criminal things, which lowers the entry barrier, increases the volume. And we have seen many such cases, not just in India, but across the world. AI-enabled social engineering and precision tools, which we just discussed. And when you move to ransomware, it acts as a business model now. For example, this, let's pray to God it doesn't happen. This university's website or servers get hacked. It's a sitting duck to a ransomware attack, or most critical infrastructure systems. For example, the power corporation or the discoms are targeted. You are more likely to pay out than thinking about other responses. Because critical infrastructure is critical. Why is it called critical infrastructure? Because it affects the very economic backbone of the country. It's not just cyber anymore, it's cyber plus physical. Somebody can control a gun using artificial intelligence. Or even, just forget artificial intelligence, just by network switching. 3D printers have paved the way for much more. Business email compromise. You may have seen this. This is since the time computers were invented and internet started. We started using internet. This was there. But now it's on an enterprise scale because it's very easy. It's a mail merge on steroids. So creating a business email based out of some information, it's not very difficult these days. Now convergence of cybercrime with financial crime. Money is taken out. It all started with the Bangladesh Bank heist in 2016. The more famous ones are the Cosmos Bank attack. You've heard of that? And many such things are happening. And which breaches are just one part of it. Banks getting attacked. Money getting moved out. And you don't know how many, I shouldn't say that this, not in black and white, the grey shaded enterprises, which they don't come forward to complain. They may be getting hacked. So it's basically, in practice, it's financial crime. Money laundering happening through virtual assets and virtual currencies. Mule accounts, laundering routes are integral to it. It's not an afterthought. And now terrorism and profiteering, terrorist weapon proliferation. You can see a lot of automated radicalization material available even in the web, even in the surface web. Earlier, if, for example, a particular terrorist entity wants to create a radicalization module online, before online they need to think about material, publish it, circulate pamphlets. Police would know in no time. But now it's all automated. You just need to know, okay, I want to create so and so content with videos, AI generated videos. It's so easy. And now one more thing. The era of fake news. Because as you know, when the truth is still tying its shoes, the falsity would have taken 3 rounds across the world. Very classic example. There may be a fake news on something, you believe that, and when the fact checker comes, you still question the fact checker. Yes, we should. But by the time, the number of people who have interacted, not liked or commented, but who would have interacted, the impressions in Twitter, for example, would be 1 million. But the number of impressions on the fact check would be in a few thousands. That's a sad truth. So every impression, the person who does an impression creates an opinion. And the opinion, unfortunately, is false or radical. So online radicalization has become much more easier with the help of artificial intelligence. The second is the convergence of artificial intelligence media with the weapon technology, because you just heard about drones. I'm not going to frighten anybody. You heard about the drone swarms attacking airports. It happened in London Gatwick a couple of years back before. It happened in many airports across Europe in the past few years. So these swarms of drones, earlier it required a human to control this. Now it can be coded and programmed, and with the help of artificial intelligence, cover much more secure areas, and it can learn on its own,
learn to avoid detection. I mean, it's pure mathematics, but mathematics and intelligence on a scale. So what AI has done is scaling a doped Usain Bolt. That's what it has done. Usain Bolt runs 100 meters in 9 seconds. What if he's doped? He would run in 5 seconds. And it's on a scale. This is what artificial intelligence does to cybercrime. Now, coming to the second part of it, what is police doing about it? It's always a cat and mouse game. So one, we have the I4C fortunately. I4C is Indian Cybercrime Coordination Center working under the Ministry of Home Affairs. I would say at national level, they are a nodal framework and ecosystem for the law enforcement to deal with cybercrime in a coordinated and comprehensive manner. Because cybercrime is never local. What you see, like आपकी phone से phishing करके 5,000 रुपए निकाल लिया, even this is not local. You may get a call in Lucknow, the criminal may be sitting somewhere else, and the money may be taken out somewhere else. So can we fight cybercrime with a local response, sitting in a local police station? The answer would most probably be no. Answer is no. So that is why organizations like Interpol and CBI, which acts as a nodal for Interpol and I4C, first we need to coordinate within the country, within the state, and then within the country and even abroad. So we need a global response and a local reaction for a problem of this scale. So that's what I4C does. It scales up the response that we have, and it's very quick. For example, if a cybercrime happens to you now, the next step you should take when you get to know about it is not to run to a police station. You should dial 1930, register a complaint. So it's like the golden hour. What will you do if your friend meets with an accident? You take him or her to the nearest hospital within the golden hour. So this is the golden hour. The initial 10, 20, 30 minutes is the golden hour, because then they can actually put a lien on the bank account. Now, it's a core operating model is cooperation and coordination. It's not an option. You have to do it. So that's what I4C does for you. And then there is the National Cybercrime Reporting Portal, which is designed to, again, let the victims of cybercrime report about the cybercrime. It could be financial fraud. It could be digital arrest. And the complaints are dealt with law enforcement based on the information provided. So it again highlights reporting pathways for you to kind of report. And the timely reporting basically helps us in traceability and intervention. Globally, what happens is they believe not in just investigation, but in disruption of these networks. You may have heard about the famous Silk Road takedown. And then there was a website called the Alpha Bay in dark web, which used to sell drugs. Silk Road also used to sell drugs. Then there was another website called the Hansa. And of late, there has been a coordinated operation by Europol and Australian Federal Police regarding takedown of these phones called the Anion, A-N-I-O-N. They created these phones. They were using encrypted networks. Again, coming back to AI for a moment, you can actually code you can create a WhatsApp on your own without knowing anything about coding. So anybody can create an encrypted network. Organized criminal units can do that. So basically the emphasis is now on disruption and not just investigation. And again, what this university is doing for you, strengthening your capacity by forensics, trainings and standardizations. And I would frame it in this perspective, because you should think that the criminals are one step forward. And now the last questions, I'll just take 20 seconds. What DPDP Act does for us. Police is fortunately protected by Section 17 of the DPDP Act, but again under Section 8, even police is liable if you don't create any reasonable setups for protecting the data. With that, I think I have answered your question, sir. Thank Absolutely. you for this opportunity. Thank you so much, Kiranji. I think clearly what emerged is cybercrime as a service.
is emerging. You also highlighted one very important thing, which is the era of misinformation, which is far more dangerous than most of the things that we are looking at. And also about the DPDP and what it comes. So thank you. My next question goes to Dr. Nikhil. Nikhil ji, as a research scientist first, and as a business person who chairs a 128-year-old, very reputed organization in the country, how are you ensuring a smooth supply chain that happens to ensure your business keeps running? And the reason that I thought you should know is the biggest threat of cyber is to the supply chain, whether it is supply chain of people, supply chain of items, raw materials to global companies. And India as a threshold is just about taking off in this area. So, Dr. Nikhil. So thank you, Pavanji. Cybersecurity has two sides. One is when you're sitting on the side of the cybersecurity experts and people who understand what cybersecurity is and how you should do it. And then on the other side, there are business people. And you would have some CEO of some business division that is working on pharmaceuticals. That person wants to work on serving patients. Or you have a hospital. We also run some engineering colleges. So we'll have the college staff and all of them. They're more interested in getting their admissions done and making sure that the students don't have to wait and they're able to get the services they want. So the operations people always have a different view on security. For them, security is always the last thing they want to worry about. It's like when you ask a business person that, okay, why don't you keep a good connection with the police because you might need him someday. He said, I'd rather focus on making a good connection with my customers because I need them every day. Right? So I've tried very hard to try and build a security mindset in business teams. But it's the hardest thing you can do as a owner of a business. And I'll be honest about that. So what did we do? Finally, at the board level, we decided to follow a very simple strategy. We outsource as much of the data and the software and business IT requirements as possible. We don't trust our CEOs or CFOs or the internal IT teams with it. Because a person who's giving you software as a service is focused on making sure that that service is secure and that service will deliver and there is an SLA that I can enforce. So the first thing we do is we outsource most of it. The second thing we do is we sandbox things. And in sandboxing things is we say, okay, if my outsourcing is with company X, the data will actually be replicated on this second outsourced server, which is say from a black box or from a Google hosted sites or something like that. So not everything is available at one place. My sales data will be somewhere else. My purchase data will be somewhere else. Right? So there is a sandboxing there. The third thing is what we do is we have a corporate audit team. And all they do is every time they're only doing one job is audit, audit, audit. And typically what happens is that in a company that they would prepare a list of things that they want to check. And that list tends to get monotonous over a period of time. And you're sitting in the boardroom and you're not able to keep that up. So what we do is we take that audit list, we take the list of companies that we have, we chronicle the kind of problems that we've had over there, and now we are using AI. We would put it into Claude, we would put it into Gemini, we would put it into ChatGPT, and we would try and figure out what could be missing over here. So our audit teams are also being questioned now on the basis of AI and what is happening, in the market today. And this gives us a good risk assessment of that. And finally, we have redundancy.
Redundancy means that if our sales data is on X server and our salesmen are using this particular device and a hosted service to manage their sales booking, the MIS system, which is the business intelligence system, will replicate that whole data and will create a business intelligence over a separate cloud platform. Right? So in the worst case, that if the Salesforce application were to go down, I still have a minute-to-minute cloud backup on my business, on my BI tool. And finally, when we work with our internal networks, there is a lockdown policy. A lockdown policy means we have endpoint protections on all of the devices. So if you're working for our company, you will not be able to put in a WhatsApp on your phone. You will not be able to put in any of this Twitter or visit a Gmail and all of that from the company phones or from the company devices. So what happens is that endpoint protection allows you to minimize this risk. So this is what we've done, is like one is outsource, sandbox, audit, create redundancy, and then have lockdowns. So what this does is it reduces the cost of doing business for us, or the cost of doing cybersecurity for us, because we're not taking it on our place, and we're not saying that our team will ever be experts in cybersecurity, because that's not their expertise. You cannot teach a doctor to appreciate what a hack will be like. Sure. Right? Thanks, Nikhil. I think very few CEOs and owners, I would say ownerships, can articulate the way you have articulated. So wonderful. Praveenji, we have we have 2 minutes. I'm sure they'll give us 1 minute extra. But as someone who probably sits on the hottest seat in the country, right, sitting on a database, managing a database of 1.4 billion people and growing, and obviously is the biggest target worldwide, actually, if I may say. What makes you sleep well? And if yes, if you sleep well, then why? And if you don't, why? And what are you doing to ensure that, we all sleep well? Thank you, Pawan sir. Good evening, ladies and gentlemen. Now, just reminding me that I'm a hot seat. Otherwise, all these young boys and girls sitting behind before coming on to the answer as such to the question. So feeling sleepy. Honestly, I was also feeling sleepy. So just I'll take just few minutes as time is running out. So of course the entire ecosystem, that 1.42 almost a billion database we have, the world's largest digital identity platform that we hold out there, the entire security system which has been basically provisioned, it is so formidable that it makes us really, indeed, quite, sleep well as such. If we talk about, to contours of this kind of a cybersecurity ecosystem, then it starts right from, the entire landscape, the security concept or the perspective has changed. It has transformed like the classical, server client based that used to be the network used to manage earlier out there. Today, once we are dealing with the cloud based, the entire, servers out there, and then the various entry points emanating out of the IoT devices in the entire ecosystem, then of course it increases our challenge manifold. However, what we do in simple terms, I will tell you, we have got two major pillars of our ecosystem. One is the ENU, enrollment and update, we call it. The second is the authentication. So enrollment update is simple, that Aadhaar we enroll and then we update it. Then we do updation. Now once we look at the enrollment updation, this pillar as such, we look it from a different perspective. Like Aadhaar, we look as a foundation ID. So we find that, of course, it is the most significant identity document of India. Reason being, of course, this is the only document which has got a life cycle applicable
to almost each and every individual. So that if somebody coming with that kind of a trust imposed on us to our, machine to get himself or herself enrolled. So at the same point of time, what we do, we do different kinds of data. That one is a demographic data, and second is that biometric data. Now, the various kinds of regulations and the laws which are associated, it works on a simple principle of the minimal data. Obviously, once we'll have a minimal data, so the security will be proportionately easy for us to manage it out. Now, once we talk about demographic data, so demographic data, we take only the 6 types of data. We take name, we take DOB, we take gender, we take address, and then there are 2 optional data which are there. That is your mail ID, and then in case if you can provide any additional information that in terms of it can be like additional phone number if you are there, or any additional information you want to give it to us, that is there. Then in the biometric, we have got 3 kinds of data fields. One is for the fingerprints, second is the iris, and third we have that our facial, that photographs we are taking. So now all 3 I'll talk separately now. First biometric before coming on demographic. As such, before coming on that, Aadhaar, once we talk about, then it is not a in common perception also, in legal provisions also. It is not a proof of any residence. It is not a proof of any kind of citizenship. It is not a proof of any relationship also. So what exactly it is? It simply authenticate yourself what exactly you are. So the means of authentication is one, the fingerprints, second is that your biometric, this iris, and third is the facial expression. Now the various measures which have been undertaken to make it secure. The moment you are visiting to enroll yourself at the Aadhaar machine, what we do, we take your data separately. Your demographic data is being taken separately, your biometric data is being taken separately, and that is what we are storing it also. Our CIDR, our centralized database system in our tech center, which is their central identity data repository, there also we segregate it. Then we have got end-to-end encryptions. End-to-end encryptions, once I say, this is right for the data transmission and the data storage both. So like AES, we are using other RSA, those advanced algorithms, we are using it to secure your end-to-end encryptions of data. Secondly, the machine which is being used to enroll and update your data out there, these are the ones which are certified machines. These are the ones which are using, the various kinds of firmware which are certified by us and had gone through, various vulnerability, penetration tests at our test labs also before it is formalized for, commercial use. So likewise, once your data is taken, at that time we ensure that your data is secure, and once it reaches to CIDR, then also we keep it secure. I'll talk separately about how exactly we are, look forward towards the industry and the, research as such, academia, this ecosystem. However, before that, now we were, looking at the biometric data as such. So biometric data security is, of course, here just I'll give you a small, perception about that, this data. We use the deduplication. Like, manual deduplication and then biometric deduplication. For example, suppose that you go and you say that I don't have an Aadhaar. Now you need to enroll yourself. Once you are enrolling yourself, by your, that 10 fingerprints are taken, 2 iris are taken, your photographs is taken. So 13, biometric prints we have taken. Now it goes for a manual deduplication. It means that in those 13 data features which we have taken it out there, we have got our 142 crore people with us, multiplied with 13. So that kind of database features we have. Now, in kind of near real time, we need to check it, whether, especially once you are going to authenticate yourself, you need to have, some access requirement at some place.
So at that point of time, if it is an authentication, then it has to go for a manual deduplication. And of course, the technologies we use for this, we need to apply advanced, AI and ML, deep learning. Those algorithms are being used for that. So that's how basically we are managing it. And advanced encryptions are being used. Now, another, to sleep well, that is a major challenge in future. Reason being, inception of this quantum computing. Now everything is being computed. So you do have advanced technologies to compute and giving you solutions. But while we talk, to secure our database out there, it's a cat and mice game. Like the data is there, on one hand, you are trying to, secure the system. On the other hand, you are trying to breach the system. Somebody who has got a computing, power where they can breach your various kinds of algorithm, whatever algorithm you have applied, you may feel that, I've got an algorithm of AES or something, and which may take so many years to breach. But if the computing power, somebody who is trying to breach it, so you have to have that kind of a resilience in the system. That's a challenge. That's a challenge. And of course, here we look forward towards our industry partners. We are look forward towards the startups also. We do invite them. We do have a sandbox system, in our data center out there, and they are most welcome there. We keep, come out with the various kinds of programs also. And if you have got some solution, of course, as per the existing standards, we don't have any problems. But to look forward that in future also we can sleep well. So we look forward your contributions out there. You come, we do have a sandbox system where we'll provide you dummy, databases out there. You can have your own experiments out there. And if you can come up with a solution out there which is acceptable after going through, laid down test procedures, then you are most welcome out there. So apart from that, there is something called redundancy also. Like we have our 2 data centers, one at Bangalore, second at Manesar. And then eventually, to make our users also sleep well, we extend certain kind of, control which they can exercise to secure their data. For example, like biometric data, it is so much being used as the quantum. I will just, quote it here, that in a day, a single day, pan-India, almost 7 to 8 crore authentications are taking place through Aadhaar database. That's a kind of a massive scale we are dealing with. So we do give you an option that yes, you can lock your biometric, because every day so much financial transactions which are happening out there, and then at your ease and as and when you feel like it, you can unlock your biometric also out there. So likewise, you have got a 12-digit Aadhaars out there. You don't feel like, giving your Aadhaar number to somebody who can misuse it out there. You can mask it out there. Last 4 digits will be visible. We also give you an option that yes, if you don't want to give your all 12 digits, this Aadhaar out there, you can create a virtual ID. Virtual ID for every, kind of a user's applications, you can create it, and that will be performing the same task like your Aadhaar is doing. So likewise, various kinds of measures we have undertaken, Pawan sir, whether we can also sleep well, and we can, also ensure that all the Aadhaar users who are there, they can also sleep well. Thank you. Such an elaborate description, that sir has given. I remember there was a movie when we were young called, I forget the name of the movie, but there was something called Jagte Raho, right? I think even today's time, with all the things that are happening, we will always have to be alert. There is nothing called as safe, but what you said, I'm sure that I can sleep well to ensure, my data 1.4, 142 crores into 13, is safe. So thank you so much to the esteemed panel over here to really give us, your pearl of wisdom. Thank you so much. And to the students, I hope you heard he's given an offer that they have a sandbox. So if there is something that you want to do, you can go and test it out with them and give their solutions. Thank you. We now invite the audience to come forward with their questions. Thank you all for making this discussion insightful and impactful.
Sir, I am Sub-Inspector Sabir Ali from District Saranpur. I am ex-Indian Navy. Sir, my question to Colonel Praveen Kumar Saab. Being a police officer, we found an unknown dead body. Normally, we are facing this. So, after investigating that matter is a later thing. But first challenge we are facing in the field to find out his identity. So, by his fingerprint, can we get your support to find out his identity, name and address? Thank you. This is really a great question because what happens out there that knowing law is very important. I have been dealing with RTIs. I have been dealing with other kind of legal issues out there. As per Aadhaar Act, the simple thing before I come out, actual how to basically you can deal with this. Simply know. You cannot, the user data consent is very important. We cannot, allow anybody, even suppose that I cannot give your data to you without your consent. So first of all, you need to be alive. I mean, I'm sorry to say, but then one Mr. X, suppose that if he desires, to have a data, so he has to be alive to give consent. Somebody who is not alive, so cannot give consent, so simply the data cannot be shared. So data sharing is a very, very, significant issue. So anybody who is dead, a data cannot be shared. Now, how it can be shared out there in case if any legal, requirement or any, other requirements are there. As per Act, Aadhaar Act 2016, any secretary level officer or a minimum High Court judge, if a High Court judge feels in any kind of, you have to come through a proper channel. The High Court judge has to order for this. It will come to us, and then based on that, whatever data we'll have, that will be shared directly to that honorable judge in the High Court. And that's how basically through your counsels, if required, you can, have the further, investigations can proceed. Why I'm sharing this? Because the ignorance of this particular point on a daily basis, I am handling with the data sharing, Aadhaar deactivation also. That's another thing. You must have heard almost 2.5 CR. There was no API integration as such earlier with various kinds of government agencies which were there. Now the RGI, Registrar General of India, who is basically registering birth and deaths out there. So the moment almost in 25 states in India, we have an API integration with their databases. After that, and some other, databases in UP, if you talk about, then Food and Supply Department, who is issuing almost 16 to 60% people are being issued rasan. So likewise, few, big databases, which once the API integration was done. So 2.5 CR, the, Aadhaar have been deactivated of diseased. So this is a kind of a scale once the technology is applied and once we come to a, legal part of that, then every day I tell you that 5 to 6, police stations, they ask such kind of, incidents, they quote some kidnapping, some serious crimes which are happening out there, they do ask data. We feel helpless. We cannot, as per, our legal bindings which are there, we cannot share data. So in case if you feel that there is a requirement to expedite and something which is, very, gravity is quite at a higher scale, then you need to come through some secretary level officer or maybe that, you need to approach some legal high court, high court's honorable judge directly. From there you can come to us and then can be done. Yeah, thank you, sir. Thank you. So we'll all be available. They'll all be available after this. So if you have any questions, feel free to ask them. Yeah. All right. Thank you all for making this discussion insightful and impactful. I request our respected director, sir, to kindly felicitate our moderator and panelists with mementos as a token of appreciation and gratitude.
Moving forward to our next session, we address a matter that directly impacts every citizen financially: financial fraud. To guide us through this compelling discussion, we are honored to have Ms. Monica Gakhar. She is currently serving as the cluster head at HDFC Bank Lucknow. With extensive leadership experience in retail banking operations, branch management, and customer risk management, she has been actively involved in strengthening financial systems at the grassroots levels. Having led multiple branches and teams, she understands firsthand the evolving nature of financial frauds, from phishing and digital payment scams to identity theft and social engineering attacks. Today, she will be addressing an extremely relevant and urgent topic: awareness on prevention of financial frauds, helping us understand not just the risks, but also the responsibility we all share in building a safer financial environment. Ma'am, we request you to share your valuable insights on recognizing financial frauds and protecting ourselves in this digital age. Ma'am, the stage is all yours. Respected founder, director of this esteemed institute, Dr. G.K. Goswami ji, distinguished guests, dear students. I am Monica. I am cluster head with HDFC Bank, and along with me are experts of this topic, Mr. Pawan and Ms. Dilpreet, and they are a part of compliance team of HDFC Bank. And to the students, I understand that it's been a long and hectic day, and so I will try to keep this presentation short and crisp, but it is so important to understand how banking cyber frauds are impacting us and our daily lives. And if we will speak about statistics, as per RBI data, reported data, the cyber banking frauds for financial 2025, financial year 25, can anyone guess what will be the corpus? Any wild guesses to the students? For financial year 25, the reported frauds were 36,000 crore. So you can understand how important it is for each one of us to understand, prevent, and immediately react if something of this sort happens. So any kind of fraud, there are two legs to it. Number one is prevention. जैसे अभी सर ने कहा कि जागते रहो, साथ साथ में सावधानी हटी दुर्घटना घटी. अगर आप थोड़ा सा भी आपका ध्यान नहीं है, आपने OTP गलत डाल दिया, आपने पिन किसी के साथ शेयर कर दिया, and your money from the account is gone. So it is so very important to understand and to prevent these kind of frauds. And I will take you through कि आजकल किस तरीके के frauds market में चल रहे हैं. नया क्या है कि जो fraudsters हैं, they also keep working on this कि कैसे नए fraud लेके आ सकते हैं. Now bank has understood कि ये वाला fraud है और इसका हमने ये prevention कर लिया. But they also keep trying and working on which kind of new frauds can be attempted in the market. तो I will take you through कि आजकल कौन से किस तरीके के frauds चल रहे हैं. But before that, I will take only 2 minutes to speak about this brand, globally acknowledged bank. We started in 1994, and following our core values of the brand, that is operational excellence, customer focus, product leadership, people and sustainability, we are now the country's second largest bank and the first private sector bank in the country. This is pan-India overview. We are around 9,000 plus branches, and we are acknowledged as domestic systematically important bank of the country. This is how we look in the state of Uttar Pradesh, where we are the first private sector bank, as I already discussed, and we are the second largest overall. We have a branch network of 945 in this state.
Now, this is our hero, Vigil Auntie, and I will request Pawan to take us through further for this presentation. Pawan. Thank you, ma'am. Thank you to all of you for giving this time and opportunity to HDFC Bank to present this PPT. And in PPT, we are covering most of the things whatever is happening currently in market. मार्केट में जो कुछ भी फ्रॉड हो रहा है, इवन आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, तो आपने विजिल आंटी को आई थिंक टीवी पे या यूट्यूब पे भी देखा होगा. एक छोटा छोटा सा प्लेटफॉर्म बीच बीच में आता रहता है, यूट्यूब पे भी आता है आपको, अगर आप यूट्यूब या इंस्टा या कोई भी सर्च करते हो तो वहाँ पे आता रहता है. अभी हम आपको लिंक भी लास्ट में शेयर करेंगे, वहाँ पे HDFC बैंक से अलर्ट्स आते रहते हैं. न्यू ट्रेंड क्या है फ्रॉड का, विजिल आंटी उस पर क्लियरली विद एग्जाम्पल आपको बताती हैं. अभी एक दो हम वीडियोज भी शो करेंगे, आप देखेंगे आगे. यस, यहाँ पे क्या है कि फ्रॉड अकर्स टू इल इंटेंशन, ग्रीड, फाइनेंशियल प्रेशर, एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट फ्रॉड्स. मीन्स आप जो भी, जब भी फ्रॉड तभी होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी कहीं पे लीक करते हो. आप अपनी आइडेंटिटी या अपने जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो आप लीक करते हो. बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल एक देता हूँ, इसमें डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा. जो है एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ. आप कहीं जाते हो अपना जीरोक्स कराने, जो कि बहुत पुराना ट्रेंड है फ्रॉड का. कभी कभी पुराने ट्रेंड भी वापस आते हैं. आप जाते हो अपना आइडेंटिटी आईडी प्रूफ जो है आधार लेके गए और आपने वहाँ पे जीरोक्स कराया, और आप क्या किए, अपना जीरोक्स करा के आपने ध्यान नहीं दिया, मे बी उसकी एक कॉपी उस दुकानदार के पास भी हो. वो आप तो अपना ओरिजिनल लेके चले आए, बट दुकानदार के पास एक कॉपी होगी. वहाँ पे भी फ्रॉड हो सकता है. उस आधार पे एक अकाउंट भी खुल सकता है, वो अकाउंट वहाँ पे एडिट होके डिटेल्स अकाउंट खुल सकता है मार्केट में, जिसको म्यूल अकाउंट हम बोलते हैं. एड्रेस वहाँ पे डिफरेंट एडिट कर दिए जाते हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन OTP आपको आप ही से फोन करके मांग लिए जाएंगे, आप पता ही नहीं पाएंगे. आपको बोला जाएगा आपका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है बैंक के लिए. तो बी अलर्ट, डू नॉट शेयर एनी सच थिंग्स टू एनीवन वट एवर इज कमिंग ऑन योर कॉल ऑन योर मोबाइल फोन. तो एक तो ये हो गया. दूसरा, अननोन क्लिक, फिशिंग, SMS, ईमेल, मैसेज, जैसे जॉब अलर्ट्स आते रहते हैं. आपके पास मैसेज आएंगे कि आपने इतनी लॉटरी का जीत लिया है, ये पार्ट से आपका मे भी हो सकता है. सपोज HDFC बैंक से एक मैसेज आया, HDFC लिख के ऊपर आया, तो आपको लगा कि HDFC से मैसेज आया. वहां पे आप चेक करो क्या वो HDFC है, क्या आपके पास जो HDFC का मैसेज पहले आज चला आ रहा है, क्या वही मैसेज है, या ऐसा तो नहीं उस मैसेज में नए टाइप का कुछ मैसेज जहां से आ रहा है जो H लिखा हो और बीच में कुछ और लिखा हो, आगे DFC लिखा हो. तो प्लीज इसको, हाँ, उसमें एरर्स आएंगे, आपको स्पेलिंग में एरर्स आएंगे, तो वहां पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा. वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि पुराने जो आपने ट्रांजेक्शन्स किए थे उसमें मैसेज कहाँ से आ रहे हैं. तो वहां पे कोई भी लिंक दिया है तो ऐसे उस पर ना क्लिक करें. मतलब उसमें एक ही पहले आप पॉज, थिंक एंड कंफर्म बिफोर डूइंग एवरी ट्रांजैक्शंस. मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई अंडर प्रेशर में नहीं आना है. आपको कोई भी लिंक अगर आ रहा है तो आपको उसमें पहले देखना है, समझना है, फिर लिंक पे क्लिक करना है. अननोन पेमेंट, अननोन आईडी, अगर कुछ आपको आया कि आपको पेमेंट करना है तो डू नॉट मेक द सच पेमेंट टू एनी अननोन आईडीज. ओके. अब ये आपका पासवर्ड, QR कोड, जो फ्रॉड ट्रेंड है आजकल बैंकिंग सिस्टम में, वो हम यहाँ पे दिखाएं. जैसा कि मैम ने बताया 36,000 जो लास्ट ईयर फ्रॉड हुआ था, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में, वो नियरली अप्रॉक्स 12,500 CR के आसपास था. अभी वो 36,600 समथिंग CR हो गया है, जो अभी आज के डेट में जो फ्रॉड्स हुए हैं अमाउंट का. तो उनके जो फ्रॉड्स के जो न्यू फ्रॉड ट्रेंड्स हैं वो यही है: पासवर्ड, फेक एप्स, चार्जिंग, जैकपॉट, QR, अननोन कॉलर, SSL वेबसाइट. अच्छा, ये आप थोड़ा ध्यान देंगे. SSL वेबसाइट क्या होता है? SSL वेबसाइट ये होता है सिक्योरिटी. HTTPS और HTTP दो डिफरेंट है. HTTPS जो होता है वो सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म होता है किसी भी वेबसाइट का, और जो HTTP होता है वो अनसिक्योर्ड होता है. तो बी रेडी टू चेक these such things whatever is coming on your mail and message as well. Red flags, grammatical error,
जैसा कि अभी बताया था मैडम ने, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक क्रिएट्स इन एसएमएस सेंस ऑफ अर्जेंसी। अर्जेंसी, अभी अर्जेंसी क्या है? डिजिटल अरेस्ट में अभी रिसेंटली हमारी एक ब्रांच में एक कस्टमर पहुंचते हैं, बोलते हैं हमें अपना जो है टोटल 50 लाख रुपीस इमीडिएटली बेसिस पे निकालना है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। वो पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं ब्रांच मैनेजर कि क्यों आप निकालना चाहते हैं इतना अर्जेंट में अपने पूरे के पूरे पैसे? तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे अर्जेंसी है। वो रिटायर्ड थे, उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन उनको हमारे ब्रांच हेड ने बहुत इजीली हैंडल किया, बैठाया, पानी पिलाया, उनको समझाया, सर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई बात नहीं, पैसे आप ही के हैं, आपके अकाउंट में पड़े हैं, उनको शो किया गया, दिखाया गया आपके अकाउंट में है, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम है। बीएम ने हमारे गेस कर लिया कहीं न कहीं ये डिजिटल अरेस्ट है, तो उन्होंने फिर जाके लास्ट मोमेंट पे बताया कि यस हमारे पास ऐसी ऐसी कॉल आई है कि हमारा बेटा फॉरेन में किसी रैकेट में फंसा हुआ है, उसके लिए हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो वो एनईएफटी करना चाह रहे थे, पूरा का पूरा पैसा। तो उनको जब बीएम ने हैंडल किया इजली, तो उन्होंने बताया, फिर उसके बाद जो रिस्पेक्टिव पुलिस ऑफिसर्स थे, जो टीम थी, उनको इन्फॉर्म किया गया कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ से अननोन कॉलर से आई है कॉल, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो उसको हैंडल किया गया कस्टमर को, कस्टमर का पैसा भी सेफगार्ड हुआ और ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में उनके बेटे से उनकी बात भी कराई गई। ये हमारी तरफ से हुआ। तो नेक्स्ट, पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम, इजी टास्क कंप्लीशन स्कैम। अभी आजकल आप लोग देखे होंगे, आप लोग के पास एक सिंपल कॉल आता है। ये ज्यादातर कॉल उन लेडीज को आता है जो गृहिणी होती हैं, जो घर में रहती हैं। उनके पास, उनके लिए कॉल आता है कि आप जो है घर बैठे आप जो है वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हो, हम आपको डेटा पे कॉलिंग करवाएंगे, ये करवाएंगे, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो उसमें नहीं आना है। उसमें क्या होता है कि आपको एक बार वो ऐसा डेटा देंगे जिसमें आप डेटा में कुछ अगर कॉलिंग करते हैं तो वहां से कुछ लीकेज होगा। जैसे उन्होंने अपने नंबर से दिया आपको कॉल करने के लिए, वो लेडीज क्या करती हैं अपने नंबर से, लेडीज हो या कोई भी हो, अपार्ट फ्रॉम लेडीज भी कोई भी हो, अगर वो कॉलिंग करता है तो जैसे ही कॉलिंग होगी उस नंबर से अगर कोई अकाउंट लिंक है तो वो उसको इजीली फेच कर लेते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन पहले से पड़ी होती है, तो वहां से वो कर लेते हैं कैप्चर डेटा, और उसके अकॉर्डिंगली वो उसको आगे जाके फ्रॉड में वो कन्वर्ट हो जाता है। फेक जॉब ऑफर स्कैम, आपके पास फेक जॉब्स ऑफर्स आते हैं, आपके ईमेल्स पे आते हैं, आपके पास कॉल आती है, आपके पास मैसेज आते हैं कि ये हमारे पास जॉब है, ये अपॉर्चुनिटी है, इस बैंक से है, इस ऑर्गेनाइजेशन से है, तो बी इंश्योर की ये जॉब क्या वहां से ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसके लिए आप प्लीज क्रॉस वैलिडेट करो। किसी को कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं। पता चला आप उनको 500 रुपए 1000 रुपए शुरू में पेमेंट कराएंगे, बाद में आपके ज्यादा उस वहां से जो भी लिंक अकाउंट होंगे वहां से ज्यादा से ज्यादा अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा। ऑनलाइन डेटा स्कैम्स, ऑनलाइन डेटा स्कैम्स जो चल रहा है वहां पे एक्सप्लॉशन डन बाय द फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं और वहां से फ्रॉड करते हैं। सिंपल, ये ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स है जो आजकल लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं और लिंक्स पे क्लिक करके, डेटिंग ऐप की कोई भी लिंक आता है सोशल मीडिया पे, उस पे क्लिक करके फ्रेंड्स को कनेक्ट करें, तो उस पे ऐसी कोई भी लिंक पे क्लिक मत करें, ये भी एक स्कैम है। ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स हैं ये, इस पे कोई भी आप लोग क्लिक मत करें, अनयूजुअल लिंक्स पे बिल्कुल मत जाएं। नेक्स्ट, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स वगैरह जो आजकल आप लोग देखते हैं कि ट्रस्टेड साइट्स वगैरह पे भी नहीं होते। जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोई पेज खोला तो आपको कुछ भी लगा कि ये शॉपिंग वगैरह करनी है तो उस पे लिंक पे क्लिक कर दिया, तो बिल्कुल मिंत्रा मीशो फिर भी है उसमें भी, लेकिन फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसे अनयूजुअल लिंक्स पे क्लिक करके अपने पैसों को बिल्कुल वेस्ट मत करें। अब यहाँ पे डूज एंड डोंट दिया गया है, तो डूज हमें क्या करना है, डोंट क्या हमें नहीं करना है। अपने जो भी आप सोशल मीडिया पे हो, चाहे आप इंस्टा पे हो, एफबी पे हो या आप व्हाट्सएप यूज करते हो, तो प्लीज आप इसको एक बार रीड करो, तब तक हम वीडियोस के लिए बोलते हैं। ये जैसे कि सर ने बताया कि अगर कुछ भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1930 या www.cybercrime.gov.in पे, तो ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट हम, ये तो वीडियो चालू हो गई ना,
ये हमारी कुछ वीडियोस हैं. One click can give them complete control of your phone. Fraudsters send you messages with malicious APK files disguised as official links. और जब आप इस .apk link पे click करते हो, फिर तो it's game over. Once you click on this malicious link, an app gets installed in the back end of your phone, which gives remote access of your device to a fraudster. फिर आपका phone भी उनका और पैसा भी उनका, because they get complete access to your phone, your bank account, personal details, OTPs, सब कुछ. And yes, they can even steal your identity using your private data. अगर कोई आपको .apk फाइल भेजे तो समझ जाओ, it's a fraud. APK fraud से बचने के लिए remember these tips. Never click or download on unverified links or files shared through unknown sources. Never install files ending with .apk. Install apps only from Play Store or App Store. Never allow screen sharing or remote access. Regularly review your SMS, call and app permissions. Stay safe, stay vigilant. And then they said, you are under digital arrest. All your bank accounts will be frozen if you do not do what I say. Rajan was running late for work when he got a call from a CBI inspector. They said his bank account was being used for money laundering and knew his name, his bank, everything. Real IDs and documents were provided to prove their legitimacy. And then they said, you are under digital arrest. He wasn't allowed to talk to anyone or leave his place or even go to the washroom. Finally, they told him to transfer his money to their secure RBI account or risk losing it all. I mean, इतना exaggeration तो एकता मैम के serials में भी नहीं होती है. Remember, there is no such thing as digital arrest. Genuine authorities never demand money or confidential details over calls. Any instruction to maintain secrecy or avoid contacting anyone is a clear fraud indicator. Stay safe, stay vigilant. हमारे विजिलेंटी का नंबर है 72900300. Is your investment platform fake or real? Verify using 3 simple steps. ऐसे messages profit margins तो नहीं, पर आपके savings को जरूर करेंगे hit bit by bit. How fraudsters share. विजिलेंटी का नंबर डिस्प्ले करना. Thank you everyone. Thank you for patiently listening to us. And this was just an initiative on how we can prevent the financial frauds and making the nation proud and proud one. Thank you. Thank you, everyone. Any questions from the audience? Thank you for sharing your knowledge so generously. We are truly honored by your gracious presence among us. Now I request our respected director, sir, to present a memento to Ms. Monica Gakhar ma'am and her team as a token of appreciation. We now move ahead to the last segment of today's workshop. In a time where innovations in artificial intelligence, data science, automation, and emerging technologies are transforming industries at an unprecedented pace, understanding how to adapt and stay employable has become more crucial than ever. It is now my great pleasure to invite our esteemed speaker, Ms. Manpreet Anand, for today's insightful session on enabling employability in the era of AI and emerging technologies. She is a dynamic leader with over 24 years of experience in scaling B2B businesses and driving enterprise growth. Currently serving as the country head EC Council India, she leads strategic growth initiatives and strengthens organizational capability with a clear people-first leadership approach. Over the years, she has held senior leadership roles at organizations such as Skillsoft, Great Learning, FNP, HP, and Adecco, consistently delivering high-impact results, driving revenue growth, and building strong enterprise partnerships. Please join me in extending a warm welcome to an inspiring leader and growth catalyst. Welcome, ma'am. We are honored to have you with us today. Ma'am, the stage is all yours.
you. Good evening, everybody. How are you doing today? Completely exhausted? I can see that. Very difficult to be the last speaker, isn't it? And you're like waiting. कब आप जाओगे, कब हम यहाँ से जाएंगे? Correct? Okay, एक काम करते हैं. जो बच्चे पीछे बैठे हैं अलग-अलग, थोड़ी सी आगे आ जाते हैं, so that we at least have some faces visible to me. I'm going to try to make this session little bit interesting. I'll do my best to do that, but yeah. Now this move was deliberate, ताकि थोड़ा सा focus हटे और कहीं और जाए. All right. Are we settled now? Can we go ahead? Once again, good evening, everybody. How are you feeling today? The Josh is too less. Good evening, everybody. How are you feeling today? All right. Can anybody tell me what is this? जल्दी जाना है तो जल्दी बताओ. ऐसे बैठे रहोगे तो मैं भी लटकती रहूंगी आपके साथ. बताइए. अपोलो मिशन क्या था भाई? हाँ. You know how much money was spent on that? 298 billion. On Manhattan Project? Imagine, this much money we spent to send somebody to moon and to create a nuclear environment. You know how much we are spending on AI? Just imagine, 2025 itself, we have done 1.5 trillion. And in 2026, it is estimated to be 2.5 trillion. Does this ring a bell? Does this ring a bell? Are you getting into AI or are you in AI era already? We are already in AI era. We are not getting there. We have done that a lot. AI is no more just an tech topic. It is actually an infrastructure in itself now. It has taken over everything, be it healthcare, finance, education, infrastructure, anything you talk about, everything is now dominated and governed by AI. Now look at this. We talk about employment. We say AI hamari naukri le jayegi. But boss, 5.5 trillion is the skill gap itself by IDC, which has come out as the need to manage AI within the ecosystem. What does this tell you? We had my previous speaker talking about deepfakes, the frauds, all of it. आपको मालूम है, the third largest economy in the world is no country, but it is AI and cyber frauds. Bigger than even Japan total GDP put together. So my dear friends, we are actually in a world where we need to manage it, make it best to our use, govern it so that it is within the compliance of the country, and also ensure that we benefit out of it rather than making it a tool which can take over us. How many of you know that AI chatbots also have their social media? Like you use Instagram and Facebook, they have this. Are you allowed in that? Maltbot and all of that? And you know what they do? They do not speak in English. They speak in their own language. Imagine where we are heading. So, it is very critical and important
that we govern it, compliance it, and also ensure that humans are taking control of AI and not AI taking control of humans. Now coming to an interesting topic, सब कॉलेज क्यों जाते हैं? कॉलेज क्यों आते हो भाई? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के अलावा कॉलेज क्यों आया जाता है? पढ़ने? सीरियसली? ये कौन सा पढ़ाकू बच्चा है यहां पर? We all come to get employed, right? वो डिग्री क्यों चाहिए हमें? At the end of the day, it is all about job मिलेगा, security मिलेगी. So let me open some more facts to you. Currently, AI किसी की job नहीं ले रही है. In fact, scarcity है. अगर 3 AI की job है, तो उसको करने के लिए सिर्फ 1 person है. 3:1 का ratio चल रहा है currently in the industry. So clearly we have a lot of opportunities, and the EU, Article 4 of the EU Act, then you have GPAI rules, all of them are emphasizing on taking this forward and making it mandatory for all countries to follow this as they go forward by having the skillment in AI for all citizens, all students, all employees. Now, AI is going to have around 170 million new jobs created through AI. Almost 92 will be dissolved, all the back-end operations, data entry, all of that. We are exposing ourselves to 40% exposure will be there for employment in AI as we move forward. And 75% of the knowledge workers are currently using AI. So clearly, AI is not taking away your job. This is skill restructuring which is happening at this point in time. So the choice is yours. Whether you take it as, am I competing with AI? Or you take it as, how best I can do to bring betterment in me and use AI for my enhancement. I'll give you a small story here. There was this girl called Ananya, okay? Computer science graduate from a big, nice institute, got into a job, doing all the QA, data entry, all of that kind of a job. 6 months down the line, the company implemented AI. What work she was doing is now carried on by AI. So what does she do? She can crib, she can cry, she can say, oh, this is not fair, this is not that, this is not that. Instead, she put her brains together to understand what AI can't do. Where are the gaps? She learned about prompt engineering, she learned about various aspects of LLM, everything. Now she is working as an orchestrator for AI instead of just, getting threatened by AI taking her job. So what does this mean to us? It means learn, unlearn, relearn every single day. Whatever you are studying today in your first semester, second semester, by the time you are out of the university, it will be irrelevant because technology is moving way, way too fast than our human brains can take it. Do you agree to this? Bhai, haan na, kuch to bolo. Great. So, what can we do? Global reset ho raha hai, skill alignment ho rahi hai. The entire economy is shifting in a way, whether we talk about revenue, whether we talk about production, whether we talk about compensation, talk about any aspect. It is taken away and shaken completely. 60% of the jobs today, I'm not even talking about you, 60% of the jobs today, those people will need reskilling by 2030. India itself need 1 million cybersecurity professionals by 2030. 1 million. It's a big number. So
according to PwC, what they basically say that people who have taken AI and cybersecurity as a skill, as a profession, have 3x higher chances of getting employed. They give you 3x better revenue, and also 56% better salaries they command over their counterparts. Task descriptions are definitely happening. Skill realignments are already going on. 60 to 70% of the task force will be automated and gone to Gen AI, and that's the fact we are living with. What used to happen in the past, in all the industrial revolutions we have gone through, it was predictable. We knew what things would happen, how it will happen, and it was slow, it was progressive in its own pace. But AI does not follow that pattern. It is about augmenting human and AI machine learnings together to create a very progressive world wherein we act faster, we implement faster, we adapt faster, and we get results faster. You know what? If I really have to talk about India and the place we are in, I always say this is the best era to be living in India. India has the potential to just not follow AI, but create a world around providing resources for AI to the other nations. We have the youngest population sitting with us, which is our biggest strength, and that is you. So imagine if we are able to put this all together and give it back to the world, we would be unmatchable. We would not just be sitting at a 4 trillion economy, we will actually exceed and reach to around 15 to 20 trillion in the coming next 10 years or so. That's the potential we are sitting for. Are we using it to the full capacity? No. Are each and every citizen aware of how to use it, how to implement it? No. Are the students aware of it? No. Why? Because our colleges, our policies around our structure of education is lacking way behind than the way how technology is moving forward. So what is the need? The policymakers, the government, the institutes, everybody need to come together and create an alignment within this ecosystem to make India the Viksit Bharat we have been talking about and to fulfill that dream of PM Modi for India. You know, they say that 50% of the graduates today don't have jobs. But industry say 75%, 74% to be precise, they don't get talent. How is it possible? बच्चे बोलते हैं कि जॉब नहीं है, इंडस्ट्री बोल रही है कि टैलेंट नहीं है, तो एक ही, how can this work together? You know why this is happening? Anybody? Yes. Our skill alignment is not there, and that is the reason why they are doing it. What really need to happen is when you go and study, right? आप लोग अपनी universities में हैं, you are doing your degree programs, whatever. Simultaneously, आप कितने skill certifications कर सकते हैं? That becomes important for you. Imagine, how many of you are in cybersecurity? All of you almost, right? Imagine this. आपने अपनी पूरी graduation tenure में CEH पढ़ा, right? You know CEH, right? आपने CND पढ़ लिया, आपने SOC पढ़ लिया, आपने basic certifications इनकी करी with hands-on practice labs and everything, and you are quite ready to understand how to operate it in the real world. Plus your degree. When you sit for an interview, what are your chances of having a better hand over others? So what is stopping us from having those skills? Instagram अगर हम 4 घंटे कम scroll करेंगे और वो ही 1-1.5 घंटा we
focus on learning a new skill. Make it a habit of learning one skill every quarter. By the time you are out of this university, you will be unstoppable. Mark my words for that. Every quarter, only one skill. Whatever you fancy, whatever you like. Yeah? Okay, let me go to this and just give you an insight. I think, we at EC Council have been on a mission to kind of give you insight in terms of how things can progress from a cybersecurity aspect to AI and so forth. We really take pride in the thing that, we have coined the word ethical hacker way back, 25 years back when this word never existed. We work with so many country governments. We are even training our commandos here. We work with state governments across different aspects. What it is that we are trying to bring. We all talk about AI and all, right? We have taken a step ahead. AI essential, definitely, सबको पता होना चाहिए, सबको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, R और N, M नहीं होते, वो R, N ही है. How can you save yourself? अब इतनी सारी companies AI tools implement करती है. But who is program managing them? Nobody. Today, nobody. There is a certification for program management, and इसके लिए आपको high-end tech skills भी नहीं चाहिए. We also have brought forward the offensive AI security professional certificate. जो CEH, CPND, ये सब कर चुके हैं, they can opt for this. Then you also have everything is fine. आप implement कर रहे हैं, आप use कर रहे हैं, but govern कौन कर रहा है? Whether it is within the compliance of your country or not. So these people are in high demand, and this demand is going to increase as we go forward when every single company starts implementing AI in their premises. So the RAGE, the Chief Responsible, Accountable Governance Ethic Officer. Now, if I go back to the track in cybersecurity itself, right from basic learning to CISO development, all these certifications are very much present and available. Depending on your skill, your level of interest, you can deep dive and go into it as much as you would like to. Now, why this is important? Because every student has a different arena in terms of how they focus on their career, what are their aspirations. So you can pick it up, do it as per your need, and then take it. So basically, if I really have to end this presentation today, the question is not whether will all AI take our jobs. The real question is, can we move faster than the technology? Can we adapt faster? Can we build something which is sustainable? Can we do something which is around compliance? Can we ensure that AI is within our framework and we take control of it and not them taking control of us? So basically, employability in AI era is not about survival. It is about positioning to advantage for each and every one of us. Thank you so much for your time today. Lovely talking to all of you. Thank you so much, ma'am. Your valuable insights on the topic have truly broadened our understanding and motivated us to think beyond boundaries. Your expertise and experience have added a great value. Now I request our Honorable Director, Sir, to offer the memento to Manpreet ma'am in recognition of her valuable contribution.
As we conclude day 1 of this workshop, we sincerely thank all our honorable speakers, organizers, and respected directors, sir, for making today insightful and engaging. We hope the sessions have enriched your knowledge and sparked meaningful ideas. We look forward for your enthusiastic participation tomorrow for another day of learning and interaction. Thank you and have a pleasant evening. Every students are requested to assemble tomorrow morning at 9 a.m. sharp. Thank you. See you tomorrow.